.gov.in. You have resources there. You have the general terms and conditions. Then there are guidelines from MSCs. These all have been issued by already, but I'm just brushing up. So there are provisions for MSCs and startups. So startups, it is defined as per DPIIT. So MSCs, it is defined as per the Ministry of MSME. So what are the provisions for MSC? If you have any issues, there is a contact person, Mr. Mohammed Faizan. He's my AGM. You can just take down his number. I think most of the circles are in touch with him or my team. So he'll be in position to guide you. And now recently, the process of integration of GEM with our ERP system is also underway. So once the bid is finalized on GEM, a contract is created, it will automatically get populated or created on ERP also. So it will avoid you. At present, what you do? You finalize a tender, then you create a contract on ERP, PO. And then it's a duplication of work in case of GEM because the contract is itself created on GEM, right? After the finalization of the bid. Okay.
So, but after it gets integrated with ERP, that duplication of activity will also be eliminated. So he's Mohammed Faizan, his email ID and contact number is there. In case of any, as you told that sometimes it becomes difficult how to process or how to create a bid, he and his team will be in a position to guide you. And if there is some news issues, we'll catch up with the GEM team and clear it out. So framing the tender conditions, the eligibility criteria is the most important. How much to be kept? For the services you are following, I think that 80% one work, whatever is your estimated cost, 80% of that of one work, and then of two, if he is not having that much of single work, then you allow him two works of 50% of the estimated cost. And if he is not having even that, then you allow him 40%, three works of 40% of the estimated cost. Am I correct, sir? In the eligibility criteria, sir. Is it okay? Here, what I have done is, what I have kept in my slide is that whatever is your schedule of quantity requirement, okay? So you keep the experience limited to 25 to 50%. But yes, some more learning has come to us. Suppose you are buying very few items. Suppose you are buying 10 PCs. You say then the experience will be 2 or 5. You can keep 10. You can keep 20 also there. There's nothing wrong in that. But whenever the items are huge, large quantities are there you should be in the band of 25 to 50%. You can go up to 100%, but then you should have a reason for it. Why you are keeping 100%? You just record it on your file and then go ahead with that. And if your tender approving authority is convinced that yes, okay, 100% will keep the experience as 100% of your total requirement, okay, then it can be deliberated and it can be kept. Similar is with the turnover also. Past performance. 25 to 50%, and again, it should not be more than 100%. It catches the attention of everybody. They are watching our tenders. DPIT is watching our tenders. Simply vendors just say ki you have kept very high, we are not able to participate. They treat it as a restrictive. So just don't try to get into that loop. So keep it around 50%. That is comfortable, because it's not going to matter if you keep 60%, 70%, but it's going to pinch somebody. Then as I told you, there are provisions for MSCs. एक चीज पूछना था कि जैसे मान लीजिए हमारे को कोई आइटम नहीं मिला जेम में, तो हाउ टू टेक इट दैट इन रिकॉर्ड्स. Okay, that's a GEM non-availability report is generated, sir. You enter that thing, but that is also being misused. Suppose I want to go for 4 fiber OF drop cable. I place 4 FIBRE. It doesn't match exactly, and then you say it's not available. So you just try to search in different ways, selecting the proper category. You'll find if really it is not there, then you can generate a non-availability report. But here again, GEM authorities are also watching. They keep sending us a list of tenders for the items floated on the CPP or the e-tender portal, which are already available on GEM. And then they ask us reasons. And then we have to go back to you and ask you why you couldn't use the GEM portal for it. Then you don't have answer and we also don't have answer. They keep on sending us the list. नहीं, जैसे अभी हम लोग को डीसी का एमसीबी खरीदी थी, डीसी एमसीबी. हाँ जी. तो वो मिल नहीं रही थी, तो फिर पॉइंट ये था कि भाई हमारे को एक नॉन अवेलेबिलिटी हाँ जी उसमें जनरेट होता है सर. Even now if you configure on the CPP e-tender portal, it asks whether it's available on GEM. If no, GEM availability report number you have to give it. They are watching. As I told you, they keep us sending a report even on the tenders for which the items are available on GEM. They are very serious on that. They have given us target that, okay, these items you have identified, these are available on GEM, please don't. There was a HOCC meeting recently. We raised it to our CGMs, circle heads, that these items which are already identified by BSN corporate office, at least these should be procured through GEM. Hi. It's on the internet also. It's coming in the slide also. Okay. MSCs and startups, both
you can give the relaxation from past experience and past turnover. Sometimes initially it has happened that some mediums it was wrongly mentioned by MEs. So that the second M denotes medium scale. You don't have to give to medium scale. Now there is also a little bit clarification I would like to share with you. Sometimes these micro and small enterprises get upgraded based on their turnover and their investment. They get upgraded to medium scale. But as per government guidelines, what is given to us is that from the date of upgradation, class one, I mean, class one, say, In case there is a complaint from one bidder against another bidder, Manoj, this side. Manoj. In case there is a complaint from one bidder against another bidder on this clause, Okay. since we are not verifying anything, how to tackle this complaint? One vendor may say that the certificate given by him is forged. Then hello, 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 hello. okay, no, you're not getting it.
Okay. They are not getting it. Or not. Suppose you two are bidders. Okay. You say that he is wrongly declared. There is a body, he will lodge a complaint with a fee. They will investigate. They will, sir, एक STQC और TEC को इन्होंने combined body बनाई हुई है. So they examine and they even, sir, हमें कुछ नहीं बताना था. अब DPIT guidelines में there is a body already defined. They have to just lodge a complaint to DOT. They will take it up. They will get it analyzed. There have been cases where the bidders have been banned. Some, Until such time, the evaluation of tender will be on hold. see, evaluation is already done. You have already awarded it. No, Then- I am then- not then saying. only they will say. Even before the award, Okay, there is a yes, complaint. yes, That's what. Yes, That one yes, that has to be. That has will be on hold. to be on hold. Cancel करना पड़ेगा. There is no way out. And if that complaint is found valid, the fee will be refunded to the complainant and action will be taken. And the vendors are banned. They don't take any risk onto that. Even if And why we are keeping such clauses which we cannot evaluate? so this has been done because it's an overstepping. Suppose you say, should we verify how they have been classified as micro and small? No, it's not our jurisdiction. It's not us. Then again, the complaint will come to us only. If you get involved into that, then again a Pandora box will open that you have not evaluated it correctly. They have defined neutral bodies for that. Okay. But yes, there is some wastage of time. There have been cases which have been reported to us that such and such bidder has declared a wrong local content in some Tamil Nadu metro project, and we had to put him on hold. No. See, suppose my bid is 100 rupees. My bid is 100 rupees. I should know that how much is the local value addition in that. As a bidder, I should know. The local content. Yes, suppose 100 rupees is bid. 100 rupees is the total bid which they are bidding to us. Okay. See, here the bidder is not class 1 or class 2. The bid is class 1, class 2. Please, I'll just clarify it. The bid will be class 1, class 2. One bidder may be class 1 for some product or some services. He may be a class 2 for some other. It will depend how much is the constitution of his bid price. How much he is bringing it from outside, which is not into the not more than the 20% category. लोकल कंटेंट उसका कितना है ये 100 rupees में मान लीजिए with उसका respect to his 25 product, rupees with respect to his product services his bid product and services. But there is also a definition how to calculate that local content. The bidders don't have to include the cost of transportation, the cost of services into that and make their bid class 1. It's not like that. They have, suppose there is a project which is having supply part, installation, commissioning and EMC for us. They don't have to include the cost of installation, commissioning and services while calculating the local content. They have to just calculate on the price of their equipment. Hardware, software, whatever is there. So that will be in denominator. And how much is the local content? Means they will subtract the imported cost. नहीं इसमें at the time of registration only when they are registered as a gem bidder, gem No, participant. it's not connected to GEM. It's not connected to GEM. It's connected to their bid. It's applicable to GEM as well as e-tender. But obviously bid करेंगे भी तो with respect to their registration in the gem for that particular. GEM says that okay, they are declaring something to us, but you get it verified during your evaluation. नहीं उसी समय उनके प्रोडक्ट को क्लासिफाई भी किया सकते हैं ना. Product cost, the local content of the product may keep on changing. Suppose today I am using imported of 20%, imported content 20%, but I reduce it down to 15% by searching the more local ones. Suppose the transformers, they are bringing it from Korea, but later on they develop Indian vendors, their local content will increase. So that cannot be fixed. It can be transient. It will vary. It will vary from time to time. So at one point of time, it may be a class 2 bid, but later on, when they develop the indigenous vendors, it may go into class 1. So that cannot be fixed. Is it clear? The local content cannot be fixed. It will keep on changing. Trading. Yes. It's also clear in GEM also. It's clear in our manual also. Trading
yes, trading में, सर ट्रेडिंग में कोई वो ऐसा एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा आपको, कोई प्रेफरेंस नहीं मिलेगी। हाँ जी, वो नॉन लोकल हो जाए, दैट ही विल बी नॉन लोकल इफ ही इज ब्रिंगिंग फ्रॉम सिंगापुर। हाँ जी, हाँ जी, अपने उसमें खुद से लाके लगाया या कहीं से लगाया? yes, yes, It is known to you, not to me, yes, yes, but I am the bidder. yes, he has to take it from his OEM. Then OEM को तो कुछ नहीं होना, होना तो उसी बंदे का। होना उसको, but he has to, he is relying on his OEM. There have been a case, there recently has been a case where he relied on the experience of his OEM, and when we verified the experience from the ESP, they said no, we have not issued this letter. So because of OEM, we pulled him up. I'll not name the vendor. We pulled him up, but then he said yes, the person who issued that letter was not authorized to issue that. Simply, they had the equipment or the solution in their network. Okay. वही So है, class two, the bidder ये has पान to वाली बोली है। compute his local content percentage himself, जिसमें and if बोला there कि is a उसने complaint, लास्ट दिन हमारी लाज रख he is gone. He'll be banned. So the declaration has to be taken from bidder in form 1. Even in for your services, you just keep it. Initially, DPIT raised this question to us, sir, that hiring of vehicles. How will you calculate the local content? Because the driver is also local, the vehicles are also being locally manufactured, and the fleet provider, the company, is also local. They're not having anything from outside. So why do we need this PMI clause in those hiring of vehicles? So that you just take a declaration from them. Be safe. Their consultants are sitting, just they see whether the clause is there or not. We had a very tough discussion with DPIT also. So why it's required in like laying of work, laying of OFC? Why it's required? You can just keep the clause and take the declaration from just and be safe. So that was ridiculous, and we also couldn't just make it further. Recently, this rule 144.11 has been introduced in GFR, where they just asked that the bidder either should not be from a country which shares land border with India. What are those countries? They have not named any country. Yes, but the beneficial owner of your bidder, beneficial owner of that bidder should not be from that country. Example, Coslight. Coslight Batteries is having manufacturing here in Badi. Everything, he's taking raw material, bringing it from outside or taking it from India, but he's having beneficial owner in China, Coslight China. So he is not been given this clearance. We moved the case. We said that we are having only 3 or 4 battery vendors and we need more competition. But DPIT straight away said, yeah, 3 and 4 are sufficient for you. Just go ahead with them. Excite Amar Raja and Bayer. Here. Yes, again, it's a self-declaration. It's a self-declaration. And there have been complaints because now one thing you must have noted that in the e-tendering or in the GEM, the bidders are able to see each other's documents. Whatever the document they submit or upload in the bid, they are able to see each and every document. They they partly evaluate your bid. They say no, sir, this is a wrong declaration. This not, and there has been complaint in DPIT. We have to just argue and we have to just convince them how it is okay, how we have considered him as eligible bidder and all those things. So wait loud. हाँ, नहीं तब अब क्या हुआ है? For AMC, they are saying to us, please move into some other vendor. Please take some other vendor. We are going for a tender. Yes, whatever the equipment has been supplied by Cloud, the AMC and O&M, which is required now, just do a tender for that. That's a question. That's a question. But yes, we are frustrating. Story. No. I- Okay. Okay. There may be a special affinity for that make.
Okay. So this rule 144 declaration also we have to tell the bidder that he is not having any beneficial owner from such a country which shares land border with India. This may be very Sir- tricky for you. It becomes difficult. सर एक इसमें क्वेश्चन है कि जैसे मान लीजिए हमारे सपोज किसी टेंडर में 5 बिडर्स ने पार्टिसिपेट किया. Is it related to this? Yes, sir. Okay. 3 of the bidders have submitted the declaration in this format, 2 have not submitted. They, okay. Okay. So we can we call for after the Yes. Yes. This question has been put to me in all 5 lectures which I have taken here. What can be taken in evaluation as a post-bid clarification? See, what is self? It's a self-declaration. Is not to rely on anybody else. It's a self-declaration. If he misses out, printed literature, if he misses out, you can take it. So like कुछ certificate of- ऑर्डर्स भी है सर कि कुछ जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है उसको Yes, लिए जा yes, सकते हैं बाद में yes. Something ताकि वो पार्टिसिपेशन में like past कंपटीशन. turnover, if you say he Yes. is not. It's all already available on the MCA website. You put the SIN, if it's a company, it will be available. For proprietorship firm, there may be difficult, but that's also past history. You Yes. cannot change it. Yes, sir. So self-declaration and whatever documents are available in public domain and which cannot be changed. Changed. Suppose on the date of bidding and now, it Yes. will not change. That you can very well go ahead and seek clarification, except through the post-bid clarification if he misses out. But everybody has wisdom. You know whether vendor is playing a mischief on you or Yes. what. You're all experienced. We are all experienced. We know what he is doing. Yes, minor deviations. Mostly the bid should be based on the intrinsic evidence. नहीं लेते थे बाद में कंपटीशन को बढ़ाने के अंदर वो 2 बिट छोटी सी डिक्लेरेशन के लिए अगर Yes, yes, डिस्क्वालीफाई हो जाए. nobody will say why have you accepted a self-declaration did not. But yes, the experience certificate, if it is he is not submitted, then you have to take a Yes, call. sir. Suppose he yes, suppose he submits you the work order or the work purchase order copies. He also submits you the payments received, but he is not able to get the experience certificate Yes. by the due date. After, हाँ, yes. Then what do? He has the work order, past work orders. He has given the proof of the payments. Now, question is whether he is holding such an experience or not. He is holding. He has submitted you the work orders. He has submitted you the past work orders, past payments, receipts. He has submitted you something. Clarification, you can go for that. नहीं करोगे? हाँ, जब कुछ नहीं है तो you cannot. If we see clarification means what? Something he has submitted and you want further something, some information to establish it confirmly. So, yes, that he has given you nothing. He has given you nothing for the experience. Straight away, just stop him there on. Yes. That's clarification means only whatever he has submitted, you want something, some more information. Oh, is it clear? Beyond any doubt? Specifications. For your or for us also, if it is a repetitive procurement, you can follow the specifications which have been kept earlier. You have to see whether those were sufficient. Was there any deficiency? Most of the time we are following the TECGRs, but for you also you are having already freezed or already established specifications for the work, SLAs and everything. But yes, from the past performance or from the past use of the equipment, you can go for the changes also. But try to keep it as generic as possible. Because after that, if you receive one bid, then you are in a fix. You don't have to reject that bid. Suppose one tender is there and there is only a single bid. You should not reject it. You should open it. Go for the financial evaluation. See whether the prices are reasonable or not. And you can finalize. Just you have to report it to your senior office. And at that time, we will see whether you have kept those things generic or not. If those are restrictive, we may question you. Why? So that you have to take care while you are framing the tender condition. Similarly, sometimes
there was a case of procurement of some firewall. They kept some certification from foreign lab. You keep certification from foreign as well as from Indian lab. It should not be that you go and get it certified from UL. It should be from STQC also, or any specific body which is in India. Suppose you keep it only foreign body, then it will be a problem. They are taking it very seriously that you are keeping such a specification that they have to run here and there outside country and get their product or whatever software verified from a certain lab. That you should not. You should give both the options, Indian as well as the foreign. Should not be a deterrent for our local, because otherwise local won't grow. Because getting certification from a foreign lab will pose very great difficulties for them. Evaluation, as I already told you, you raised the question that what to accept and what not to accept. So, any clarification which is already linking or already required in relation to submitted documents, you can do it. Self-declarations, you can accept it. You not find all these things somewhere written. It's only my past experience which I have gained in last 13 years in working in MNC. But yes, everyone up to senior management, they have agreed that, okay, we have followed the correct. We have accepted the self-declaration later on, no issue. What should be our aim? Wider participation, not rejection on petty grounds, minor deviation. These documents, something like which are already there, already existing on the date of bidding as well as on the date of clarification, is not going to change, you can accept. सर तो जैसे अभी हुआ कि हम लोग जो पेटी डॉक्यूमेंट्स है उसको ले सकते हैं बाद में, ना ले तो क्या वो लीगली गलत होगा? हाँ, नहीं तो क्या वो मॉरली ठीक होगा? नहीं मैं वो तो ठीक है सर, वो तो लेना है कंप्लीट। मैं जस्ट एक क्वेश्चन को अगर ऐसी भूल हो जाए, जो है, यस सर, जिसमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो सर, जैसे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, अब legally मैंने बोला ना, it will not be written somewhere. It will not be written Yes, somewhere. sir. But nobody will question you. Why have you taken the annual statement, annual financial turnover of say 2017-18 when he had not submitted it? Because it's already freeze. It's not going to change. It's an audited report. yes. It's already available on the MCA website also. As I told you, bidders can see the documents of each other, so they will partly evaluate for you. Come to you. Please be open. Suppose some bidder comes, sir, he has not done so and so. The other bidder has not done so and so. Look thoroughly into that. Seek a post-bid clarification. Why have you not done so? Kindly clarify. New documents as per what I have told you. Award offer. The distribution, I told you that 25% reservation and the sub target for SC/ST and women-owned MSCs have to be kept. Okay, in field, are you getting participation from SC/ST owned and women-owned MSCs? No. What's the reason? What may be the reason? Yes, we are not able. I just wanted to get some information that how should we promote the participation, because every meeting I attend. Pardon? This one. Huh. Suppose, okay, 25% you keep reserved for MSCs. What do you do for the 75% unreserved? You award it to L1 or you keep a provision for L1, L2, and L3. You distribute it, because we have kept in our manual that you can go for two bidders also, 60-40. You do it like that. Normally for goods, we can distribute the item. For services tender, it's not possible. Services, suppose there are 4 blocks. And in one zone, we have floated a tender and we are asking for power plant maintenance. So then we don't do that 80% will do L1 and 20% will do L2. In case of supply of goods, we define the quantity that L1 will supply this much and L2 will supply this much. Where the work cannot be split. Yeah. Where cannot. And regarding you have told why SC/ST contractors or bidders are not coming. Reason is very clear, because they do not have experience. When they have experience, we should relax in the experience conditions first so that they can enter. If once they enter,
then they can participate in future tenders. So one thing which has emerged from this class is that we can give further relaxation to SC, ST owned and women owned. We give some relaxation to MSCs. We can give further some relaxation, 5-10% more down to women owned and SC, ST owned. Let us try this. What I have learned from this is, suppose you require 100 for normal bidders. You keep 25 for MSC bidders. You keep 15 for women owned and SC, ST owned. Let us see what happens. Don't have any program of vendor development. That is the issue, because we keep experience for everything. Then So, they are all those bidders who are having experience can participate. we can pledge for women owned and SC, ST owned further. For normal MSCs, say we थोड़ा सा नीचे जाकर, you can just keep it a little bit down. Okay. Without experience, yes, you can do it. Pardon? No guidelines for without experience tenders. Can you cite any example in BSNL which tender we can go for without experience? Yes. We procured OFC. Supply without any experience. We just ask them that you should have TSEC type approval certificate, or you should have applied for that. With that goes the infrastructure assessment as well. You have the capability, you have the product, verified product from QA. What I need is vehicle may, yes, capability. How many vehicles do you require? Suppose you require 2 vehicles only or 4 vehicles only. Yeah. No, not BSNL experience, but he is having some other experience that you should allow. No, private ho? Yes, private also you apply. What difficulty you face in, suppose you want to go for verification of the experience certificate. From private, it will be difficult for him. And for the government, it will be easier. But this should not be the ground that we should not allow the private experience. Here in corporate office, the new technology is being supplied to the private TSPs. How can we just say, no, you should have supplied to government TSPs only? There we cannot. You can see the MSCs and startups, whatever the clauses are, the motive is same, that you don't keep experience first. You give them 25%, see their performance, they'll gain the experience. The motive is same. Then you have enough provisions in your tender. See, exceptions का generalization नहीं कर सकते हैं. विदाउट एक्सपीरियंस हुआ है, सप्लाई के केस में हमारे पास कोई दिक्कत नहीं हुई है. हाँ, इसे किया, you have to see. हाँ, वो एक्सपीरियंस नहीं हुआ, मतलब प्रोडक्ट क्वालिफाई हो गया. प्रोडक्ट हम कहते हैं, we ask them to just obtain TSEC or type approval certificate before supply. Even on the date of bidding, you should have applied for it. And he obtains, and I think 1 or 2 cases only, sir, has happened in MMCL tenders where the L1 bidder couldn't complete the work. 1 or 2 cases. One case was of 4 fiber drop cable where he quoted by mistake a price of 13 rupees 80 paisa per kilometer. He thought he has to quote per meter. That's all. One case, and we banned it. Because we knew that it's not mala fide intention, it's a mistake. But we had to, because it was too gem. I couldn't go, if I awarded him at 13 rupees 18 paisa, he had to refuse. He cannot execute at 13 rupees 80 paisa per kilometer. It was non-viable. But yes, as per procedure, I had to ban him for 1 year. Okay. One main shift which we have done in corporate office is that for supplies. इसमें भी कॉन्सेप्ट नहीं. Business banning means we cannot participate in our future tender for 1 year for MSC bidders. For MSC bidders, the ban period should not be more than 1 year. It's very clearly. That is banning or business banning means it cover everything, sir. Participation in the tenders, no future dealings. नहीं, बैन शब्द का कोई Yes. कॉन्सेप्ट नहीं है, जो अपनी टेंडरिंग प्रोसेस में भी कहीं नहीं है. QE को जो guidelines, new QE guidelines have been issued in July. They have said that blacklisting, business banning, barring have to be used interchangeably. We were having a different concept that blacklisting is something else. आप लोगों ने जो लेटर निकाला था बारिंग वाला, बाद में उन्होंने बोला कि ये सब एक ही चीज है नहीं. तो हम एक नया कॉन्सेप्ट ना करें. मतलब आई डोंट नो कि आप अप्रोप्रिएट हो. मैंने एक चिट्ठी लिखी थी
कि जब भी हम किसी को ब्लैकलिस्ट या बार करते हैं, कोई भी वेंडर को, अभी तो खैर हम लोग से चला गया ये काम, बट स्टिल सर्किल वाला भी ये फेस करेगा कि एक बार अगर अपन ने बार किया या बैन किया या ब्लैकलिस्ट किया, उसका ये मतलब है कि हम लोगों को बहुत सारी एक्टिविटीज करनी पड़ती है। कोई भी नहीं चाहता है टेंडरिंग अथॉरिटी को किसी को बैन करे या बार करे, बहुत ही कंडीशन, प्रोसीजर 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 नहीं, किसी वेंडर को पार्टिसिपेट करने के लिए बार करना या बैन करने वाली बात है, या ब्लैकलिस्ट करना है। तो लेकिन अगर एक बार ब्लैकलिस्ट हो गया वो बंदा, मतलब अगर आपके साथ अच्छा काम कर रहा है, मेरे साथ अच्छी नहीं काम कर रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो तीसरे के साथ अच्छा काम कर लेगा। तो नाउ तो ये जो एरिया वाइज का कॉन्सेप्ट खत्म होना अब चाहिए। एरिया वाइज वो हो रहा है, तो जो ब्लैक लिस्टिंग जो है, बिजनेस प्लानिंग के अलावा जो ब्लैक लिस्टिंग है, वी आर सेइंग इफ इन आवर टेंडर्स, what we'll do in for circle tenders, I will just tell you later on. In our tenders, we are saying if the bidder should not have been banned by ministry of any ministry, BSNL, any ministry or BSNL or TOT. Three things we are keeping now. Blacklisting नहीं होना चाहिए on the date of bidding. That every punishment, every punitive action is having a period. Blacklisting is also have a period. टीम में कभी नहीं होना चाहिए, वो गलत है। परपेचुअल पनिशमेंट किसी को नहीं दे सकते, हमें नहीं मिली सर, कभी हमारे मार्क्स कम आ गए तो हमें आगे थोड़ी ना बढ़ने दिया, रोक दिया गया। यस, अपीयर इन द अगेन, नो पनिशमेंट शुड बी परपेचुअल। तो मिनिस्ट्री अगर निकाल रही है कि ये ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए, मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री अभी हम कह रहे हैं मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, DOE, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, यस, बहुत सीवियर रही होगी सर, कुछ बहुत सीवियर डिफॉल्ट रहा होगा। ब्लैकलिस्टिंग बैनिंग ऐसे नहीं होती सर। हाँ, अब हाँ, आपके बीए जैसे बैनिंग कहाँ पर है, तो द बैनिंग इज where he has submitted some forged documents of say experience, of say bank instrument. It's a forgery. It's a forgery. It's a severe default. It's a misconduct, sir. But he has not performed. तो उसमें क्या That करें? doesn't fall into the banning. If he doesn't perform, he's been awarded a work, he doesn't accept. He couldn't accept. He's a normal bidder. His EMD should be forfeited simply, sir. कंप्यूटर वाले को Sir, he didn't accept the work order, and as per GEM, we couldn't award him. We banned him. नहीं We लेकिन tried to convince that yes, it's a mistake, but management says no. You award him, let him say refuse, get it refused, and then ban him forward. लेकिन ऐसा कोई था फ्रॉड, तो फ्रॉड MSC bidder. फ्रॉड MSC bidder. फ्रॉड तो नहीं था लेकिन उसका। EMD नहीं था। अगर EMD होता तो EMD हम उसका फ्रीज करके या उसको प्रॉफिट अच्छा, एक चीज बताएं, जैसे कि 4-5 केबल का टीसी स्पेक्स है क्या? अपनी है, क्योंकि क्या है ना, मार्केट में 6 रुपए से स्टार्ट हो जाती है और हमारा 12-13 रुपए मीटर पड़ता है, तो कुछ स्पेसिफिकेशंस से अगर कुछ 6 रुपए देता है तो यू कैन ट्राई। नहीं, इसलिए मैं कर रहा हूँ, इसलिए पूछा कोई स्पेक्स है क्या हमारे पे? हमारे स्पेक्स अगर उस हिसाब से क्यूए होता होगा उसका, सेट होता है क्यूए। टीसेक भी है? यस यस, बोथ। तो टीसेक हमारे स्पेसिफिकेशन में टीसेक हो जाता है? Yes, tender specification, you can go for the TC on tender specification as well as TCR. TC का जो type approval है, which is called type approval certificate, they do it on the TCR only. They don't do it on the BSNL tender specification. TCEC is done by BSNL QA wing, headquartered in Bangalore. कितना पैसा लेता है वो, कितना खर्चा आता है पता नहीं? Vendor से 5 lakh rupees से 5 लाख? 5 lakhs. Before banning MSC bidder, whether any, I mean, NOC sort of thing is required from MSC? हाँ, MSC. Any उसको punishment देनी है उसे NOC. Because he, There is a show cause notice to be given to him. Then why did you do such a default? okay, There is a procedure laid down in chapter 19 of BSNL procurement manual. You have to follow. Recently, one circle didn't follow that procedure, and they landed up in a very bad position. They banned a MSC bidder for 3 years. They didn't follow the procurement manual, and now they are struggling like that. How to revoke his ban? So it was a default conducted during the process. The process should be first issue a show cause notice to him. Why? Okay, sir. So these are the documents, the hierarchy of documents which are, the above is, the topmost is the Constitution of India, then the Contract Act,
Sale of Goods Act 1930. Then other rules like GFR, financial power rules, vigilance, security, and these guidelines which are coming, Rule 144, these, and then it comes out through our manual. ये GFR क्यों जरूरी है हमारे लिए? Sir, our manual is also based on the main thing of GFR का कुछ डेलीगेशन तो है नहीं, GFR में जो डेलीगेशन है, that is not being followed in BSNL. delegation, financial delegation. They have mentioned that you can follow your own financial delegation of powers. नहीं मतलब what I'm saying that unnecessarily अपनी चीजों को बहुत सारे एक्ट्स में बांधने से हम लोग कॉम्प्लिकेशन नहीं बढ़ता. So like Rule 144, they have introduced the GFR related to the security of country. You have to follow that, sir. Rule 149 for GEM procurement. You have to follow that, sir. जैम Not तो all rules. नहीं, जैम इज फॉर इट इज द इंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉट Yes, GFR. so if it has been introduced through a GFR rule, it has been introduced through GFR. Mandatory nahi hai. But yes, these are something which have to be followed. They have clarified, sir, that these have to be followed by CPSEs also. We have emerged from a कन्फ्लिक्ट government entity. नहीं, कन्फ्लिक्ट नहीं होता, कन्फ्लिक्ट तो नहीं आता कि मतलब हमारे में कुछ है और GFR में कुछ और है. नहीं ऐसे तो ज्यादा मिला नहीं, अगर आपको मिला तो बता दो. नहीं मैं तो देखा नहीं मैंने. Yes, sir, financial delegation में उन्होंने लिखा है, sir, financial delegation you can devise your own. How much to be? Those also keep on changing from BSNL point of view. We keep on changing. हाँ, इसमें business में, but financial उसमें GEM वाले में जैसे GEM, I told you that it's easy for us, very transparent, very few persons are involved. Like in our opening, we have a committee of 3 people. In GEM, you can simply open by, it can be opened by a single person. As I told you, the Rule 149 for GFR provisions for GEM procurement. 100% procurement through GEM has to be done by BSNL or all PSUs. Now, what do you mean by 100% procurement through GEM? Whatever items which cannot be procured through GEM, work contract, that cannot be done. Rate contract, this cannot be done. So whatever items are available on GEM, okay. Whatever are not available, which can be brought onto GEM, can be done. Recently, we have given targets of 100 and 150 crores for goods and services for GEM procurement in the current financial year, and we'll keep on increasing that. So they say whatever your target is there, you have to just do it through GEM. Then at present, we submitted a report that we are nearly 50% of that total target as on date. You can search, start. It's very easy how to find the product. If it is really not there, you can generate a non-availability report. Then you go to the CPP portal. How the users are registered. It's a very beautifully laid down procedure. The authentication through Aadhaar based and your mobile, the email IDs, everything is very, very established. Different modes of purchase, direct purchase, L1 or e-bidding, reverse auction, forward auction, every process is there and it's all automated. Audit trail is also available on the e-tender portal also, but yes, everybody can see the audit trail on the GEM also. Help center, help desk is also there. They help you very quickly. The structure, primary user creates the secondary user. His role is only for assigning the works, the paying authority. Yes, now here is a important thing that we conduct tenders through GEM, we award it, we go for procurement, we make the payment also. Maybe not in 10 days or so, but very more quickly than other vendors. Because whenever the circle sends a fund request for GEM, they are required to specifically head it or subject it that GEM procurement, and we prioritize the release of funds for the GEM. Then here one thing is lacking is that after making the payments, we are not updating on the GEM. There, when we get the report or we generate the report from the dashboard, we are seeing lot of pendency. I can just say that nearly 50-60% payment has already been made out of that. Just it's a fake indication that it's pending. Because it has not been updated.
So just try to get to the payments which have already been made, updated, and whatever payments are made, please try to get it updated as soon as it's possible, within 5 or 10 days. So that will reduce the pendency which is being shown at present against BSNL. It's not actual. We have already made the payment. Check that board. हमको हाँ तो वो तो आपकी ERP CO से पेमेंट सर ये जेम पोर्टल पे अपडेट कर सकता है हाँ तो जब वो इंटीग्रेट हो जाएगा तो हो जाएगा इंटीग्रेशन इज गोइंग ऑन सर SAP has been engaged with that meetings are going on with GEM. Once that gets integrated, so then that problem will. No, vendor को तो SMS वगैरह जा रहा है vendor को SMS जा रहा है उसको प्रॉब्लम नहीं है उसको वहाँ जेम पे भी रेज नहीं कर रहा है बट ये कि जब हम जेम की डैशबोर्ड से रिपोर्ट निकाल रहे हैं वी आर सीइंग इट शोन पेंडिंग so that is actually we have done it we are not and we are being made culprits as per the GEM report. So please try to get those payments which have already been made earlier, updated on the GEM portal. Different modes, L1 bid, RA, PAC, proprietary item, certificate purchase, bank purchase. All options which were there in the are there in our legacy process are all mapped or all available on the GEM. You can see the price trends, availability report, price comparison. Many features are there, but how we use it, how to maximize or the optimize our procurement at efficient cost, faster, is all available. The parameters or the tools are already available on the GEM. Yes, yes, perfectly good. You see up what the bidders are putting their prices are a little bit higher. When you go for bidding, you get a lower price. But bidder कहाँ पर जेम पर Amazon पर करना है लेकिन आपको अगर एस्टिमेशन करना है तो अगर आपके पास और भी कोई if you are having any other input also from the market or from the Amazon if you are saying you can just quote that also while preparing the estimate. Yes. Price higher है price higher है. Right. Okay, if there is some non-performance, just cut short the contract. If it is not performing, we have to take the timely action and report it to GEM. So yes, GEM को report करना है. You have to report it to GEM, bring it to their knowledge that they have not performed, they have not done met the SLAs, and they take action, very serious action. Pardon? Cost higher, and they also keep a track what they have mentioned on their listing and what the prices they have quoted in their bids. They also keep a track. Then they go back to vendor that you have shown a very high price on the portal, but whereas you have quoted this much, very low price. They they are monitoring. They are monitoring. Yeah, but report it. Don't keep that information to yourself only. Report it to Jeff. SOPs, all our circulars, as I told you, those are available under under Director Enterprise. This is the SOP which we have issued in March last year. Various letters.
various forms of what? जब में हमारे यहाँ उल्टा हुआ है हमारे यहाँ मतलब we received in vehicle hiring we received lower rates and then he was speaking sir I have quoted less मैंने कहा why have you quoted less so मतलब both way it can happen then मतलब I cannot generalize it that rates are higher or rates are lower our feedback हाँ वही how beautifully the specifications have been yes sir sir HP और जो make in India वाले we have in computers we have taken but yes functionally sir कोई problem नहीं है specifications हाँ functionally ठीक है हाँ जी हाँ जी process नहीं sir if we are suffering if we are facing some non-performance or bad product we should bring it to the knowledge of them then they will ask what were your specifications and what has not been achieved what has not been met by the supplier you have to be very matlab very specific that yes this was the specification he has not supplied to this specification so that you can always reject don't generate the CRAC reject it report it then only these such bidders who are just making a fun of system such only few bidders will be penalized and there will be a deterrent जैसे कि पहले फिलिप्स का ट्रांजिस्टर आता था एक मैं भी ट्रांजिस्टर बना सकता हूँ तो दोनों की क्वालिटी में फर्क ही होगा ना हमेशा specifications तो how good our specifications are तो स्पेसिफिकेशंस फिर मतलब उस तरह बनाओ कि फिलिप्स ही क्वालिफाई करे अब specifications अगर अच्छी you keep the specification as per your requirement or little bit higher not so stringent whatever your requirement is there you keep just higher than that just small margin then you get a good product but if you keep the specifications same as you require so there they may relax or some production variation can also but you have to report it whatever parameter is not met you have to report to GEM that this vendor has supplied us and this is not met you should not generate the CRAC also financial delegations as we have already told we have to follow our own financial delegations One question here. In case of GEM, when we go for direct purchase, we can purchase up to rupees 25,000. And in our delegations, we have the power of 15,000. So whether BSNL should not be in sync with the GEM, It should be we have discussed this thing will be seeking and the same thing is in 3 quotations. In GEM, we can go up to 5 lakhs. And here we have power of typically 50,000, even 1 lakh also power has been given, but then it should be raised. they are just Okay. Be a head, you can go to a vertical head also in circle. व्हाट विल बी डिसीजन नहीं क्या होगा क्या मतलब क्या हाँ रिकमेंडेशन क्या है I don't know sir लेकिन होगा yes once some very valid observation is given to them or to any bank then the result will be good already told you the simplicity of the GEM process voice payment already covered you are sending the request with the subject as GEM portal procurement to prioritize the fund allocation. It's already issued by CBB. This letter of 15th December 21 should be followed so that you can easily or fastly release the payments route for the procurement to GEM. We have also told that the 10 days is not a feasible thing. We cannot release the payment. They also agree. Okay, but I myself told them that it's for 45 days. 45, 50 days, because we have a process. Please get it updated fast. When there will be integration, then the duplication of work will be avoided. You don't have to worry for that. So these we cannot do it to GEM at present.
are the 40 items you were asking. These are the list of those items which we have already identified and available, and we are ourselves also doing tenders for these items too. The 40 items. We are also adding more. 12 fiber we have added. We have gone for 12 fiber 2FC cable. कंट्री के थे जो गोरे जिन्होंने पे राज करा था, उनको फायदा हो गया यूरोपियंस को। Guidelines and we have to when the concern is of security. जिन्होंने हमारे देश को गरीब गरीब बनाया, those countries have been benefited. Now, most of the items we are bringing into the site. Now, as you see the MM streamlining process, yes, will only do small tenders, but the main tenders will be done by the corporate office and circle. I think BA will not do any tender. कितनी केबल खरीदना है या हमारे को कोई स्पेसिफिक जम्पर्स खरीदना है, वो इक्विपमेंट का पार्ट होता है, तो सेंट्रलाइज आइटम में होता है नॉर्मली। अब वो एज ए स्टेप कोई नहीं खरीदता है, फिर अल्टीमेटली फील्ड वाले को खरीदना है क्योंकि उसको चलाना है। तो ऐसे पहले अपन लोग लिस्ट निकालते थे, तो अभी जैसे मान लीजिए सब कुछ सेंट्रलाइज हो, तो फिर 3 कोटेशन का Except those पे लेकिन एक footnote है, इसके अलावा any item which is beyond this, हाँ विल बी परचेज बाय सर्किल, और सर्किल के नीचे की वो खरीदना कुछ सर्किल ये नहीं नहीं yes, you have to just make use of the whatever equipment is being supplied to you. You have to just put it in the सर टॉवल आप कैसे बोलेंगे कि सर्किल खरीद के देगा? तो 3 कोटेशन वाला हिसाब अपने पास ही रहना, वो 3 कोटेशन वाला हिसाब बीए वाला रहना। items है circle may not circle will just keep these things to you organized. नहीं कुछ कुछ मतलब जैसे डे टू डे ऑपरेशन के लिए करना ही पड़ेगा, मतलब हम लोग कुछ भी कहने के लिए, कुछ भी हंसने के लिए कह ले, तो उसमें कभी कभी हम लोग को ये बोलते हैं कि जैसे कन्वर्टर्स होते हैं, एक ये AC to DC वाला, तो हमने पता चला 10 खरीद लिए, बाद में वो लिस्ट मांगने लगा कि भाई आप हमारे को दो, कितने चाहिए, तो फिर समझ अब हमारे को मालूम ही नहीं कि हमको खरीदना कि सर्किल को खरीदना है कि कॉर्पोरेट ऑफिस को खरीदना। सिस्टम डीसी वाला है, अब वहां पे या तो 25 एम्पियर का मॉड्यूल लगा दो आप, या क्या करो 5-10 एम्पियर का कोई छोटा सा खरीद लो 5-7 हजार रुपए का। ये कर रहे हैं कि if it's like that, कि 5 तक ही नहीं है, so he is providing the converter free of cost. अभी जैसे C-band अरे नहीं हुआ तो खत्म हो गया, तो फिर वो कन्वर्टर खत्म हो गया तो फिर क्या करोगे आप? मीडिया कन्वर्टर हमने भी खरीदी। हाँ, समथिंग जहाँ एकदम टेंडर हुआ तो some tenders were going on from the circles also. SIM card we have done a centralized tender, and in the meantime some circles were also asked to go for the SIM. ये कन्वर्टर जो खरीद रहे हैं ना, दैट इज फालतू इन्वेंटरी में पैसा जा रहा है हमारा। नहीं, उसका 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 बेटर तरीका ये है कि मतलब आप वेंडर को कोई रेट फिक्स कर दो कि जो भी वेंडर लगाएगा उसको 800 रुपये दे देंगे, वो कि रोज खराब होते रहते हैं, रोज लगते रहते हैं। Point. थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाएगा, क्लियर हो जाएगी। ओके, लिस्ट that was all from my side. Anything else? It's very vast. If you go on speaking, you can do that. हिसाब से है वो किसके ऊपर? We have done.
we very clearly lay down in, I think, clause number 9 or 6. If you are banning or if you are blacklisting him, banning, this is banning word used, ban kar diya. So, and the area is also defined that he is banned in my zone or my BA or my SSA, and you have to update it on intranet portal also. Intranet, BSNL's intranet portal. You have to update it, and then you send a case to your higher office with some recommendation that we have taken this punitive action or we have banned him. This may or may not be. You have to just say, recommend. He has done such a default that the circle should also consider for banning him circle-wise. Ban circle. Blacklisting we cannot. Blacklisting, sir, we have issued, you were citing that letter, we have issued that you should not blacklist. You should only business ban for your area. How can you say that he will not perform? It may be a local issue there. It may be something else. If suppose he has committed some fault, as I told you, he has committed improper. You have to send immediately after banning. You have to send a case to your higher officer. और वो वहां तक आपके पास तक पहुंचा नहीं पहुंचा मुझे नहीं मालूम। हमने बकाया सर्कल इज नॉट एक्टिंग, सर्कल इज नॉट टेकिंग वही चीज, मतलब इवन जैसे आपके पास चला गया, आप ही की टेबल पे रखा रहा, वो आगे नहीं जा रहा है, तो नॉट से कि कोई एक पर्टिकुलर सर्किल है या कॉर्पोरेट ऑफिस उस पे एक्ट नहीं कर रहा। मेरा ये कहना है कि ये प्रोसेस है, उस पर टाइम लगेगा। And you are able to see that suppose Rewari has banned some XYZ vendor, and some other, say, Gurgaon also comes to know that he is banned on such and such default. If they have to take a call that the default has been such that yes, he should not be allowed here. They have to take call on their own. If circle has not acted on time, circle says no, just keep the ban to your VA only. Then, but yes, circle also says, but that takes time. Then you told. Circle will take time. Every higher office will take time. चलो मैं एक केस भेजा, अगर नहीं है तो मैं तुमको भी एक बार भेजूंगा, देखना। Unless the decision is taken, we cannot. Yeah, decision has to be taken fast. Every. Manoj, one question with regard to MSME. In case of this medium scale. His mic is not working. Not at all working. I think I'm quite loud. No, you are very much audible, sir. In case of medium scale, I think the turnover should be around 500 crores, something like that. But how much purchase order you can place on those entities? Medium. Medium, there is no reservation, there is no preference. Medium are open, just like normal. Okay. Medium scale, there is no preference. I haven't gone through the MSME Act or those literature. Recently, what happened? There is one vendor, ISP, one Page Digitech, and I found his vendor creation. While vendor creating, he has been tagged as MSME vendor. Yes, yes. अच्छा ये अच्छा When they have done the work on time, as per your specification, there was a solution. अच्छा There's a solution for every type of it. I have a question that in one of the slide you were telling that if the L1 is MSME and then L2 15% preference, वो क्या था वो? Right.
MSME में L1 MSME, हाँ हाँ M, हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ 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 at L1 rate. It's recently corporate office, they have given that one guidelines for this payment of this cluster partners under this Vivad se Ishwas scheme to return back their 15% penalty case. Actually, there is a lot of confusion in that because from Bangalore unit, I could not approve it. But what is the trend? What is the guidelines on that? Because that 15%, no, the 15% penalty clause, what is been mentioned in the tender document, while draft document has been given by their corporate office, while floating their cluster, copper cluster partners. That document was for definite, but every circle has followed that only. And if you have levied a penalty on some vendor due to his non-performance during the COVID period, he has to be compensated back. As simple as this. As simple as that. Whether it's LD or it's penalty. Somebody says it was written LD, we will not return the penalty. So the motive of the policy was if they were not able to perform due to those conditions, pandemic, please compensate. That's all. प्रॉब्लम आती होगी, सब जगह आती है कि बस कि ये सपोज मतलब L1 को दिया अपने काम, उसको वर्क ऑर्डर अवार्ड कर दिया और वो काम ही नहीं कर रहा। अब क्या करें? पहले हमारा तो प्राइमरी वर्क है ना, प्राइमरी वर्क है हमारे लिए तो। नहीं तो वेंडर ही नहीं है ना, लेकिन दूसरा वो नहीं कर रहा और दूसरा वेंडर ही नहीं, जैसे सप्लाई। नहीं देख क्या है ना, जैसे कि मतलब आप जब प्रोक्योरमेंट करते हैं तो आप मल्टीपल वेंडर्स को ऑर्डर देते हैं, इशू नहीं है। नहीं अब जैसे अब है ना, अब जैसे वो था फेज 1 का मेंटेनेंस था, DPL ने काम नहीं करा, किसी का बाप उनसे काम नहीं करा पाया, तो इस टाइप के जो मेंटेनेंस के काम जो होते हैं, मेंटेनेंस के काम होते हैं या ट्रेंचिंग के काम होते हैं, तो उसमें मतलब कुछ कोई कर ही नहीं पाता, क्योंकि ऑल्टरनेट वेंडर है नहीं आपके पास। आप लिख तो देते हो कि उसकी कॉस्ट पे हम किसी और, लेकिन यू डोंट हैव वेंडर। मतलब बात ये, वो तो चलो DPL अलग इशू है, लेकिन एडजेसेंट से अब एडजेसेंट में 10 वेंडर हैं, 25 वेंडर हैं, तो आप किससे कराओगे? तो जो ट्रांसपेरेंसी कैसे होगी फिर? क्या नहीं, क्वालिफाइड बिडर की उसकी लिमिट थी 10 लाख 1 करोड़ की, तो 1 करोड़ काम कर लिया उसने, तो आप उसको उसे एक्स्ट्रा काम करा सकते हैं? नहीं, ही कैन। नहीं, मैं उस काम को कराने के लिए दूसरा वेंडर अपने BA में ढूंढूं, अपने सर्कल में ढूंढूं, कि पूरे इंडिया में ढूंढूं, कहाँ ढूंढूं? तो घर की बात तो घर की, नहीं घर की बात तो घर की बात है, लेकिन विजिलेंस विजिलेंस क्या बोलेगा? नहीं नहीं, फर्क है, नहीं फर्क देखिए, मैं तो जैसे मेरा केस है, मेरा ट्रांसफर होता रहता है, मैं जब भी सामान ट्रांसफर करता हूँ ना, जो मैं L2 को देता हूँ काम, मैं अपना जब सामान शिफ्ट करता हूँ ना एक जगह से दूसरी जगह, कहीं भी ट्रांसफर होता है, मैं L1 को काम देता ही नहीं हूँ, L2 को देता हूँ, नेगोशिएट भी नहीं करता। ये तो मेरे घर की बात है, क्योंकि मेरे को पता है L1 जो है हाँ पर्सनल कॉल है, तो घर की बातें मैंने छोड़ दे अपन। मतलब ये मैंने थ्रू आउट लाइफ मैंने फॉलो करा है, मैं 10 बार ट्रांसफर हुए, 10 बार मैंने L2 को दिया, एक बार L1 को दे दिया, मेरा फ्रिज खराब हो गया, तो वो देता ही नहीं। Okay, thank you very much, sir.
for such a nice and wonderful session. Have a big round of applause for that. Now, I would like to invite Mr. Mahapatra ji, President Wonderful. Mahapatra ji. On behalf of Batch and ALTTC. Yes. Excuse me. Good morning, everyone. One announcement is for you. Actually, you have to submit your case study document group wise. Okay. So you just mark your group number on your document and submit it to me. All right. No, no, you have to submit here. Okay. Group wise. Sir, sir, wait, 1 minute, 1 minute.
Next speaker, Mr. BK Gupta ji. पॉइंट किधर करना है For this class. या कहीं भी ऐसे ही? So have a clapping for sir. मुझे दिखाइए. फॉरवर्ड बस बता दो ये फॉरवर्ड केवल फॉरवर्ड बैक बता दो अच्छा ओके good morning everybody. This session was to be taken by CGM BW, Mr. Dayal, but he is preoccupied. So he has asked me to take the session. I am Vikas Gupta, Senior GM Land Management 1 in BSNL Corporate Office. So actually we have about, I think 1 hour, no? 45 minutes. So time is very short. So I will just go through because already we have circulated all the policy, all the rules, everything, just to give a broad idea of land monetization, why we are doing it, how we are doing it, so that as BA head and IFA, you can, in the field, you can appreciate what is being done regarding this. Now, the first thing, why we are doing this land monetization? Recently, a lot of pressure is there on this. Whether we are doing this because BSNL is in loss, that's why we need to do it. Recently, we are taking many bidders meeting at many places. In Andhra Pradesh, some retired employees of BSNL came and they were of the view that you are selling old silver of BSNL and this DOT what we had gathered. So it is not like that. As a general policy, government has decided that all useless assets which we are not using or they are underutilized, that can be disposed of so that those lands can also be used for something better. And in return, you can get money also. So it is not only with BSNL. National Land Monetization Pipeline is there, NMP, in which all the departments are doing this, whether it be railways or power sector, anyone. In BSNL, it is more advantageous to us in the sense that we are naturally in losses. So it will cover some of the losses. And number two, what BSNL will earn from the asset monetization, that will not go to the government, that will remain with BSNL. All the money that will remain with BSNL and we will invest it in BSNL only. So now what is the power about sale of land and building assets? Who can sell it? The basic rule about any government property is that it is given in GFR 2017, Rule 309, which states that no land can be sold without the sanction of the government. That is the basic rule. And for any, even some small plot is there, suppose 50 square meter plot is there, that also cannot be sold without the approval of the government. Government means naturally the union cabinet. Now till one circular was issued in 2011 by the government in which they clarified that for selling to anybody, you need sanction of the union cabinet. Then in 2018, some issue was there that one PSU wanted to sell the land to another PSU. So they sought clarification from the cabinet ministry, and they clarified. They gave 3 concessions that for sale to central government department or statutory authority or CPSU, you don't need cabinet approval. That the minister can do under the transaction of business rules. So after this clarification, now we don't need any government approval for selling to any central government ministry or department, statutory authority or CPSU. Only these 3 are there. And not recently, about 2 years back, we sold one BSNL land in Noida to Central Board of Secondary Education. So when that case went to DOT for approval of the minister, that time this question came, CBSE is neither central government ministry, nor central government department, nor statutory authority, nor CPSU.
It is a board which was formed in 1929 during British period by a resolution of the government. So whether we can sell directly or not. So when that issue came, then the matter went to Union Cabinet. Then Cabinet decided that, okay, the group of ministers is there, they will give the approval. And group of ministers gave the approval for selling that land to CBSE. So whenever we are offering any land to any government department, generally we feel that this is the government department, but we should be careful whether it comes under these three or not. Statutory authority, CPSU, or central government ministry or department. If it is under these, then the process will be very fast. Otherwise, we can offer, but it will go up to this thing, a group of ministers. Now, in 2019, the Union Cabinet decided that for every case of land, it need not come to the Union Cabinet. They designated a mechanism that is called alternate mechanism, which consists of 3 ministers, and they delegated the Union Cabinet power to that AM that they can approve selling of land. These contain the Finance Minister, the Minister of Surface Transport, Mr. Gadkari at present, and the Minister of the concerned department. So now the position is that 3 ministers, they can approve selling of any land of any value which belongs to the government. And all the assets will be disposed only through DIPAM, that is Department of Investment and Public Asset Management, which comes under the Ministry of Finance. And they also authorized this alternative mechanism that they can decide a value below which the ministries themselves can sell the lands. So after 1 or 1.5 years, DIPAM decided with the approval of AM that we will monetize only lands costing more than 100 crores, and below 100 crores, the ministries can themselves dispose it. After that, now power up to 100 crore came to the Department of Telecom, that they could have disposed any land up to 100 crore with the approval of the minister. After that, because a lot of lands were there, then they decided that up to 10 crore BSNL board of directors, they can dispose, and from 10 to 100 crore, we will dispose. And for that, they took the approval of the group of ministers, which has been formed for the revival of BSNL MTNL. It consists of 8 ministers. Here some anomaly has been created because for selling land of suppose 500 crore value of land is there. For selling it, approval of AM is required, which contains 3 ministers. And for selling any land between 10 to 100 crores, approval of group of ministers is required, which has 8 ministers. So that anomaly is there. It was raised also with DOT, but we decided कि चलो जो हो गया चलते रहे. So now situation is that any land between 10 to 100 crores, we are sending for approval of group of ministers, which has 8 ministers, and they are approving the sale, and then we are selling it. Now, when this power to sell came to BSNL and DOT, another problem came that how are we going to sell it? There must be some procedure, laid down guidelines. So we prepared a guideline, and that policy we got approved from the Minister of Telecom, Ministry of Communications, and issued it. All the monetization we are doing is being done as per that policy. One more question comes that what is meant by 100 crores and 10 crores? Who will decide whether this land is of rupees 10 crores? It may be 9 crores or 11 crores also. So if I show it on paper as 9 crore, the power will come to the board, but that land may actually sell for 15 crores also when we call the bids. So this query was raised with DIPAM, that who will decide this value. And then they decided that you can take any criteria, but stick to that criteria. Suppose we say that circle value will be taken, then in every case, circle value will be taken. So that time we decided that the threshold value of 10 or 100 crores, that will depend on the indicative value. And for indicative value, we made a procedure that we will get the land valued by a valuer. And based on that, the board of directors of BSNL, they will approve the indicative value.
once the indicative value is decided, that will become, on that basis, the power will be decided. So suppose one land is there and valuer gives that it is 90 crores land, and board of director approves that, okay, this indicative value is 90 crores. Now we go through complete process of consultant and everything, then we call tenders, and that bids comes to 110 crores. In that case also, the power to monetize will remain with the group of ministers. It will not go to alternate mechanism, because indicative value was decided as 90 crores, so power will be decided as per that only. Now coming to BSNL, we have around total 15,000 plots. This figures keeps on varying. I will tell you why it is varying. Here it is 15,312 it is written. हाँ जी 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 वो बिड करके खरीदा हमसे? नहीं, ये जो तीन ऑप्शंस हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या सीपीएसयू या उसको बिना किसी उसके दे सकते हैं। तो फिर तो क्या जो वैल्यू लेंगे? हाँ, उसके लिए भी जो, इसीलिए हमें जाना पड़ा कैबिनेट के पास में। ये जो प्रोसेस है ना, बिडिंग, ये कहीं लिखा नहीं है कि बिडिंग आपको करनी ही पड़ेगी। हाँ, कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि कोई भी लैंड बेचने के लिए आपको बिडिंग करनी पड़ेगी। आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा फ्रॉम द यूनियन कैबिनेट लैंड बेचने के लिए। नहीं, लैंड बेचने का अप्रूवल दे दिया उसने हाँ, और बोला कि 100 करोड़ से नीचे आप ही को करना है हम्म या 10 करोड़ से नीचे आप ही को करना है। हम्म मान लीजिए सीबीएसई बोर्ड की इंडिकेटिव वैल्यू जो आपने वैल्यूअर से ली वो 9.5 करोड़ थी, तो ये अपने बीएसएनएल के पास आ गई। अब बीएसएनएल इसको बेचेगा कैसे? कि वो 9.5 करोड़ में बेचेगा या उसको बिड करवाएगा कि उससे 9.5 से ज्यादा मिल जाए या कम मिल उसमें जाए? एक्चुअली क्या है कि एक जो क्लैरिफिकेशन निकला था कैबिनेट का 2018 में, उसमें केवल इसमें एक लाइन लिखी हुई है हमने कि जो तीन हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या पीएसयू, इनको तो आप बेच सकते हो। ये बेच तो सकते किस हाँ, रेट पे? रेट का कहीं जिक्र नहीं है। और रेट का जिक्र कहाँ पे आया? जब हमने ये पॉलिसी बनाई, हाँ, ये जो मिनिस्टर से अप्रूव कराई है पॉलिसी हमने हाँ, 28 जून 2021 को, इसमें हमने डाल दिया कि जब हम डायरेक्ट सेल कर, इसको हम डायरेक्ट सेल बोलते हैं जो विदाउट ऑप्शन करते हैं, तो जब हम डायरेक्ट सेल करेंगे तो सीएमडी विल डिसाइड कि व्हाट इज द वैल्यू, किस पे बेचना है। कि बिडिंग करना है या नहीं करना है? बिडिंग नहीं करना है। उसमें लिखा हुआ है कि कैन बी सोल्ड डायरेक्टली विदाउट ऑक्शन। उसमें लिखा हुआ है कि बीएसएनएल के पास ये तरीके हैं बेचने के। नंबर 1 ऑक्शन, नंबर 2 बाय डायरेक्ट सेल टू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। उसमें केवल ये वर्ड यूज किया, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री, सेक्रेटरी, ऐसे नहीं यूज किया है। और उसके लिए जो रेट होगा, रेट विल बी एज डिसाइडेड बाय सीएमडी ऑफ बीएसएनएल। केवल एक राइडर लगाया है कि द रेट शुड नॉट बी लेस देन द सर्कल वैल्यू। अच्छा, मतलब इंडिकेटिव वैल्यू कैन नॉट बी लेस देन सर्किल वैल्यू। हाँ, तो उस केस में हम सीएमडी से वो फाइल मूव करते हैं, अप्रूवल लेते हैं कि इस रेट पे, जो पहले वैल्यूएशन कराते हैं, फिर फाइल मूव करके सीएमडी से अप्रूवल लेते हैं कि इस रेट में हम ऑफर कर दें। उसमें ये भी होता है, कई बार डिपार्टमेंट कोई रिक्वेस्ट करता है कि नहीं ये तो आप ज्यादा है, कम कर दीजिए, तो उनका हम कम भी कर देते हैं। कोई ऐसा वो नहीं है अगर लॉजिकल। और अगर अपन ने और कभी कहीं लैंड बेची नोएडा के अलावा? हाँ, बेची है यहाँ पे आपके, बल्कि वो बैठे हैं इंदौर के बीए हेड, इन्होंने लैंड बेची है अभी एक इंदौर में, उज्जैन बीए में 2 प्राइवेट में एक बेची है, और जो ऑक्शन के थ्रू बेची है। देवास में भी जो 2 बिकी है ना, उसमें मेरा रोल 25% तो था ही, कम से कम 5 मीटर को बुलाया था मैंने। देवास में 2 बिकी, आई थिंक बैंगलोर आल्सो, मागडी रोड 1 लैंड हैज बीन सोल्ड। तो उसमें एक छोटी सी जानकारी, हमारे यहाँ पे एक केस चल रहा है। जी जी। तो उसमें यह है कि हमने जो लैंड ली थी वो, उसको लैंड यूज क्या कहते हैं, कॉमर्शियल वार इंस्टीट्यूशनल, जो एक्सचेंज के लिए। और जो प्लॉट है जहाँ पे हमारा बड़ा सा प्लॉट है, हम छोटा एक बड़ा पोर्शन उसका बेचना चाह रहे हैं। तो अब उसमें हमारे को वैल्यूअर ने लिखा कि ये कॉमर्शियल बार इंस्टीट्यूशनल है, बट इसका जो रेट है वो रेसिडेंशियल है। जब हमने उनसे वर्बली पूछा, जो एनेक्सर 2 हम भरते हैं, जब वर्बली गए तो उन्होंने बोला नहीं ये तो रेसिडेंशियल ही है आप। फिर हमने जब अपनी फाइल देखी, उसमें भी लिखा हुआ कि हम एक्सचेंज बनाएंगे, टावर बनाएंगे और क्वार्टर्स बनाएंगे। तो एक्सचेंज टावर और तो हमने बना दिया, क्वार्टर नहीं बनाया है। और सरकार कहती, स्टेट गवर्नमेंट की रेसिडेंशियल
पोर्शन है, बड़ा सा प्लॉट है जिसमें रेसिडेंशियल है, लेकिन हमारा कमर्शियल बार इंस्टीट्यूशनल के नाम से हम लोग को CLU होता है जनरली, हाँ हाँ जिसमें हम एक्सचेंज बना, तो उसमें हमको क्या लेना चाहिए? ऐसा कुछ आया? आपने वो क्या फिर रेट किया? basically क्या था कि हमारे तो जो रेट दो ये लोग नहीं, उनका केस डिफरेंट है क्योंकि जो हमने वहां पे इंदौर में बेची है रेजिडेंशियल थी वो तो। वो रेजिडेंशियल कॉलोनी में ही प्लॉट था हमारा, हमारे उसमें क्वार्टर थे पहले, अच्छा, और वो हमने प्राइवेट पार्टी से खरीदा हुआ था, तो उसमें कोई ऐसा राइडर नहीं। इंदौर वाला गवर्नमेंट था, देवास वाला प्राइवेट से। नहीं, इंदौर वाला उससे लिया है जो डेवलपमेंट अथॉरिटी से, डेवलपर आईडी से। मतलब वो लैंड एक्विजिशन एक्ट में नहीं लिया हुआ है, तो मतलब उसमें गवर्नमेंट हमें रोक नहीं सकती बेचने के लिए। कुछ जगह ये दिक्कत आती है कि जहाँ पे लैंड एक्विजिशन एक्ट में गवर्नमेंट ने लेके और DOT को दिया। उसको हमने ग्राम पंचायत से लिया था, हाँ उसने हमारे को इस पर्टिकुलर यूज के लिए दिया है, ये हमारा केस है, हाँ और हमको लगता है कि बिक जाएगा, तो हम लोग ने उसका प्रोसेस शुरू किया। अब इसमें ये पेज फंसा हुआ है कि व्हाट वी शुड टेक, रेसिडेंशियल या कमर्शियल बार स्ट्रीट। नहीं, आप वैल्यूअर ने बोला कि कमर्शियल और रेट लगाया रेसिडेंशियल, नहीं वो तो हमारा GM फाइनेंस पलट गया, बोला ये कैसे हो रहा है? वो आपको मास्टर प्लान देखना पड़ेगा। नहीं, किसी भी एरिया का जो मास्टर प्लान होता है उसमें दिया होता है कि वो एरिया क्या है, रेजिडेंशियल है या क्या है। हाँ, क्योंकि हमें ये नहीं देखना है कि हमें उसको किस लिए दिया गया था, हमें कमर्शियल यूज के लिए दिया गया था या इंस्टीट्यूशन के लिए दिया गया था। हमें देखना है कि जो खरीदेगा वो उसमें क्या बना सकता है। अगर वो रेजिडेंशियल एरिया है तो उसको दुकान बनाने की परमिशन मिलेगी नहीं उसके ऊपर, तो हमारे उसके वहाँ का भी जौनपुर का केस है, यहाँ राइट टुवर्ड्स योर राइट, अच्छा ये सामने, हाँ, अच्छा जौनपुर का केस है, उसमें उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट ने हमें पर्टिकुलर काम के लिए, एक्सचेंज बनाने के लिए, इन सब के लिए उन्होंने हमें लैंड अलॉट करी, हम उसे मोनेटाइजेशन के लिए प्रोसेस किया हम लोगों ने। अब उनका स्टेट गवर्नमेंट की ओर से, मतलब बेसिकली DM एंड बाकी लोगों की ओर से, कि नहीं ये हम आपका जो अलॉटमेंट है वो हम कैंसिल करेंगे, क्योंकि वो हमने आपको एक पर्टिकुलर काम के लिए दिया था। ऐसे केसेस में क्या करें? अच्छा, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो लैंड खाली है, वहाँ एंक्रोचमेंट ये बहुत हो बहुत गया जगह है और ये झगड़ा लंबा चलेगा। उसमें क्या है कि एक लैंड एक्विजिशन एक्ट है 1894 एंड 1896 की, उसमें सेक्शन 44A है, जब कोई गवर्नमेंट एक्विजिशन जो होता है वो हमेशा स्टेट गवर्नमेंट करती है, एंड स्टेट गवर्नमेंट एक्वायर्स दैट लैंड एंड गिव्स टू डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। और वो अब उसमें लिखा हुआ है कि एनी लैंड एक्वायर्ड कैन नॉट बी सोल्ड विदाउट द अप्रूवल ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट्स दे से कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मींस वी विल गिव द परमिशन एंड विदाउट आवर परमिशन यू कैन नॉट सेल। लेकिन उसी लैंड एक्विजिशन एक्ट में जो सेक्शन 2 में डेफिनेशंस दी होती हैं टर्म्स की, उसमें लिखा हुआ है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मींस द लैंड विच वाज एक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ यूनियन, द यूनियन गवर्नमेंट, एंड फॉर ऑल अदर पर्पसेस द स्टेट गवर्नमेंट। तो जो यूनियन के पर्पस से ली गई थी लैंड, उसमें यूनियन गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है। अब ये झगड़ा चल रहा है, कई बहुत स्टेट्स में ये दिक्कत आ रही है, तो हम लोग ये आर्गुमेंट दे रहे हैं, वो नहीं मान रहे। फिर जब ज्यादा बहस हो रही है तो कुछ जगह फिर कह रहे हैं कि ओके आप, जैसे अभी गुजरात में हुआ है, वो कह रहे हैं कि 50% हमारे साथ शेयर करो जो आप कमा रहे हो। तो अब वो हम लोगों ने एस्केलेट किया है ऊपर कि भाई ये हाईएस्ट लेवल पे, क्योंकि कैबिनेट लेवल पे डिसाइड हो गई है क्या करना है, या नहीं तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में जाके एंड करे, क्योंकि स्टेट वर्सेस सेंटर का जब इशू आएगा तो और हायर वो होगा। तो इस टाइप के इश्यूज आ रहे हैं, और क्योंकि ये इसको हम कहते हैं अनअर्न्ड इनकम बोलते हैं। जैसे दिल्ली है, BSNL में तो हमने फिर भी काफी जमीनें बेची हैं, MTNL नहीं बेच पा रहा है। वो क्यों नहीं बेच रहा है? क्योंकि दिल्ली में DDA ने अलॉट की हैं प्रॉपर्टीज, और DDA का रूल है कि अगर आप इसको सेल करते हो तो जो अनअर्न्ड इनकम मतलब जो आपने जितने में बेची माइनस जितने में आपको DDA ने दी थी, वो आपका प्रॉफिट हो गया एक तरह से। तो अनअर्न्ड इनकम का 50% DDA को देना पड़ेगा। तो इस वजह से MTNL बेच नहीं पा रहा है, बिकॉज आफ्टर गिविंग 50% टू DDA, फिर कैपिटल गेन टैक्स और एवरीथिंग, तो बचेगा क्या? 30% बचेगा। तो लॉट ऑफ मीटिंग्स हैव आल्सो हैपेंड विद DDA, या आप रिड्यूस कर दो, चलो 30% पे मान जाओ, ये वो, तो वो स्टिल चल रहा है वो पूरा। वो अब मानते हैं नहीं मानते वो डिपेंड करता है।
तो ये बहुत मतलब ऑलमोस्ट समझ लीजिए कैबिनेट लेवल पे ये डिस्कशन हो रहे हैं अभी कि इसमें क्या किया जाए इस टाइप के केस में। तो कोई आएगा रूल तब तक हम लोग अपना वी कैन ट्राई कि बेटर हम उन जमीनों को निकालें पहले जहाँ पे हमने प्राइवेट से खरीदा है, वो तो बहुत आराम से वी कैन सेल इट, और which have been given by development authorities, और the lands which have been acquired under Land Acquisition Act, उसमें हमें थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। या हम डीसी को, अगर उसमें लिखा हुआ है कि परमिशन से ही बेच सकते हैं, तो डीसी को अप्लाई कर दीजिए या जो भी अथॉरिटी है वहां पे कि वी वांट टू सेल द लैंड और आप परमिशन दे दीजिए। वो क्या होगा, वो या तो जनरली क्या होगा कि परमिशन देते हैं, ठीक है, नहीं देंगे तो वी कैन कीप दैट लैंड असाइड कि ठीक है इसको नहीं बेच सकते। हाँ पे तो कह रहे हैं कि अगर मतलब हम लोग अप्लाई करेंगे तो फिर वो जो अलॉटमेंट है वो कैंसिल करेंगे। नहीं, ऐसे इन दिस जबलपुर they have cancelled the allotment of a portion of telecom factory Jabalpur on the grounds that you are going to sell it. So now we have gone to court has given the stay. तो चलेंगी वो चीजें उस टाइप की। तो वो अपने दे आर इंटरप्रेटिंग लैंड एक्विजिशन एक्ट फ्रॉम देयर व्यू, वी आर इंटरप्रेटिंग फ्रॉम आवर व्यू। तो बैक तो नहीं ले सकते ऐसे किसी इतने आराम से, लेकिन ये है कि विदाउट देयर कोऑपरेशन वी कैन नॉट सेल आइदर, क्योंकि जब भी whenever we sell the bidder has to go to them for to get the land transfer। तो अच्छा, प्रॉब्लम क्या हो रही है, एक जगह तेलंगाना, वन केस इज देयर, TSIIC is there, Telangana State Industrial Infrastructure Corporation, they had given land to us and now we want to sell it, and it is written that you will have to take the permission of TSIIC. We applied for permission more than 1.5 years back, we applied, they are not giving the permission. Then our chief engineer met their CMD and he told कि सर आप रिफ्यूज कर दीजिए, नहीं देनी तो हमारा झंझट खत्म होगा, हम बंद करें केस अपना। तो he is telling कि no, we will not refuse also. He is telling that we have got verbal instruction from government that we will not allow selling the land. So many cases are there where they are neither refusing nor allowing. So but ultimately for monetization so much pressure is there, I cannot emphasize enough. Even we are giving report to CMD every week, every Monday we are giving the report that what is the position now. अब लैंड सेल के केस में आप सोच लीजिए कि इवन इफ वी हैव टू सेल आवर ओन प्रॉपर्टी इट टेक्स मैनी मंथ्स, एंड हियर वी आर गिविंग रिपोर्ट every week that this is now the position, this is the position. Sir, one more thing, whatever the lands we already sold also, the values, whatever we are mentioning, that values they are giving, no, asset values, is it a authorized one? Because, whatever rates we are getting very less value. In Bangalore site, we are supposed to get more than 100 crores. But I think we fetched only 75 crores, sir. I will come to that. How we, why do you think it should be 100 crores? Market value, it is a very prominent area and the market value is there, na, sir. I will come to that in one state. So this roughly, I will just show a slide. We have this much plot, 10,000 acres of property we are having. And these are the targets given by cabinet. We have to earn up to 2035, 11,700 crores. Our target for 22-23 was 400 crores and we could earn only 306 crores. Then 23-24 target was 600 crores. But they have added the last 22-23, we have achieved less by 94 crores they added in this year's target. So this year we have to earn 694 crores. Till now we have earned 327 crores. We think we will reach 694 because already some lands we have sold to government directly and we have already sent the letter to deposit the money. So target should be, we will be able to achieve the target this. किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जो इसके पेपर्स पूरे नहीं है, इनकम्प्लीट है, तो उसको हम 30 ईयर्स की लीज पे दे दें और उससे लमसम पैसा ले 150 करोड़ रुपए। लीज दे सकते हैं। हमारे इंदौर में एक है अवंतिका गैस जो है, वो गेल और 4-5 PSUs का वो है, उनके MD आए थे 90 बज के IIT खड़गपुर के थे। तो पेपर्स हमारे है नहीं, जगह बहुत जानदार है, कोई खरीदेगा कोई नहीं उसको। But for lease also we need the papers, that is। नहीं मतलब वो यदि मियाँ बीवी राजी हो जाए तो फिर क्या दिक्कत है, मतलब यदि वो ले ले लैंड, हमारी लैंड ले ले, वो दे दे आपको। We have offered this in Chennai, that training center is there, RG MMTC। तो इसके रूल्स रेगुलेशन that we have offered to IIT Madras, that offer has gone to them for 30 years lease।
तो उसमें लीज में क्या ईयरली रेंटल होता है, वन टाइम अपन मोटा पैसा ले लेते हैं? We have given both options to them, that if you want to pay yearly, this will be the rate to be enhanced by this much every year. Or if you want to pay one time, then this will be the rate. वन टाइम ले लेते हैं, अच्छा आएगा, 20 वाले पैसा आ जाएगा, भी और क्या। We are okay because what we do, we just बल्कि 30 calculate the net present value. 30 ईयर के लेने के बाद फिर वो सब हर कुछ करना अलाउड कर देंगे अपन उनको ना, दे कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग ऑन द प्लॉट। मतलब फिर क्या होगा, लीज के बाद फिर मतलब गवर्नमेंट की परमिशन हम अप्लाई करेंगे, वो अप्लाई करेगा, होगा क्या, व्हाट इज द रूल्स एंड प्रोसीजर? क्या उसको बिल्डिंग बनानी है वहाँ पे? No, he will have to apply. और हमारे Actually, paper will be required because suppose he wants to build something on that land, then government will ask for paper. Government means that local body. क्या होता क्या है कि आईडीए में या जो भी अथॉरिटी में 2-4-10 लाख रुपए घूस देनी पड़ेगी, वो तो हम दे नहीं सकते। वो करेगा मैनेजर, वो कर लेगा वो। So, how will they are also suppose मैं पूछ लेता हूँ, public sector. मैं बात कर लेता हूँ। अरे वो तो क्या, वो तो वकील को लगाएंगे कि देंगे 25 लाख की फीस। हमारे तो 15,000 की लिमिट लगा दी थी कि 15,000 ज्यादा नहीं देना। As far as BSNL is concerned, now BSNL has the power to give any land to government organization on lease for up to 30 years. ये तो सेंट्रल पीएसयू है। हाँ, सेंट्रल पीएसयू है वो तो। previously we were not having this power. Recently that our article of association that has been modified. And for renting also, we can give for 30 years to anyone. Up to 30 years we can give to government organization and 10 years to private entity. तो लेकिन जो crop का आप देखेंगे तो crop में still it is 10 years only. So that we have not modified intentionally. तो प्राइवेट में तो 3 साल हो गया। Private में there have been some experiences, bad experiences have been there. Where we have given to private and he is not vacating. अच्छा हो गया, हमारी पावर से सीएम की पावर चली गई। वो सर मिसयूज होता है कई बार, तो फिर ये इश्यूज आते हैं। So now this target we have to achieve 11,700 crores. This is the flow chart. What is the process of monetization? Number one is the identification of asset that has to be done by the BA. And I will advise that on intranet that complete policy is available, our monetization policy. And after that policy, we have issued one detailed operating instruction because policy is broad only. In detail, how land will be sold, that also we have issued. That is also available. In that every process, this details of every process is given. So identification of asset, if you will see, at least I have not seen in 26, 27 years in government, any form where it is written, you are giving some data and in the end it is written, I have not checked the above data and it may be wrong or it may be broadly correct. And then you are signing and sending it. But in this identification of asset, we have intentionally kept that provision. The BA head has to give the list of assets which is not usable in his opinion, which is surplus. And in the end, just to, we have added this so that otherwise BA heads, they will, for sending every case, they will think that I will check it, whether it is okay or not. We have clearly written that I have not checked all the documents and everything, whether we can sell it or not, or there may be some issues. And after that form, BA head has to send to circle. When it goes to circle, then the circle office has to see in detail that whether we should sell this land or not, whether property documents will be available or not. So all that process will be done at circle. And when circle will send to corporate office, that time it should be broadly okay, that information. Now the BA at BA level, main this thing work to be done is identification of asset and legal due diligence. Legal due diligence means arranging for all the property papers and appointing one advocate who will check whether you have the title ownership of that plot and whether you can sell that plot. Marketability is there or not for selling that plot. Non-encumbrance certificate देता है. It will नहीं, not give- encumbrance तो अलग हो गई sir. Encumbrance is just कि this property is unhindered possession of you. You have the. But whether property documents are complete or not, whether you are the owner or not. वो जब non-encumbrance देखता है तो प्रॉपर्टी के सारे डॉक्यूमेंट उसमें अटैच करता है. But whether it is sellable or not, not sellable, पता चला हमारे यहाँ हुडा का कुछ उसने दे दिया, वही. No, he will give sir कि okay, this plot was given to you by Huda, but as per so and so अच्छा, rule, बेच नहीं सकते. you cannot sell it. तो वो negative LDD भी देते हैं उसमें. अच्छा.
और इसमें हमें अच्छे वकील को लगा के, जैसे कई बार वकील क्या है कि 10-11 हजार में भी कर रहे हैं इसको, ऐसे वकील भी हैं जो 70-80 थाउजेंड में भी लेते हैं। जनरली जो वी हैव सीन की द रिपोर्ट्स वी गेट फ्रॉम आंध्र प्रदेश, दो इतने मोटे मोटे वो आती हैं लीगल ड्यू डिलिजेंस, और इतना डिटेल में वकील ने दिया होता है बिल्कुल एक एक चीज, और मतलब कोई उसने पूरा देख लिया होता है कि इनकी प्रॉपर्टी है कि नहीं है, कि एक उसमें खसरा नंबर कौन सा है, उसमें किसका नाम है, सब कुछ। कई बार 2 पन्ने की रिपोर्ट भी दे देते हैं वकील लोग कि हाँ आप ही वो हो, और बाद में दिक्कतें आती हैं उसमें जब बेचने जाओ। तो ये बहुत, फिर इसमें प्रॉपर सबसे बड़ी इशू आएगी, वी डोंट हैव द प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स फॉर मेनी प्रॉपर्टीज। कहाँ से आई प्रॉपर्टी, कुछ मतलब रिकॉर्ड ही नहीं है उस चीज का। तो इन दैट केस द ओनली ऑप्शन इज either you search for the records in office, or you get the certified copies or duplicate copies from the whatever development authority is there or government is there. My experience is searching in office is far easier than getting from the this thing. और उसमें थोड़ा सा इन गवर्नमेंट वी डोंट थ्रो अवे एनीथिंग, कहीं ना कहीं पड़ा होगा रिकॉर्ड, पुरानी अलमारी कहीं पड़ी होगी स्टोर में, उसको खुलवाएंगे निकलेगा। मैं यही का एग्जांपल दूं, एलटीटीसी का इन 2018 18-19 आई वाज जीएम एडमिन इन एलटीटीसी, और उस समय इशू आया कि इसके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं। देन माई सेल्फ एंड अनदर GMBS वाज देयर, वी वेंट एंड सर्च सम अलमिराज इन एजीएम बिल्डिंग, और आई थिंक एजीएम बिल्डिंग नहीं, कोई और वो थी पोस्ट। मतलब वहां जाके बिल्कुल खुद हम लोगों ने धूल से भरी हुई अलमारियां खोली, पूरे कपड़े वपड़े हम लोग के गंदे हो गए उसमें से निकाली। तो वो सर कुछ नहीं मिलेगा। उस वक्त एक्चुअली क्या था, ड्यूरिंग ड्यूटी टाइम वी वे गवर्नमेंट, सो गवर्नमेंट in most places there was no need for approval from the local body for making any building. उसमें ये था कि we only had to inform them that we are making this building, these are the drawings. तो उसकी वजह से उनकी अप्रूवल्स नहीं है, और सिविल को कोई वो रहता नहीं था कि मतलब हमें क्या, मतलब ऐसे ऐसे केस हम लोगों के पास हैं, यू वोंट बिलीव, कि जहाँ पे कलेक्टर ने अप्रूव किया कि ठीक है जमीन इनको अलॉट कर दी जाए, उसके बाद प्रोसेस हुआ नहीं, अलॉट हुई नहीं, कोई ट्रांसफर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, एक्सचेंज बन गया, 10 साल से चल रहा है, 1990 से या कब से। अब जब चेक कर रहे हैं तो पता चल रहा है वो तो ट्रांसफर ही नहीं हुई थी जमीन, अभी स्टेट गवर्नमेंट की जमीन है। देयर इज वन केस इन गुजरात वेयर ओडिशा आल्सो तोड़ दिया पूरा, नॉर्थ में ऐसे हुआ कि वहाँ पे वो गरीबों के लिए मकान बनाए थे, तो 2016 में अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया, वो मकान बना दिए। बहुत केसेस है सब जहाँ पे दूसरे के नाम जमीन है और हम लोगों का एक्सचेंज चल रहा है। गुजरात में एक केस है, आवर एक्सचेंज इज वर्किंग देयर आई थिंक सिंस 1980 और समथिंग, और दैट लैंड इज इन द नेम ऑफ वक्फ बोर्ड। और पता कैसे चला कि वहां से मेट्रो जानी थी, कुछ जमीन एक्वायर करनी थी, एंड मेट्रो पीपल दे सर्च इन द लैंड रिकॉर्ड्स एंड सेंड द कंपनसेशन चेक टू द वक्फ बोर्ड। और वो उनकी शराफत थी कि उन्होंने कहा कि इट इज नॉट आवर लैंड, तो हमें क्यों भेज दिया चेक। तो पता चला कि अभी तक उन्हीं के नाम है, वो ट्रांसफर ही नहीं हुई है, बीएसएनएल के नाम, डीओटी के नाम भी नहीं हुई, बीएसएनएल के नाम भी नहीं हुई। So that's why legal due diligence, it is the most difficult and most important step in the whole process. That's why I have made it red color, and that is to be done by the BA. CMD had taken a review meeting on 29th. In that also it was discussed. Then it is taking a lot of time. Then CMD told that he directed that our GM land building, he should also assist in this legal due diligence, and he. तो आप एस्केलेट कर दिया सर, आप, हाँ आप GM L&B को लिख दीजिए कि ये दिक्कत आ रही है इसमें, ये करना चाह रहे हैं, ये दिक्कत आ रही है, जो भी है, तो दे विल एस्केलेट टू, हम लोग तक करेंगे। क्योंकि ये इस स्टेप में कोई सर देयर इज नो इश्यू ऑफ मनी और एनीथिंग। बॉम्बे में कुछ केसेस में ऐसा हुआ है कि कुछ हमें NOC वगैरह चाहिए थे वो, एंड कंसल्टेंट वांटेड 5 लाख रुपीस, तो वो भी केस वहां से आया कि ऐसे ऐसे कोटेशन उन्होंने कॉल की और 5 लाख आया, वी हैड पुट अप टू CMD, गॉट इट अप्रूव कि ठीक है वो। और अगर देखा जाए तो हम लोगों की
Land, suppose it is 500 crore, 600 crore land, so 5 lakh is nothing for getting some NOC for that land. So, मतलब ये, and on 29th meeting, CMD has told that legal due diligence is to be done not for only the land which are to be sold. It should be for every land. और बात भी सही है, हमारी property है, we don't have the papers or anything. So we have made a complete procedure for how to maintain the records. I will come to that. And it is available in the detailed operating instruction, section 4, how you have to maintain in physical file in BA that land records. Then we do the initial valuation to decide indicative value. Then indicative value will be approved by the board. Suppose it is more than 10 crores, we will send the case to DOT. They will give the approval for monetization. If it is less than 10 crores, then we can straight away go to fixing of reserve price and appointment of transaction advisor, then fixing of reserve price. So for every land, 2 stages are there. First, we have to do indicative valuation through an approved valuer who will decide what is the approximate value of this land. Now here that question comes, what sir was asking. We will take that Magdi Road case. We have a land somewhere in very posh colony or a center of the city, it is there. Generally, we have the perception that this is 100 crores land or 200 crores land. वो perception कहाँ से आता है हमारे basically? Because we know कि वहाँ पे immediately I think कि वहाँ पे plot खरीदने जाओ तो इतने का मिल रहा है या इतने रुपए गज रेट चल रहा है वहाँ पे. And we apply the same criteria to our land also. कि हमारा तो जब 200 गज का प्लॉट जो है 1 करोड़ का मिल रहा है तो हमारा प्लॉट तो कितने करोड़ का मिलेगा, वो इतना बढ़िया प्लॉट है, इतना बड़ा है. But valuation is actually not like that. Number one, whenever that size increases, the rate per square meter will come down, property rate. जिस रेट पे सपोज 30,000 रुपीस पर स्क्वायर मीटर पे आपको एक 100 स्क्वायर मीटर का प्लॉट मिल रहा है, अगर आपका प्लॉट 2 एकड़ का है तो वो ड्रास्टिकली रिड्यूस होगा. इट कैन बी इवन 12,000 13,000 रुपीस पर स्क्वायर मीटर. फिर उसके बाद नंबर ऑफ बायर्स फॉर योर 4 एकड़ प्लॉट विल बी मच लेस देन द नंबर ऑफ बायर्स फॉर योर 100 100 square meter plot. So how we calculate that, what should be the value of our land? Like I think Magdi Road plot, it is 7,500 square meter, na, that what we have sold. So that will be roughly 1.5 acres. And we know that 100 square meter plot is selling for this much in the local market. Then we divide that plot into 100 square meter plots. We will provide road between it, and so that every plot will get access. And then that obviously for road, that will be no money, that will be useless area. Then how much cost of those plots is coming divided by the whole area, that will be the approximate cost of that. And finally, perception can be anything. हर आदमी जो है वो उसके लिए एक अलग रेट है उस जगह का. ये बहुत बेसिक है कि आप कितने में भी बेच दो, you will have someone telling that no, you have sold it cheap. So now ultimately we are selling through open auction, open online auction. And since this is a very sensitive matter, when this policy was being made, I searched on Google, I searched lot of cases that whether there has been any vigilance case regarding sale of land or sale of assets. Railways में जो वो leasing करते हैं, RLDA long time से leasing कर रही है, उसमें क्या क्या vigilance cases हुए हैं. मुझे कोई एक केस ऐसा नहीं मिला जिसमें ओपन ई ऑक्शन हुआ हो और बाद में कोई विजिलेंस केस हुआ हो. जितने केस हुए हैं वो उसके हुए हैं जो फिजिकल टेंडरिंग होती थी जिस टाइम, उस टाइम हुए हैं. 1-2 केस ऐसे थे जिसमें इन ई ऑक्शन इटसेल्फ दे डिड समथिंग रॉन्ग. जो उनका मतलब सॉफ्टवेयर था वो इतना रोबस्ट नहीं था कि उसमें मैनिपुलेट हो सकता था जो उसको मेंटेन कर रहे थे प्लेटफॉर्म को. बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सेल में कोई केस नहीं मिला. Even suppose there is an allegation that I have fixed the reserve price at a lower value than market rate, ultimately I am doing the open auction. जिसको कम लग रहा है आके डाल जाए उसमें, कोई वो नहीं है. फिर ultimately we have to realize that plot will sell only for the value only for its actual value. हम पेपर में उसको 100 करोड़ दिखा दें, 150 करोड़ दिखा दें, ultimately we are harming ourselves.
plot will sell for 75 crores if it is worth 75 crores for the public who is ready to buy it. बाद में हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा, हमने खुद ही फाइल पे 100 करोड़ लिख रखा है एंड नाउ वी हैव सोल्ड इट फॉर 75 करोड़. वो सेम चीज देवास में होने वाली है. एक प्लॉट है, उसकी वैल्यू जो है मतलब मार्केट रेट से 25% ज्यादा है, वो बिकेगा ही नहीं वो हर आई थिंक 3 attempts we have made for selling it बिकेगा ही नहीं वो. and every time they are telling that you have taken too much rate. बहुत इशू आते हैं सर. और कुछ जगह ऐसी हैं where our rate is correct as per market rate, but the bidder is telling that okay, your rate is okay, but in private I am getting the same rate and 50% I will pay by black money. तो वो एक फैक्टर आ जाता है. तो जब इंडिकेटिव वैल्यू है, my suggestion is कि when valuer gives his valuation, the BA heads are also part of the circle level standing committee who will recommend the valuation. They will have to recommend at 2 stages, one at indicative value and one at FMV stage, fair market value stage. Always try that your value should be realistic, what a person is ready to pay for that land. Don't inflate it, because if you inflate it, ultimately it will be sold at the rate which is realistic rate. So try to fix the realistic value. If it is very difficult to fix the realistic value, then if any error is there, do the error on the lower side. Because suppose you say this property is 12 crores and you sell it for 15 crores, everybody will appreciate you. But if you tell it is 18 crores and then sell for 15 crores, everybody will say that you have sold it cheap. Yeah. Generally, guidance value is lower compared to actual market rate. That happens in real estate. That in Andhra, that what was that capital near Amravati? That is, after change of government, the rates have dropped less than 50%. Sir, my question is that can we exercise this option for selling this land to local authorities also, just like development authorities? LDA, just like development authorities can purchase our land directly and they can sell it on their disposal of just like that. They are launching schemes for residential plots and flats also. Shall we go for that? To the same development authority which has given us, or to some any? Suppose state level. Suppose we are residing in Lucknow and there is a Lucknow Development Authority is there. So we can approach to them to just check out our lands, and they that can. We will have to see whether Lucknow Development Authority, it is a state government body or it's a district level body. No, whether state government is more than 51% state government is involved in LDA or not, because to any private person we cannot sell without auction. That is clear. Yeah. But number two, this LDA is not central government CPSU, nor statutory body, nor it is central government ministry. Yeah. So it will go for the approval of the cabinet. Okay. If we offer them suppose directly. Statutory body, not of the central government. The statutory we nahi hui, sir. Because exactly we will have to see what is its legal status. Yeah. Because I think it's much easier to sell our lands if they agreed for this proposal. So that case will go like recently we have offered one land at Trivandrum to Kerala State Pollution Control Board. So they are a body of the state government, and their board, we offered the rate, they agreed to the rate. Then we took the approval of the GOM, which in our case is equivalent to cabinet. And then we sent letter to them that, okay, you give the money that was for 44 crores.
Then while giving the money, somebody in their organization told that you will have to take state government permission for purchase and all. Now that file is with state government of Kerala. So that process is there, but it will have to go to the cabinet. That is sure. BSNL doesn't have power. It will go to a group of ministers. That time they will see whether LDA, whether it is government body or not. If it is government body, then they can allow. If it is not related to government or if you see the detailed operating instructions, in that one line is there, government organization, which are, those are the government organizations which are supported by the government, something like that language is there. Yeah. So whether LDA comes in that language or not, that you will have to see. Actually, this LDA is headed by some commissioner also, and there is a act is there. Development Authorities Act like this. So And every city. maybe it will come in that definition. Yeah. You will have to see what is written in the word. Okay. That financially supported by the government, like that one sentence is there in detailed operating instruction. Okay. That those will be deemed to be the government organizations. So if LDA is coming in that definition, then we can of course sell to them directly. So regarding fixing of indicative value, always be careful. If both indicative value and FMV, error on the lower side is better than error on the higher side, because ultimately giving some amount of, now in 7 land cases, we have fixed some fair market value. We have done the auction. We did auction twice. Nobody came. Then the matter went to board. We reduced the rate. We called the auction. Nobody came. So how can we justify what we initially fixed that value? We cannot justify. Suppose it is marketed, then lot of people will be there for purchase. Now the land parcels, till now we have 53, not 53, that in first list 14, second list 18, 32 land parcels, group of ministers has approved for monetization. That means now we can do auctions for them and sell them. Third list has gone with 21 lands. And for properties below 10 crores, BSNL board has approved the indicative value of 26 lands. We have done, I think, 3 auctions we have done for them. Some we have sold, for some there is no response. This is the sample of some properties, what we are maintaining. Like this, we are maintaining data for 15,000 properties. In 15,000, for 14,000 are still at LDD stage or they are useful. For remaining, all these columns we are taking. So like we see any, in Kurnool case, first we indicative value, all these indicative values have been fixed by the board, and transaction advisors have also been appointed. These transaction advisors are international property consultants, just like this property dealer. In private, we employ a property dealer. They are dealers for us. They will analyze the property, give complete report, what should be the valuation, everything. Then we either agree with their report or we are deciding FMV ourselves. Not only based, they also give a fair market value, but we see their value and the indicative value and our circle level committee recommendations. And then the board decides that what should be the fair market value. And then auction, so you can see that at serial number 5, we have done 3 auctions. No responses there. Serial number 7, also 3 auctions have been done. At serial number 8 and 9, that we have sold in first auction, Ujjain BA. And one at serial number 6 also we have sold in first auction. So these properties which we have sold, they were small properties. So small properties generally have a lot of people interested in that. Then another mode of earning from land and building is through renting. That is much easier than selling. And one of the best incomes means, suppose even telephone services we are providing, we are making customers, we have to do so much labor in that. In this case, you give some space on rent, you are just sitting doing nothing, and that fellow will give you money every month, and that money will keep on increasing.
So now MTNL, they are earning more from rent than what they are earning from phone revenue. Phone revenue. And here also, I think one sheet I have made somewhere. We have rented out 8.5% of our built-up area till now. And we are expecting to earn 320 crores this year. So you can imagine with 8% area, we are earning 320 crores. If we are able, we have identified 33% area for renting, which is spare, vacant. Suppose 25% we are able to rent out, then we can earn about 1,000 crores just from renting, which will keep on increasing every year. Now for management of assets, 15,000 lands are there. So naturally we have to, some database must be there. Initially that database was maintained in one ITPC Pune made a website, Civil MIS it is called. In that all the 15,000 lands were filled up, all lot of columns were there, everything. Then when ERP was implemented, that time this database was transferred to the REM module, real estate module of the ERP. And FICO module is for finance, in which all that valuation is there, book value is there for assets. That is related to finance. Yeah. Sir. जी जी. नहीं सर, बुक वैल्यू है कि द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इन योर बुक्स सिंपली. तो उसमें क्या है कि जो किसी कंपनी की असेट्स में दिखा वो इट इज शोइंग, it should be the value of that property. Now value of property, sometimes you feed at what rate you had purchased it. In many properties you will see it is 1 rupee in book value. Or suppose when you purchased it, you purchased for some amount, but you did valuation at that time and entered that value as the book value. Sir, वो सर जब बुक वैल्यू सर हमारे पास 15,000 लैंड्स हैं और 2016 में जो हमारा वो है AIS बोलते हैं ना, अकाउंटिंग कोड है, इन दैट प्रोविजन इज देयर कि कंपनी एक बार चेंज कर सकती है. वो विंडो दिया था उन्होंने कुछ कि इस पीरियड में आप चेंज कर सकते हो एक बार. सो दैट टाइम वैल्यूएशंस वर डन फॉर मेनी लैंड्स और वो बुक वैल्यू में डाले गए थे ताकि एक रियलिस्टिक वैल्यू निकल के आ सके. अदरवाइज बुक वैल्यू से आप पता नहीं कर सकते कि आपका जो एक्चुअल मार्केट वैल्यू क्या है आपकी प्रॉपर्टीज की. तो 2016 में करीब 4,000 लैंड्स का वैल्यूएशन हुआ आउट ऑफ 15,000 और दैट 4,000 लैंड्स की जो मार्केट प्राइस था दैट वाज एंटर्ड इन द FICO मॉड्यूल दैट इज इन आवर बुक्स. वो चेंज हो गया. इन 2017 another exercise was done in which 3,000 lands were valued, and we again wanted to change it in our books. At that time finance told that no, it was only one opportunity, now you cannot enter anything. So out of 15,000 properties, 4,000 properties market value was entered in 2016 and remaining is at purchase price or old price or whatever you may say, that is there. So now this REM module was being maintained as the civil MIS is now obsolete, but we are using it because lot of data is there which is not available in other places. So we are using it only at corporate office level. At BA level or anywhere it is not being used, civil MIS. REM module was the main land and building asset database. Now one problem came that REM module and FICO module were not connected. From REM module, if I am seeing some property, I cannot find out its book value unless I search that FICO module and try to trace that property. So provision was made to link REM and FICO. So that number is to be fed in REM module, FICO number. I think that process, a lot of almost 100% it has been done at many places. Now civil MIS, as I told, it is not being used now.
But still, whenever any information comes from PA or circle, we need that MIS code, because in corporate office we are maintaining our Excel files based on this MIS code. It is easiest to search, क्योंकि इतना फास्ट काम करना है आपको, हर बार आप ERP खोल के और REM से डाटा लेना बहुत मुश्किल है. तो we have created our own Excel file. Yes. तो वो जो REM और FICO का जो लिंकिंग हो रहा है, उसमें एक्चुअली जो लैंड का कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं है, उसको कैसे किया जाएगा? वो सर पता करना पड़ेगा, आपको सर्च करना पड़ेगा, या लोकल हमें वो देखना पड़ेगा कि सपोज हमारा खुद का फ्लैट है कहीं, उसके डॉक्यूमेंट्स आग लग गई, कुछ हो गया, खत्म हो गए, तो कोई ना कोई प्रोसेस होगा, वो वकील बता पाएगा कि व्हाट इज द प्रोसेस टू रिक्रिएट दैट डॉक्यूमेंट्स और टू गेट सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ दोज डॉक्यूमेंट्स. तो कुछ प्रोसेस तो होगा पूरा, लेकिन ये जरूर है कि ये जो प्रोसेस होता है, ये हमारा डेवलपमेंट अथॉरिटी में या रेवेन्यू ऑफिसेज में होता है. वहां पे कोई भी आपको एक पेपर निकलवाने का भी तरीका अलग ही होता है, वो आप सिंपली चिट्ठी लिख के नहीं निकलवा सकते. तो यू विल हैव टू हायर सम लॉयर हु कैन हेल्प इन दिस, कि जाके आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे करा दे वो. उसके लिए आपको जो भी रेट पे करना पड़े वो करके और निकलवाने पड़ेंगे, और कोई तरीका नहीं है. या अगर कई बार ऑफिसर्स अच्छे होते हैं कि आप उनके ऑफिसर से मिलें कि ये इश्यूज हैं और हमें लैंड के डॉक्यूमेंट चाहिए, वो इंस्ट्रक्ट कर देते हैं, नीचे मिल जाते हैं. लैंड के डिटेल्स आर इन REM. फिको में तो बहुत आपका मोस्टली केवल लैंड का नाम वो भी बड़ा वैसा दिया हुआ है, नॉट इन वेरी गुड वे, और बुक वैल्यू होगी, एरिया होगा, मिस्टेक्स भी होंगी उसमें कुछ. तो इसीलिए लिंकिंग का चल रहा है कि दोनों को रिकंसाइल करके, कि ठीक है अभी तक हमने मेंटेन नहीं किया, लेकिन अब तो मेंटेन कर लें. अब हमें आगे जाके लैंड, इतनी करोड़ों के एसेट्स हैं हमारे, जो भी 67,000 करोड़ के, इतनी बड़ी चीज है. तो एटलीस्ट नाउ वी शुड कंप्लीट ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग. ये इनिशिएटिव आई थिंक वी आर होल्डिंग VCs विद एवरी सर्कल. मोस्ट ऑफ द वर्क इज ऑलरेडी डन. Orders has also been issued कि non-territorial circles will hand over their land and building to territorial circles, because ये जो पूरा process है land management का, it is not possible for non-territorial circles. This we have also sent on WhatsApp. We have sent the presentation. तो उसमें क्या-क्या heads को करना है REM module में update करने के लिए, that is given. Now this record keeping of title ownership document, this is very important. It is given in section 4 of the detailed operating instructions, which is available on the internet. It was issued, I think, on 2021. You can search it on internet. For every land, there has to be one custodian of land record, some SD level person, who will keep a physical file, separate physical file for each property. और जो ये इसलिए किया गया था कि आप पुराने अलमारियों में खोजिए, स्टोर्स में खोजिए, जो उस लैंड के डॉक्यूमेंट मिलते जाए उसको उस फाइल में लगाते जाइए, तो आपका एक अल्टीमेटली बन ही जाएगा कुछ ना कुछ. और यहाँ का वो बात बीच में रह गई थी, मैं जो बता रहा था कि ALT में हम लोगों ने खोजे जब डॉक्यूमेंट, मैंने और एक दूसरे GM ने लग के, तो शाम तक पूरा हम लोग धूल वूल में सन गए थे, लेकिन वी फाउंड सम डॉक्यूमेंट्स, नॉट ऑल. और कुछ ऐसी चीजें मिली जो डॉक्यूमेंट से भी, जैसे that time we came to know कि ALT में जहाँ पे ये फैकल्टी क्लब है और स्टूडेंट सेंटर है, इसके बीच में स्विमिंग पूल बनना था, और उस स्विमिंग पूल का सैंक्शन मिला 1984 का, कि 1994 का, कि जिसमें पूरा की सैंक्शन रुपीज इतना फॉर ये, तो समझ नहीं आया बना क्यों नहीं ये, जब उसका सैंक्शन हो चुका था. कई बार बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, आप पुराने डॉक्यूमेंट खोजोगे तो लैंड का तो ठीक है, चलो वो एक बोनस होगा, but you will get many interesting other things about your BA also. तो ये आई विल एडवाइस कि आप डिटेल ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस में इसको पढ़ के, और अगर उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, देयर शुड बी नो प्रॉब्लम. और कोई भी आपको लैंड मैनेजमेंट में कोई दिक्कत आती है, यू एस्केलेट द इशू टू द GM लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ सर्कल ऑफिस. दे विल एस्केलेट टू अस इफ रिक्वायर्ड. Another issue is encroachment. Our lands are encroached at many. Yes, sir. जो policy we had made with the approval of minister. What happened actually? That policy was made by me only, mostly monetization policy.
So we made some about 40-50 pages policy. And when we were giving presentation to secretary, then he told ki, why you are getting all these things approved by us, ki how you will maintain the record, how you will do. So he told you make only a broad policy for sale, and details you, with the approval of CMD, you issue separately. So we made a policy now, which is the outright sale policy. We got it approved by minister, that it was approved. Minister, we gave a presentation to minister. I was also there. Mr. Ravi Shankar Prasad was there, and CMD and Director HR, everybody was there, Secretary DOT. We gave the presentation to Ravi Shankar Prasad ji. And after seeing the presentation, he immediately told कि file कहाँ है, लाओ approve करूँ. Then CMD told, sir, file तो आपके office संचार. Actually, we were giving presentation in Electronics Niketan. He was in charge of IT ministry also. So we told कि file तो sir संचार भवन में है. Then he told, okay, मैं मंगा के कर दूंगा वहाँ से. Then he approved that file, and after some time he was removed. So we are lucky that just before going, at least we got our policy approved. Otherwise, you don't know how much time it would have taken after this. So that policy was approved by the minister, and in that policy section 8, it is written that this is a broad policy. Detailed operating instructions shall be issued by the CMD BSNL. Based on that clause, we have issued detailed operating instructions. On this policy was issued on 28th June, and on 20th July, we have issued the detailed operating instruction in which all these details are given. So that is just like, I will say, Bible for this monetization, detailed operating. Please go through, everything is given in that. And suppose you think that something is wrong or it should not, it should be like this, you can also suggest, you can directly suggest to me, send email or GM Land and Building, we will get it amended. Amendment power of this thing is with CMD only. So we can change it also. Now, encroachment is one very big issue in BSNL. For that also complete process is there. Every plot has to be inspected at least once in every 6 months. That means twice every year it has to be inspected. To be done by custodian of land records, and one certificate is also there. This I will advise, please get it done. It will be in your interest. How I will tell after some time as BA head, because what can happen if encroachment is found later and you have not flagged it, that encroachment. In that provision is there, suppose CLR goes on any plot and there is some encroachment, he should immediately put it in black and white, inform the BA head. BA head should inform the circle, so it comes in writing that encroachment is there. Custodian of land records. प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी सर कि जैसे लैंड है, अब उसका कोई जो हम कहते हैं माई बाप ही नहीं था, जैसे अब ALT है, अब इसका डॉक्यूमेंट कौन रखेगा? यू विल आस्क DGM एडमिन कि साहब ये पता नहीं, उसको SD को पता होगा, SD से पूछेंगे, वो किसी को पता होगा, वो होगा ही नहीं. तो we have in this policy we have told that for every land there should be one CLR of the level of SG. So any SD, suppose SD Telecom is also there, you can make him CLR. This will be additional work for him. And it is not much work. What he has to do, he has to maintain one physical file for property documents and go and visit that land, visit each land every 6 months. तो वो तो एक बार जैसे आप कहीं पे गए तो सारे लैंड का चक्कर मार के आ जाइए, पता चल जाएगा कि पोजीशन ठीक है कि नहीं उसकी. Now this is one case of encroachment in Gopalpur Telecom Factory. We have about 40 acres of land there, and this red portion you are seeing, it is completely encroached. And encroached, not like Jhopdi or anything. Engineering college is there, medical college is running in there, multi-storied, that type of encroachment. और किस लेवल का encroachment हुआ है कि लोकल जहाँ पे प्रॉपर्टी पेपर्स होते हैं रेवेन्यू ऑफिस में, जब वहां से पता किया कि ये कैसे बन गया, तो पता चला वो कागज जल गए, आग लग गई थी, कागज जल गए. And all people, they are like that mafia type, nobody is able to fight with them. So for whatever reason, that encroachment is there. Now, this Gopalpur Telecom Factory was taken in this thing, monetization. This case was sent to Deepam also for monetization. When the consultant came, he went to site, he told me that there is so much encroachment. So now all that Bawal started, how encroachment is there, everything.
Then I think this case is now in vigilance. It has gone to vigilance also. Court case also we have filed against these encroachers. And now this complete red area is encroachment. So then we went to Google Earth. And on Google Earth, you can see historical imagery, satellite images of back. So you can see in 2008, there is no encroachment. I will show here. This yellow is the complete area, and this is our telecom factory. This is completely vacant. Then in 2010, somebody has started encroaching this area. In 2014, this encroachment increased here. Then again, position in 2018, 2020, encroachment position. So at least we came to know. ये सर गूगल अर्थ है, जैसे नॉट गूगल मैप्स, गूगल अर्थ है, उसमें आप व्यू में जाएंगे तो एक हिस्टोरिकल इमेजरी आता था, उसमें आप किसी भी प्लॉट के पीछे के देख सकते हो कि जब भी सैटेलाइट उस प्लॉट के ऊपर से गया होगा उसकी इमेज। ये फैसिलिटी गूगल ने आई थिंक 6 महीने पहले हटा दी है वहां से। उसको आप गूगल पे सर्च करेंगे ना, हिस्टोरिकल इमेजरी गूगल अर्थ, तो आपको बहुत वो मिल जाएंगे लोगों के कि क्यों हटा दिया इसको और इससे तो इतना आराम था ये वो। तो गूगल ने जवाब दिया है कि हम अभी कुछ कर रहे हैं, अपना रिकंसाइल कर रहे हैं, हम करेंगे इसको शॉर्टली, वी विल रीइंट्रोड्यूस ये वो। अब क्या उसका व्यू है, अब या तो हो सकता है कि उसका वो हो कि पेड बेसिस पे कर दे इसको, या जो भी उनकी पॉलिसी होगी। पर ये आप मतलब अब जो 2000 में हुआ, इन 2000 whoever the GM was there, he cannot say कि मुझे नहीं पता कब हुआ है, मैं तो जानता भी नहीं, क्योंकि ये सब उसमें है ब्लैक एंड व्हाइट में। सर ये बड़ा किस्सा है जो अनऑफिशियली सुनते हैं, मतलब इट इज अ केस ऑफ करप्शन व्हाट वी हैव हर्ड। हमारे वहां भी सर पता नहीं सर, नो आइडिया। जो ये टेलीकॉम फैक्ट्री का सर, नहीं गोपालपुर, गोपाल वेस्ट बंगाल। इसमें बाउंड्री नहीं बनी थी क्या? बाउंड्री वहां तो सर ये हालत हो गई कि अभी रिसेंटली लास्ट ईयर डिसाइड हुआ कि ये जो अपना एरिया है हम लोग इसमें फेंसिंग करें, ताकि कम से कम जो हमारा है वो तो बचे, बाकी तो हम कोर्ट में लड़ ही रहे हैं। तो वो फेंसिंग करने के टाइम वहां पे पूरे गुंडे वगैरह सब आ गए कि कैसे कर लोगे फेंसिंग, ये मतलब इतना कि आपकी अपनी प्रॉपर्टी एंड यू कैन नॉट फेंस इट। तो फिर पुलिस बुला के किसी तरह करवाई वो वहां पे चीफ ने। यहाँ जौनपुर में भी हम लोगों का कुछ 5,500 था स्क्वायर मीटर लैंड। हाँ वो एनक्रोच्ड है। फिजिकली वहां पे वो 2400 स्क्वायर मीटर निकल रहा है, बीच में तो रोड भी बनी हुई है, मतलब हमारे प्लॉट के बीच से रोड भी है, जितने भी एनक्रोचमेंट घर बने केसेस हुए हैं हैं। सर सबको एस्केलेट कर दीजिए, भेज यहाँ पे दिया था एनक्रोचमेंट सर्किल, है, सर्किल को तो भेज दिया था, सबको इन्फॉर्म कर दीजिए, कारपोरेट ऑफिस भी लिख दीजिए चिट्ठी, सर्किल को भी लिख दीजिए, अपने तक मत रखिए कभी भी एनक्रोचमेंट। अच्छा पावर इतनी है आपकी एनक्रोचमेंट हटाने के लिए, ये मुझे भी सही बताऊं नहीं पता था। वी डिड वन ट्रेनिंग इन दिस डिफेंस एस्टेट अबाउट दिस लैंड मैनेजमेंट, वहां पे उन्होंने बताया कि कितनी पावर है, क्योंकि पहले व्हेन वी वर इन गवर्नमेंट तब तो लगता था कि ठीक है कुछ पावर है, अब पीएसयू में लगता है कि क्या हम हैं, तो उन्होंने बताया कि नहीं पीएसयू की भी पावर है। तो एक एक्ट है पार्लियामेंट की, पब्लिक प्रीमाइसेस एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स एक्ट 1971, ये गूगल पे मिल जाएगी। इसमें डेफिनेशंस में एस्टेट, हर प्रॉपर्टी का एक एस्टेट ऑफिसर होता है, एस्टेट ऑफिसर की डेफिनेशन दी है, मींस एन ऑफिसर अपॉइंटेड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 3। इसी के सेक्शन 3 में दिया हुआ है कि कैसे अपॉइंट होगा, गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी कि ही इज द एस्टेट ऑफिसर फॉर दिस लैंड। हमारे केस में क्या है, हमारे केस में भी नोटिफाई हुआ है, आप सबको व्हाट्सएप कर दिया है उन्होंने ग्रुप पे उस, हाँ तो वो उसमें 300-400 नाम है। फॉर एग्जांपल आई थिंक जैसे अभी मैं देख रहा था उज्जैन बीए में डी एडमिन लिखा हुआ है कि डी एडमिन विल बी द एस्टेट ऑफिसर, डेजिग्नेशन से है। कहीं पे डीजीएम एडमिन है, कहीं पे डीटी भी है, तो अलग अलग है, तो वो वही माना जाएगा। अगर डीजीएम एडमिन है और सपोज वहां पे डीजीएम वो सपोज डी एडमिन है और जो डी वहां पे पोस्टेड है वो डी लैंड एंड बिल्डिंग है या कुछ इस टाइप का है, वो इशू नहीं कर सकता नोटिस।
ऐसे भी केस आए हैं जहां पे वो पोस्ट ही नहीं जो उसमें लिखी हुई है, only that designation, sir. उसका you will have to issue a letter that this person is posted as this. उसका स्टैम्प बनवाइए, फिर ब्लू कलर का वो डी सो एंड सो, और फिर उससे नोटिस इशू करवाइए खाली कराने के लिए। उसमें लिखे वो एस्टेट डी एडमिन एंड एस्टेट ऑफिसर। अच्छा, पब्लिक प्रीमाइसेस 2E में डेफिनेशन दी हुई है, उसमें नंबर 1 पे तो गवर्नमेंट की जो भी है सब वो दिया हुआ है। नंबर 2 पे दिया हुआ है एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस क्लॉज के हिसाब से हमारी हर प्रीमाइसेस दैट इज पब्लिक प्रीमाइसेस, और ये एक्ट लागू होती है उसके ऊपर। अब इसमें एस्टेट ऑफिसर की क्या पावर है? अगर हम गए किसी प्लॉट पे और हमने देखा कि एक झुग्गी बन गई है या झुग्गी वालों ने घेर लिया है, दैट एस्टेट ऑफिसर कैन इमीडिएटली इशू नोटिस टू दोज encroachers to remove that, to show cause why it should not be removed, और उसका प्रोसेस पूरा दिया हुआ है। he will issue the notice, send by post, or he will also paste notice on the this thing prominent places on their door or boundary wall, gate, wherever they can see. He will post the notice, and he will give them notice to show cause why it should not be they should not be removed, and he can also ask them to appear before him on the date specified in the notice कि आप आइए और वो करिए। वो सर पुलिस को लिखेगा कि वो दीजिए। आप बिलीव नहीं करेंगे, जो अभी पालपुर का मैं दिखा रहा था, तो इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, वहां पे एस्टेट ऑफिसर ने नोटिस इशू किया हियरिंग का, और उनको आना पड़ा, वो अपने वकील वगैरह लेके आए सारे एस्टेट ऑफिसर के पास। तो इसकी पावर इतनी ज्यादा है एस्टेट ऑफिसर की इस क्लॉज में। नंबर 5 दिया हुआ है कि अगर एस्टेट ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है उनके एक्सप्लेनेशन से, तो वो एविक्शन का नोटिस इशू कर सकता है। उस केस में पुलिस को भी वो कहेगा कि इस तारीख को एविक्शन कराना है, आप पुलिस फोर्स भेजिए, पुलिस को आना पड़ेगा, पुलिस मना नहीं कर सकती। लोकल लेवल पे हो सकता है पुलिस घुमाने, मान लीजिए वो भी मिले हुए हैं कुछ हैं, तो वो सीनियर पुलिस ऑफिसर से मिलना पड़ेगा, वो भेजेंगे उसको। पब्लिक प्रीमाइसेस को खाली कराने के लिए मना नहीं कर सकते कि नहीं हम नहीं आ रहे हैं, या पावर इसमें क्या दी हुई है सेक्शन 7 में, पावर ऑफ एस्टेट ऑफिसर, an estate officer shall, for the purpose of holding any inquiry order under this act, has the same power as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure 19। अगर उसने नोटिस इशू कर दिया और एक्सप्रेशन कॉल कर लिया, तो वो कोर्ट की पावर है उसके पास में। वो आदमी नहीं कह सकता कि तुम कौन होते हो बुलाने वाले, मैं नहीं आ रहा। वो उसको पूरी कोर्ट की है, वो एविक्शन नोटिस इशू कर देगा, उसके बाद पुलिस आके तोड़ेगी, वो कुछ नहीं कर सकता आदमी। अब सपोज एस्टेट ऑफिसर ने ऑर्डर इशू कर दिया कि एविक्शन इसका तोड़ा जाए, अब जो एनक्रोचर है वो कहाँ जा सकता है? ये बहुत ही फ्यू एक्ट्स में मिलेगा आपको। इसमें अपील का प्रोविजन दिया हुआ है, अपील शैल लाई ओनली विद द डिस्ट्रिक्ट जज। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं लिखा है इसमें एक्ट में, डिस्ट्रिक्ट जज मीन्स कि जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो पर्सनली उसको अपील कर सकता है। मतलब वो एज अ कोर्ट डिसाइड नहीं करेगा, वो जैसे हमारा आरटीआई एक्ट में होता है ना एपीलिएट अथॉरिटी, उसी तरह डिस्ट्रिक्ट जज अपनी कैपेसिटी में डिसाइड करेगा कि हाँ ये सही है या गलत है। वो अपील को रिजेक्ट कर देगा या वो कर देगा कि नहीं आप नहीं हटा सकते। सेक्शन 10 में लिखा हुआ है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज ने डिसाइड कर दिया एपीलेट अथॉरिटी ने, that cannot be called in question in any original suit, application or execution proceedings, and no injunction shall be granted by any court or other authority in respect of any action। तो theoretically even हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता। थ्योरेटिकली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर कोई चला जाता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, वो एडमिट भी हो जाते हैं क्योंकि रिट जुरिसडिक्शन है, वो आदमी चला जाएगा, कुछ वो की गलत हटाया और मेरा फंडामेंटल राइट्स वो है वायलेट हो गया, तो दे वो भी कर लेते हैं। लेकिन उस टाइम डिपार्टमेंट कैन गिव दिस थिंग कि सेक्शन 10 में सर ये गलत आया है आपके पास में, ही इज नॉट अलाउड टू कम। तो इनफ पावर्स आर देयर, और वो पावर एक्सरसाइज कैसे हुई है हमारे डिपार्टमेंट में रिसेंटली, उसके एग्जांपल्स हैं। इंदिरापुरम गाजियाबाद में एनक्रोचमेंट हटाया है रिसेंटली, एक पूरे प्लॉट को पूरा भरा हुआ, ऑलमोस्ट झुग्गी झोपड़ी से भरा हुआ, बाउंड्री वॉल बनी हुई और उसके अंदर पूरी झुग्गियां बसी हुई, उसको इन्होंने डीएम से मिले गाजियाबाद में, यूपी वेस्ट के जो है,
उससे मिलके फिर ये नोटिस वगैरह जो लगाया गेट पे, इसके अंदर सब झुग्गियां दिख रही हैं साइड से बनी हुई, पुलिस वालों को भी बुलाया हुआ है। ये पूरा पुलिस एक्शन में जब तोड़ी गई झुग्गियां सारी, ये 2 बार हुआ है, पहले हटा के भगा दिया गया, फिर उसके बाद फिर आ गए ये लोग, फिर हटाया गया। और डीएम ने कहा कि आप लोग अपनी बाउंड्री वॉल वगैरह जो भी है रिपेयर करिए, फिर वो तुरंत सैंक्शन करा के वो सब रिपेयर कर दी गई। रेलवे का सर एक थोड़ा सा है कि उनका एक्चुअली बहुत ज्यादा एंक्रोचमेंट होता है और वो हाईलाइट हो जाता है प्रेस में तुरंत। उसमें भी कुछ इश्यूज हैं, जैसे अब आप देखें, मेरे ख्याल से 2 या 3 बार ये हो चुका कि दिसंबर एंड में रेलवे ने जो है हटा दिए एंक्रोचमेंट यहाँ रेलवे स्टेशन के पास, और अगले दिन पेपर में छप गया कि कड़कड़ाती सर्दी में और बेघर कर दिया और इस टाइप का वो। तो जबकि वो इसके हिसाब से, इफ यू सी दिस एक्ट, आई थिंक इन सेक्शन 7 इट इज गिवन कि नो एविक्शन शैल बी डन आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। तो रात के समय आप नहीं वो कर सकते कि पता लगा आप रात में पहुंच गए तोड़ने के लिए वो सब। तो इट इज नाउ कम्प्लीटली वैकेंट। ये संजय नगर गाजियाबाद, दैट इज जस्ट नियर बाई, ये आपका अगले चौराहे पे जो है ये वाइट बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, दैट इज वसुंधरा हॉस्पिटल। और इसके बगल में ये पूरी झुग्गी बना रखी है हमारे प्लॉट में। और इसी प्लॉट को, नॉट वसुंधरा हॉस्पिटल, सम यशोदा हॉस्पिटल, और वहाँ पार्किंग भी पार्किंग की तरह यूज करते थे यशोदा हॉस्पिटल वाले। फिर ये मजदूरों की झुग्गियां बन गई। ये हटने के बाद है सेम प्रोसेस से, जो एस्टेट अफसर है उसने नोटिस दिया, पुलिस yes, ये सर 7 करोड़ के आसपास है, आई थिंक 7-8 करोड़। मेरे को आया नहीं है केस एक्चुअली नॉर्थ का, और वो दूसरे जीएम देखते हैं। सर अभी वापस हो गया हैं? अभी वापस एनक्रोच हो गया है। वापस इनक्रोच हो गया? हाँ सर। वो तो फिर अब उस केस में तो सीधे अपनी गलती है अगर देखा जाए तो। एक जो सबसे शायद ही किसी ने देखा होगा आज तक का केस ऐसा, अगरतला में मेलार मठ है। एनीबडी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट हु नोज दिस? आपको इसका आइडिया है कुछ? अच्छा, यहाँ का एनक्रोचमेंट, व्हाट हैपेंड एक्चुअली कि वी रिसीव्ड वन वीआईपी केस, वन एमपी इज देयर, मिस प्रतिमा भौमिक फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। उन्होंने वीआईपी केस हम लोगों के मिनिस्टर को भेजा कि आपका यहाँ पे जमीन एनक्रोच हो रखी है, कुछ नहीं हो रहा। अब वो एक बार आया, वो शुरू हो गया यहाँ पे, फिर पता किया क्या है क्या नहीं है। तो आई हैव रिटन 1970, बट आई थिंक इट इज फ्रॉम 1960 इट वाज एनक्रोच्ड। और कैसे एनक्रोचमेंट था कि पीएनटी के क्वार्टर्स बने हुए थे, ये लाइन से बने हुए थे पीएनटी के क्वार्टर, विच वे अलॉटेड टू some departmental people by PNT around 1970। उसके बाद वो रिटायर हो गए, उसमें से एक की डेथ हो गई, रिटायर हो गए, उनके बच्चे और रिलेटिव सब रहते रहे। उन्होंने गवर्नमेंट मकान पे पूरे मॉडिफिकेशन करके, एक ने तो डबल स्टोरी भी बना दिया उसके ऊपर अपना। और वो अभी तक, मतलब 1970 एक उसकी डेथ हुई थी, शायद 1982 में डेथ हुई थी, तब से लेके और अभी तक ये जो है 2022 तक ये एनक्रोचमेंट था। और इसमें उन्होंने फिर जो फैमिली थी उसने कैसे किया, वहां रेवेन्यू उसके पास जाके, हमारी जो प्रॉपर्टी थी वो एक खसरा और वो था पीएनटी के नाम थी, वो उसको 4 खसरे में डिवाइड हो गई वो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में। और वो 3 जो वो खसरे हैं वो उनके नाम पे चढ़ गए, ये रेवेन्यू रिकॉर्ड में चेंज हो गया सारा। उसके बावजूद इनको, अच्छा उसके बाद इन्होंने क्या किया, ताकि डिपार्टमेंट कोई एक्शन ना ले पाए, डिपार्टमेंट ने भी खूब सारे नोटिस इशू करते रहे टाइम टू टाइम। लेकिन वो आप फाइल देखोगे तो इट इज जस्ट लाइक खाना पूर्ति टाइप ही कर रहे हैं कि 2 साल बाद फिर एक एजीएम बिल्डिंग ने एक नोटिस दे दिया कि खाली करो, फिर 2 साल बाद फिर एक नोटिस दे दिया, इस टाइप का। तो इन्होंने कुछ कोर्ट में भी केस डाल दिया, लोअर कोर्ट में। उसमें कुछ अपना आलतू फालतू की चीजें कि मेरा जीपीएफ का इतना बचा हुआ था वो अभी तक नहीं दिया, ये वो करके। और कहीं छोटी सी लाइन डाल दी कि ये लोग क्वार्टर भी खाली कराना चाहते हैं मुझसे, ये वो। और उससे फिर स्टे लेते रहे जज से। तो पढ़ के तो ऐसा लग रहा है कोई जीपीएफ का इशू है, लेकिन बीच में 2-3 लाइनें पड़ी हुई हैं क्वार्टर के बारे में भी। और उसी बेसिस पे कि नहीं वो तो कोर्ट का स्टे है, कोर्ट का स्टे है, ऐसे वो चलता रहा मामला। तो जब ये कारपोरेट ऑफिस मामला आया तो फिर एग्रेसिव होके काफी जब लेटर भी वहां लिखे गए, तो जो वहां बीए हेड थे, आई थिंक मिस्टर अग्रवाल, एम के गुप्ता थे,
हाँ, अग्रवाल, आई थिंक मुकेश कुमार अग्रवाल, गुप्ता है वो, अच्छा। तो उन्होंने फिर काफी इंटरेस्ट लिया और फिर कोर्ट में भी बढ़िया वकील लगा के हाई कोर्ट से उसको वो कराया, पहले तो केस खत्म कराया, स्टे वेकेट कराया, फिर पूरी पुलिस वुलिस बुला के, और ये इन्होंने 6 सितंबर को वो किया। ये उसमें भी किसी किसी चैनल पे भी आया था कि पूरा हट, मतलब इतना ओल्ड उसको हटाना बहुत ही मतलब बड़ा अचीवमेंट था ये वाला। वो लोग भी जिस रोज एविक्ट होने की डेट थी उसके एक दिन पहले शायद हट गए वहां से, उनको लगा कि बहुत ज्यादा ही कुछ हो गया ये वो। नहीं, वो तो हमारी बन गई प्रॉपर्टी पूरा वो तो भी ऐसा। अब पोस्टल के साथ लड़ाई होगी, पोस्टल कहेगा ये तो पीएनटी की है, हमारी है, हो गए हमारी है। हाँ हाँ। तो 4 क्वार्टर, 2-4 क्वार्टर, और वहां गया मैं स्टेट ऑफिसर भोपाल से, तो एसडीओ ने बोला कि बहुत कैसे ज्यादा ओवर कराओ, टाइम हो गया ना। हो गया फिर। बस आई विल जस्ट एक एक्विजिशन ऑफ लैंड का आप लोग को ध्यान रखिएगा। लॉट ऑफ केसेस आर कमिंग जहां पे वी हैव एन एक्सचेंज और some metro is going or road is to be widened. In that case, you will get letters from local bodies or PWD or metro that we want so and so area of your land. तो उसको भी तुरंत इन्फॉर्म कर दीजिए आप जीएम एलएनबी को, ही विल इन्फॉर्म टू द कॉर्पोरेट ऑफिस। अब जो मैंने दिखाया था आपको जीएफआर का 309, नो लैंड कैन बी एलिनेटेड विदाउट द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट। तो इवन अगर सपोज आपकी 2 मीटर की पट्टी भी रोड वाइडनिंग हो रही है और वो कहते हैं कि बाउंड्री वॉल तोड़ के हम 2 मीटर ले लेंगे, आपकी बाउंड्री वॉल बना देंगे, तो भी वो नहीं ले सकता कोई विदाउट एनी कंपनसेशन। कंपनसेशन के लिए लैंड एक्विजिशन एक्ट पहले 1894 हुआ करती थी, अब जो है 2013 में लैंड एक्विजिशन एक्ट की जगह दूसरी एक्ट आ गई है। उसको जनरल टर्म में तो बोलते हैं लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013, लेकिन जो प्रॉपर नाम है उसका द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। तो इसमें क्लियर दिया हुआ है कि कोई भी जमीन अगर लेनी है गवर्नमेंट को, किसी भी, नॉट इवन गवर्नमेंट, एनी लोकल बॉडी और पीडब्ल्यूडी और एनीवन, तो उसके लिए कंपनसेशन मिलेगा। कंपनसेशन के लिए दिया हुआ कैसे मिलेगा, जो कलेक्टर है ही विल डिसाइड द मार्केट वैल्यू ऑफ दैट लैंड। मार्केट वैल्यू के लिए 3 तरीके हैं, या तो सर्कल वैल्यू लेगा, या वो आसपास के एरियाज की व्हाट इज द वैल्यू वो लेगा, और या कोई कॉन्सेंट से अगर डिसाइड हुआ है तो वो वैल्यू लेके विच एवर इज हायर, दैट विल बी द मार्केट वैल्यू ऑफ दैट लैंड। उस मार्केट वैल्यू को इस एक्ट के अनेक्शर शेड्यूल 1 में जो फैक्टर दिए हुए हैं, डिपेंडिंग ऑन वेदर योर लैंड इज इनसाइड सिटी और अवे फ्रॉम सिटी और विलेज एरिया, उसके हिसाब से फैक्टर्स दिए हुए हैं, उस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाएगा मार्केट वैल्यू को। तो आई थिंक इन सिटी एरिया इट इज 2, तो योर वैल्यू बिकम्स डबल मार्केट वैल्यू। नाउ he will give this market value as compensation to you. Along with that, he will give solatium. Solatium amount, it will be equal to 100% of the compensation amount. So basically, you will get 4 times the market value of that property. तो ये जैसे ही आपके पास में कोई लेटर आता है, सपोज यू गेट अ लेटर फ्रॉम पीडब्ल्यूडी दैट वी वांट सो एंड सो एरिया फ्रॉम योर लैंड फॉर वाइडनिंग द रोड, यू इमीडिएटली इन्फॉर्म जीएमएलएनबी, वो हम लोगों को इन्फॉर्म कर देगा। नंबर 2, आप इमीडिएटली उसका रिप्लाई करिए कि आप किस एक्ट में इसको ले रहे हो, किस रूल में ले रहे हो, किस एक्ट में ले रहे हो, वो चीज बताइए। अपना कंसर्न चालू नहीं कर सकते सर, करते हैं, लेकिन इंदौर में 2-3 केस फिर कोर्ट में जाएंगे अल्टीमेटली। अगर जैसे सपोज दादागिरी हो गई, then we will have to go to court. नहीं, दादागिरी के बाद भी कंपनसेशन ले सकते हैं ना। दादागिरी करके, दादागिरी के बाद ले लिया उन्होंने, फिर कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं ना हम तो। सर बाद में क्लेम करना बहुत मुश्किल है, वो देंगे, एक बार उनका काम हो गया तो कौन वो क्यों केयर करेंगे। अहमदाबाद में बख्तरपुर कॉलोनी का बहुत बड़ा एरिया उन्होंने ले लिया था। हाँ हाँ, और बहुत सारे कोशिश कर लिया, सबने कुछ नहीं कर पाया। उसने लैंड लेके रात में ही तोड़ ताड़ के उसने गिट्टी डाल दी, रोड बना दी। नहीं सर सर, तो बात यह है कि 2000 उस केस में क्या करना चाहिए सर, जैसे इतना फास्ट तो हो नहीं सकता कि जैसे रात में भी करेगा वो,
तो एटलीस्ट कुछ टाइम तो महीना भर तो निकलेगा ही आराम से जब बाद Sir, में we are running a little short of time, sir. हाँ, तो मतलब इस पे आप इंसिस्ट करिए, उसको दीजिए मत लें। और एक मैं एग्जांपल वो बता दूं कि इन केस ऑफ मेट्रो देयर इज वन ऑर्डर फ्रॉम द कैबिनेट कि मेट्रो के काम के लिए आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा और यू विल बी गिवन ओनली सर्कल रेट। उस केस में भी चेन्नई ने एक मेट्रो का काम आया, उसमें ये लोग अड़ गए कि ये कंपनसेशन वो कंपनसेशन, और इतना डिले करने लगे कि अल्टीमेटली मेट्रो ने बोला कि कितने पैसे लेने हैं, उन्होंने उससे इससे भी ज्यादा पैसे दे दिए बीएसएनएल को कि हमें परमिशन दो, हमें काम करना है, हमारा काम रुका है। तो उनके ऊपर बहुत प्रेशर रहता है। तो इन बीएसएनएल इंटरेस्ट यू शुड एटलीस्ट एश्योर कि वॉट एवर इज द प्रॉपर कंपनसेशन दैट वी गेट। थैंक यू। Thank you, sir. Now, as a token of love, respect, and the appreciation on the behalf of LTTC, I would like to call upon our beloved PGM, Shri P.N. Dhoye sir, to felicitate Shri V.K. Gupta sir. As we are running a little short of time, I would like to request you all to join us at the tea lounge, and the specified time would be 10 minutes. I am expecting.
कितने इसमें बीए हेड्स हैं? 11 IFAs. Now, on behalf of the House, now I would like to welcome Shri Adhi Singhal, sir. Though he is an integral part of the LTTC, earlier he was there, but now he's been posted as the PGM purse at the BSN CEO. So let's have a use round of applause to welcome Shri Adhi Singhal, sir. Thank you, thank you, thank you, And sir, without much formality, the dice is all yours, sir. thank you, thank you. Good afternoon, all of you. How good I'm, I'm audible properly, or there is some problem? Hello? It is okay, huh? It is okay. Very nice. बहुत पास लग रहा है इसमें को आ रही है. Hello. ठीक है, okay. So good to have you all here, and I am taking a session in this hall after ages. I had taken a lot of sessions here, but for many, many years, I have not taken any session over here. And I had been given this charge of PGM purse almost 1.5 months back. But I started working for, say, 1 month last. 1 month before that, SN Gupta was here, and he was, taking care of the requirements. So all of you are handling some very, very important portfolio. Being a BA head and IFA is a job which requires a lot of personal efforts, lot of understanding of the people. Because what I feel is that doing a technical job, which we had been doing all the technical officers and the accounts officers who are doing the accounting. This is much, much simpler if you are doing the technical job or the accounting job, or we are, working with the instruments, we're installing them, we are maintaining them. People say it's very difficult to maintain anything. You can get that installed, but maintaining that thing is really, really difficult. But why it is difficult? It is not because of the equipment. It is because the people who are maintaining that particular thing. So anybody who works with the people, with the staff, that is the most complicated thing actually. Because there is no fixed algorithm to work with the people. If there are, say, 27 officers sitting over here, all 27 thinks differently. One may think that, morning से चल रहा है, अब ये भी आ गए, ये भी अपना lecture देंगे, ज्ञान बांट के चले जाएंगे, you will think like this. We will say, okay, a PGM person है, सुनना तो पड़ेगा. We will look forward to it. It's an interesting topic. Maybe he'll give something. All of us think differently. So when the people come to you as PA head or as IFA, they had a lot of things. This 1 month has been revealing for me. I had been SSA head at the time of DOT. जब powers बहुत था, competition नहीं था, and you can do anything. कुछ justify नहीं करना पड़ता था. We can do a lot of things then. I had been SSA head during the time of BSNL when BSNL was going through a crisis and everything was counted for. So I had seen both the times. And I found that there's a word which is called mature. The mature it comes from the experience and the way you think. When you put these things together, then you can say that he's mature or he's not mature.
Like in our families, there is a matrimonial thing which is happening. A girl is to be married, and there are multiple boys. क्या हाल है संजीव? मैं तुम्हें देखा नहीं, sorry यार. सब बढ़िया? So very nice. So now what happens that this boy works somewhere in Seattle in some company called Amazon, and there is a grandfather sitting in a village who does not know IT, who does not know Seattle, and who does not know Amazon. But when we are fixing the marriage of our daughter or granddaughter, we go to him. कि आप क्या सोचते हैं? Shall we fix up this matrimony or not? He does not know these things, but we ask for his opinion, and 90 times out of 100, he will be right. That is what we call maturity. Now, this 1 month had been revealing for me. I see people coming to my office. For a whole of the day, I see them. For a whole of the day, I talk to them. And I find that this world has a lot of problems. This world has a lot of miseries, suffering, because everybody comes with a lot of problems. The medical problem, the children problem, there are a lot of things they come. And when they come to your office, they come with a lot of expectation. They don't, people travel from deep south just to have a talk with me or with director HR. It is very taxing to travel such a long distance just to have a word. That time, what is my or your responsibility is that how good a treatment you give to them. We are on those seats where you cannot do everything because organization is paramount. You have to see what is the requirement of organization. But at the same time, you have to see that organization works because of people. If people are not happy, they are not motivated, organization will not work. It is a team thing. But at least, if you are not able to do their work, how well you listen to them, that becomes very important. And what I'm talking today is emotional competence and why it is relevant, especially in the positions you all are handling. Now, I have a question. Question is that, can you play the sitar? How many of you can actually scat? In this room, you can do scatting. You can, fantastic. And how can you compose music? सब लोग बहुत learned हैं यहाँ पे, they had been to good colleges, they had seen the lives, but a very simple thing three I am asking. And for the first three, 90% of us will say, nahin. But when I say, are you good at mathematics? I think almost all of you will say, yes, we are good at mathematics. Why it is so? The question comes, why it is so? Mathematics is the most complicated thing in the world. There's something like this, a duck. There's something like a cross. There's again a duck. And you say that this is something four. Totally abstract. There's no logic. We say that mathematics is a very logical thing, and I find it's very abstract. And we all are good in that. But we are not good in that which has some 4 or 5 strings, which have 4 wheels. Why? Because we have not learned it. The answer is simple, that we have not learned it. So let's go ahead. We'll keep this thing in mind. So people have different abilities in dealing with emotions, just like they have abilities in language, logic, and mathematics. I see the people when they approach to somebody's office, how they behave, and when somebody approaches their office, how they behave. The same person, when somebody treats them badly, what they say, and when they treat somebody badly, what they say. I've seen all these things long time. For 35 years I am working. I had seen a lot of things. So people have their abilities. So first let's understand. यहाँ पे कहीं घड़ी नहीं लगी, आपने मुझे 1 बजे तक टाइम दिया है. बता देना भाई, 5 मिनट पहले बता देना. Somebody should tell me कि my time is over. IQ हम सब लोग जानते हैं. So IQ is what? It's basically intelligence, where we are doing the analytic reasoning, verbal skills, quantitative analysis,
attention, memory, judgment. And we think that whosoever is having these things is somebody who is going to succeed. Because these are the key things. IQ basically bases the individual's personal information bank, memory, vocabulary. Normally it peaks at 17 and then. So if we have these things, अभी आप देखेंगे हम लोग इसी पे काम करते रहते हैं. Because we feel that this is a sure indicator of the success. But what we feel that, is it actually a good indicator of success? We say no, it's a weak predictor for achievement, job performance success, and overall success for wealth and happiness. It's a static thing. And static things can be applied with equipment, but not with the people. Because ऐसा हो सकता है आप में से कोई मेरे से कुछ रफ सी बात बोल दे अभी, ठीक है ना? Maybe I'm talking so nice to all of you, and suddenly somebody says, so what will happen? I'll go through a change. Suddenly I'll feel I'm so senior here. How he can talk like this? And all that good thing which is coming from me will change automatically. So something which is used for static cannot be used for me. Now we come to the other part. IQ we had seen, we come to the emotions. So these are few of the emotions I have mentioned here: happiness, fear, anger, affection, shame, disgust. These are all emotions. It's good to name them. When I say Sanjeev, so I have something in my mind कि मैं संजीव संजिल से बात कर रहा हूँ. Because of my association with him, I have something in my mind. When I say something at maybe Mr. Vidyadhar Rao, so I don't know much about him, so I'll have different impression. It is good to name them because the naming gives you an idea. So these are the emotions which comes in our mind at multiple times, but we don't name them. We just suffer or happy with these emotions. We don't name them. These have got the physiological effect. Say, I got a call from minister's office, and his PS says me, I'm sitting comfortably in my office, इस आदमी का ट्रांसफर कर दीजिए, या आपने इसका ट्रांसफर क्यों कर दिया है, चेंज करिए. Now इसका ट्रांसफर जो मैं करा के आया हूँ, मान लीजिए CMT से मेरी बात हुई है और CMT ने कहा नहीं नहीं, this is the right thing, we have to do it. Now what happens? Suddenly that all peacefulness will go away. I'll have some sweating here. My heart will start pumping a little differently. So these are the physiological effects which comes with the emotions. When the emotions change, then a lot of things change on the physiological side as well as towards the psychological side. लेकिन क्या हम लोग ये इमोशंस को एक्चुअली फील करते हैं? इसकी रिक्वायरमेंट है जॉब में. जहां आप जॉब कर रहे हैं, हम जो आज यहाँ पे बात कर रहे हैं, whether these things relevant at all or not, you will find yes, because these are the things which we talk about. Too sensitive, too personally, jealousy, I don't understand the feeling of others. He's such a nagging person. He's a negative person. You send any file and proposal to him, he'll just, do something about it. So yes, we are using a lot of emotions in our day-to-day life, which we are doing it. So emotional intelligence or emotional quotient is what? It is knowing what feels good, what feels bad, and how to get from bad to good. There's one anecdote which I like to share with you. So there was a group of people, from reputed people, good from the different walk of life across the globe, who were sitting in Dharamshala, MacLeodganj, with Dalai Lama. And they were listening to the spiritual guru Dalai Lama for a week. He was telling them a lot of fundas in the life, what makes this, what makes that. And then there is one question which everybody wanted to ask. Nobody was asking. And the last day came. And the last day, finally, one girl asked that question. I don't know how many of you can think that question when you are sitting in a spiritual setting for a week. The question is, what is the meaning of life? This was the question which everybody wanted to know.
And nobody was asking. Finally, they asked that, what is the meaning of life? Guru smiled, Dalai Lama smiled. That's a very easy question to ask. And what is the answer? What everybody wants in life? Everybody wants in life to be happy. That's the only thing which everybody wants, happy. Now, happy can be for anything. So the second part he says, but how to get that happiness? That is the difficult part of this question. Because happiness is something which varies. Whether your job makes you happy, whether your promotion makes you happy, whether the financial amount you are having in your bank is making you happy, whether your son or daughter is doing good in the career, that's making you happy. A lot of things. Happiness changes its meaning. So difficult part is what makes you happy. And the emotional intelligence is that. What is that which will make you happy? So it says that knowing what feels good, bad, or how to get from bad to good, knowing your emotions and knowing the emotions of others, and emotional management skill which provides competence to balance emotions and reasons for maximizing them. मैं क्या सोच रहा हूँ, दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं, और इस सारे सोचने को कैसे हार्मोनाइज किया जाए so that everything becomes good. It goes further and they say that's a set of non-electrical skills and competency that influence your ability to succeed in coping with the life's demand and pressure. I'll go ahead. Let's go. I'll put my case again in front all of you. Whether this is a relevant topic, whether we actually use the emotional intelligence in our working life, which I am emphasizing, yes, we are doing it. And this is the most integral part when you come out of it from your BA head or IFA position, whether you can call you successful or not, it depends on a lot of things. So I say that emotional quotient, emotional intelligence is one very important part. So are we evaluating that thing somewhere in our profile? So let's see. Have we read this thing somewhere? Please comment the quality of relationship with superior colleagues, subordinates on her capacity to work as member of team, promote team spirit, and optimize the output of the team. Have we? It's a part of APAR. It's a part of ours. Yes, we are measuring it. We are trying to see that how good he is, because we know that without this, the leader's output will not come. Attitudes towards scheduled castes and scheduled tribes and the weaker section society. What is this? Again, a question, non-tangible, non-analytical, about your emotional competency. Management qualities. Comment on officers' willingness to assume responsibilities, organizing capacity, ability to motivate. आप देख रहे हैं ना इन सबको? ये सारी चीजें वो हैं जिनको आप नंबर्स नहीं दे सकते. आपका IPMS उसको कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन जो IPMS का पार्ट ए है वो तभी अच्छा आएगा जब ये सारी चीजें आपके अंदर है. Otherwise, you will not get IPMS. That is not possible. Absolutely not possible. In your positions. In a position where you are working with the equipment, yes, it is possible. But in your position, it is not possible. So what is success? We come back to the question. What is success? Is it your IQ? Exam pass, competitions clear, the percent of marks, schools, college, academic qualifications, having, big salary, top position in the workplace, being rich, wealthy, powerful, dominating influential. Is it the success? Why not? It's a success. We strive for it. Huh? We strive for it. Is it not? Yes, somebody said that, somehow crying in the Mercedes Benz is more convenient than crying on a rickshaw. So yes, these are important. But are they? Or success is a relative term, living a healthy, happy married life. For some, it may be top position. For some, it may be satisfying job life and satisfaction. I had seen people, you also have seen people, we had come through the life. Maybe the average age of this hall is 50 years. हम लोग सब 50 के इधर उधर ही गया. 50 years is a long time to live. बहुत कुछ देख लेते हैं 50 साल. And you'll find that when everything is going good, you feel that you are happy. Suddenly something goes wrong on the health front.
on the family's front. मेरे पास में एक आदमी आया, वो कहता है कि my son is in a bad company and my whole life is shattered due to that. He is good, doing good in his career, बढ़िया कर रहा है, everything is fine, but उसका happiness खत्म हो गया. Suddenly it happens, it goes away. So we have to see that, what makes that happiness which we are talking about. So I put my case, the most potent predictors of career success are ability to handle frustration. Now you come to CMD BSNL और डायरेक्टर HR और PGM पर्सन और आप कहते हैं कि साहब ऐसा है, यहाँ पे तो बहुत हो गया, आप मेरा वहां ट्रांसफर कर दीजिए. या ये कहते हैं कि जो मेरे नीचे ये बैठा हुआ है, he is creating a lot of problems for me, please remove him. And I or my boss or my boss's boss, he says, प्रॉब्लम तुम में है यार, why talking all this thing? पहले यहाँ पे तो अच्छा काम करो, फिर आगे बात करेंगे. What will happen? You will feel frustrated. Is it not? You will feel frustrated. How good you are to handle that frustration? आप कितना अच्छा उसको हैंडल कर पाते हैं? That is the key. How to manage your emotions and social skills. These are few of the indicators. The last question, do you know any highly intelligent people who are not socially adept? Everybody knows them. हम सबके boss ऐसे ही होते हैं, is it not? Who is happy with their boss? Every boss is, he may be intelligent, but he is not socially adept. He does not know how to talk with the boss, subordinates. So characteristics of high EQ person is he knows when to wait, when to watch, when to be aggressive, when to be passive, when to be together, when to be alone. He knows it. All these things, when to confront, when to withdraw. He knows all these things. जहाँ पे उसको confront करना है वो करेगा, जहाँ पे withdraw करना है withdraw. These looks very simple question, but these are very difficult question. We had seen multiple times people going wrong here. Multiple times. We have seen multiple times us going wrong over here. And as they say, कि लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई. This is something people say, that the moment's problem which we had done wrongly has punished us for whole of our life. Because there's a moment of madness. हम लोग सब बहुत हाई EQ वाले लोग आ गए, हम लोग तो ये हेड्स है, मैं पत्थर हूँ, PGM पर्स हूँ, तो मतलब हम लोग तुरम खाएं, हमने पता नहीं क्या किया. लेकिन क्या ये क्वेश्चंस हम लोग के दिमाग में आते हैं? If I only had a different job or different boss or different posting or different subordinate, हम लोग तो ये भी सलाह सोच लेते हैं कि if I had the different plate in the restaurant, जो बगल वाले ने ऑर्डर किया वो मैं ऑर्डर कर दिया होता. We have a lot of ifs in our life. No. So these are the questions, and these questions comes, people say that you should not have regret in your life. Regrets नहीं होना चाहिए. But all these if says that there are a lot of regrets in life. छोटा या बड़ा फर्क पड़ नहीं पड़ता, but there are. So it says that कुछ problem है EQ में. ये Nicomachean ethics है. It's a Greek thing. Anyone can become angry. That is easy. गुस्सा होना तो आसान बात है. But to be angry with the right person, to the right degree, at the right time, for the right purpose, and in the right way, that is difficult. इतना सब सोचेंगे तो गुस्सा ही खत्म हो जाएगा, है ना? इतना सब सोच के तो you'll no longer be angry. But this is what this ethics is about, how to have a good living. The Greeks have their own ways of saying. So they say one of the principle of having a good life is this. Up, I have set the tone कि it is important in the life. अब प्रॉब्लम क्या है कि आपको पढ़ाते हैं क्या इसको? Do you learn it? कहाँ आप सीखते हैं? And such a important things we have left it to the chance. आप किस घर में पैदा हुए हैं, आपके पिताजी माताजी कैसे हैं, क्योंकि हम वहां से सीख रहे हैं. आपके कौन फ्रेंड्स बने हैं, आप वहां से सीख रहे हैं. What has been your peer group? Because there is no formal training about it. You are not been trained how to handle your frustrations, how to handle your stress, how to handle your sadness, how to handle your madness. You are not trained for all these things.
You're left to the chance. We are not given any priority to teach that in the schools. हमको बाकी चीज सिखाई जाती है, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, फेलियर, डिप्रेशन, बर्नआउट, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, इनको डील करने का हमें कोई तरीका बताया नहीं गया. So organizations are interested, we are interested, BSNL is interested in emotional intelligence because the performance of organization depends on the relationship of the people involved, which ultimately relates to the degree of emotional intelligence of its employer. When I sat in the, I noticed it as SSA head Patiala also, and then at here also, यहाँ पे बहुत कोर्ट केसेस है. BSNL is a place which has got lot of court cases. इतने कोर्ट केसेस मेरे ख्याल से कहीं नहीं होंगे जितने यहाँ पे. People go to the court for any damn reason. And why do they go to the court? Because they are not happy with the decisions management is taking. That's why they go. Courts are for that purpose. So it means that people are not happy because there are so many court cases. Every association, every union, for anything they are having court cases. And for that, their promotions are delayed. Promotions nahi ho rahe, kuch nahi ho raha hai, because they had been a lot of bickering about it. So you'll find that there is some problem. कुछ है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है. People fail despite high IQ. High IQ हम लोग डिफाइन कर चुके हैं, क्योंकि वो रिजिड होते हैं, क्योंकि वो पुअर रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, इनसेंसिटिव, मैनिपुलेटिव और एम्बिवेलेंट. आप लोग जिस पोजीशन बैठे हैं यहाँ पे, जो राइट साइड का तीन है, इट इज, यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट, बिकॉज योर पोजीशन लर्न दैट it can take you towards these three things. You can be insensitive, you can be manipulative, you can be overtly ambitious. Because the powerful positions post always gives these things. We have to be very careful about that. Because people read everything. ऐसी कोई चीज नहीं है, अगर आप उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, सिचुएशन को मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो नहीं समझते, ऐसा सोचना ही गलत है. They no understand everything. And as soon as you do these things, suddenly your personal credibility goes down. And this is suicidal for any leader to have low credibility among its team. Team should have a very high opinion about your credibility. Because without that, आप सब लोगों ने, हम लोगों ने कितनी बार कितने बड़े बड़े डिसीजन, बॉस ने कहा कि कर दो, हमने कर दिया. कब अप्रूवल आएगा, कब नहीं आएगा, वी हैव नॉट थॉट ओवर इट, बस कर दिया. लेकिन जिस बॉस ने उसको ओन नहीं किया, then we never did anything for him. Never. Absence of self-control, प्रेशर आया ऊपर से, and then you become reckless. आप सारा जितना ऊपर से आया सारा नीचे निकाल दिया आपने. Consciousness, trustworthiness, social skills, arrogant, oppressive, and then building bonds and living diversity. These are the things which, if are absent in your personality, then there'll be difficulty to handle all these things. But the biggest reason managers fail is poor interpersonal skills. You agree or not? This is one of the very important. Because I go back to my original statements that in our positions, we work with the people. People have their own mind, their own emotions, and you have to be sensitive towards that. कहते हैं उसको ना कि जैसे आप ऊपर जाते हैं तो जो आपको रास्ते में मिले हैं उनके साथ आप जैसा बिहेव करेंगे तो जब आप नीचे आएंगे, जो आएंगे ही आएंगे. No, life is like this only. It will take you up and then again it will take you down. You are going to meet them again, and अब वो आपसे वैसे ही बात करेंगे जैसे आपने की. So we have to be careful. So our offices are a very difficult place to work. आप लोग की पोजीशंस बहुत डिफिकल्ट होती है क्योंकि हर आदमी देख रहा है आपको. मैं at Patiala, we were colleague that time. He was at Hamipur, I was at, you were at Firozpur, yes. He was doing a lot of good things in the GSM. A lot of towers had been put up that time at Firozpur, border areas. So, Hoshiarpur mein kiya tha. Okay. So, I found that that time my family was at Ghaziabad.
My son was in class 12. I was promoted and transferred to Patiala, a foreign land for me. Have never been there. And, with the God's grace, people used to speak good about me that time. So I was given a lot of recommendations to that time management that he should be kept here for one more year because, his son is in class 12th and there is nobody to look after. But I was told that अगर 2 दिन में तुमने वहाँ पे join नहीं किया, then तो 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So I joined there. So I had 3 CGMs that time in Punjab to whom I reported. All 3 legends, stalwarts, Mr. Sirohi, Mr. N.K. Gupta, Mr. Julka. These 3 were my CGMs. All 3 were great people, stalwarts, master of their craft. I asked them, sir, my son is in class 12, and every weekend, of course, for us, this was, only Sunday was there. It's not 5-day week, Sunday. I need to go to Ghaziabad. They said one thing, yes, please go. No worries. But we want you to be in the office till 5 o'clock Saturday and Monday morning 9:30 in the office. This was the rider which was given to me. This made my life very good and very bad. Good because I was able to go every week, even being as I had there, to soothe the nerves of my family. Bad because for me the traveling was havoc. मैं रात को 2 बजे घर पहुंचता था और नेक्स्ट डे 4 बजे वहां से चलते था जिससे रात को फिर 2 बजे मैं पटियाला पहुंच जाऊं. So it was a nightmare for me for one long year. But then what happens? All this time when I was following this thing, जो मेरे वहां पे और लोग बाग थे, वो हमेशा इस चीज को देखते थे कि अगर ये 5 बजे चला गया है तो आई विल डेफिनेटली गेट अ कॉल बिफोर द अम्बाला कम्स कि सर ये प्रॉब्लम इसका कैसे करें. So I know that people are watching me. They are just watching me. This is how it happens. So all of you are in difficult positions where you have to be, clear. As I told, old-fashioned word for the positive correlation between age and EQ is maturity. 5 components. अभी कितना टाइम हो गया भाई? 5 minutes. 10 minutes. So okay. So 5 components of EI: emotional self-awareness, managing one's own emotions, developing empathy, motivation, art of social. I'll talk about self-awareness. Self-awareness about कि थोड़ा सा अपने आप को नोटिस करें कि आपके अंदर क्या emotions time, that particular situation, what kind of emotion it is giving rise. Because if you check it that time, it will not become a fire. It will stop there. So you have to be cautious about, what you're thinking. So EI is like a smoke alarm. Before it turns into a fire, check it so that it does not go wrong. There can be a lot of things which can be harsh when people are talking to you. There's no point giving it back. कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल फायदा नहीं है. Don't give it back. Just see that how good you can handle it. These are few of the quotes which I wrote here, that mortals can't keep any secret. If their lips are sealed, they gossip with their fingertips. The Freud said that. सामने जो बैठे हुए हैं, आप उनको समझ लेते हैं. उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो समझ लेते हैं. तो आपके सामने जब भी कोई आता है, आपको यू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली व्हाट्स गोइंग टू हैपन. सो आपको उसको उस तरह से करना पड़ेगा. कहते हैं ना, मैरिड कपल्स आफ्टर 25-30 years भाई बहन लगने लगते हैं. देयर फेसेस बिकम रिकॉग्नाइजेबल. दिस इज सेट. सो दिस हाउ इट इज. एम्पैथी. Developing empathy is important in our jobs. Developing empathy is a good thought. Stereotyping नहीं करनी चाहिए. Stereotyping,
शी इज अ गर्ल, शी इज अ वुमन, वो तो ऐसे ही सोचेगी, नो दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ थिंकिंग, ये ठीक नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट ट्रू. आई हैव सीन gentlemen who are very, very emotional. I have seen the women who are not so. So don't stereotype. The subtle and complex abilities which underline people's skills are being attuned to others' emotion, promoting comfort in this thought, the proper use of display rules. Display rules, जैसे many people come to me just for 30 seconds, 2 minutes. आपको उनको बैठने को बोलना ही है. I had seen it that they were not, offered a chair. वो खड़ा खड़ा बात करता है. Never do it. Never do it. उसको चेयर आपको ऑफर करना ही करना है. There is no other way. आप उसको करेंगे. आप उसका काम नहीं करेंगे, but he'll go back with a good, thought. मेरे 2 बॉस थे. मैं उनका नाम नहीं लूंगा. दोनों बहुत बढ़िया strong personalities. Somehow related with वो लोग. So somebody said कि तुम इन दोनों के साथ में काम किए हो. What is the difference you found? Because they were so alike. बहुत aggressive थे and आपको push करते थे hard. Task masters थे. So I said only one thing, that from Mr. A, when I came out of his chamber meeting him, I felt very grumpy, not happy. But when I came back from the B's chamber, I feel okay, happy. किया दोनों ने मेरे साथ में same है. But this is how the emotions changes. So you have to be, emotional skills managers should learn, competency, maturity, sensitivity, taking emotional upsets. ये आते ही हैं इनके पास, इनके लिए आप कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनते हैं, योर स्पाउस डज नॉट लिसन. तो हाउ कैन यू थिंक कि आपका जो सबऑर्डिनेट है वो आपकी बात सुन लेगा, और आपका बॉस तो बिल्कुल ही नहीं सुनेगा. तो दीज विल बी देयर इमोशनल अपसेट्स, आपको उनको हैंडल करना आना ही चाहिए. दिस वी हैड टॉक इन वन और अदर वे. some myths and facts about EQ. अभी जो मैंने पूरा आपको सेशन दिया, which I am now closing. Don't make these mistakes. Being high EI does not mean a weak, submissive or defensive personality. No, we are not saying that. It is just not there. ये दोनों चीज अलग है. Being high EI also does not mean extra nice, polite, sugar coating your language. No, this is not there. Good EI, you understand your emotions, you understand others' emotion, and you try to bridge that. EQ आप सीख सकते हैं, हाँ सीख सकते हैं, जैसे आप म्यूजिक सीख सकते हैं, बिकॉज इट्स नॉट हेरिडेटरी बेस्ड. एटलीस्ट आज तक की मेडिकल साइंस में तो ऐसा नहीं है. सो कैन EQ बी डेवलप्ड? यस, यू कैन डेवलप इट. थोड़ा माइंडफुलनेस होना चाहिए. हाँ, जस्ट स्टेप बैक अ मोमेंट and then you can do that. 9 strategies for promoting emotions is taking that time for mindfulness, recognizing and naming the emotion. As I told, name karna bahut important hai. This time I am feeling angry. This time I am feeling frustrated. This time I am feeling stressed. As soon as you will name that emotion, you will do something about it. Differentiate between emotion and need to take action. Every emotion does not require that you should take action for that. वो थोड़ी देर बाद चला भी जाएगा. जरूरी नहीं है आप हर इमोशन को रिएक्ट करें. इट इज नॉट नेसेसरी. Preventing depression through learned optimism. Learned optimism is good thing, and anybody who has lived on this planet for 50 years, he has a lot of good things about himself. उसने जिंदगी में बहुत अच्छा किया है, इसीलिए इस पोजीशन में बैठा है जहां पे आप लोग बैठे हुए हैं. Without doing good, you cannot come on these positions. You have done good. So when the difficult or bad times come, think about those episodes वहां पे जहां पे आपने ऐसा किया है. So learn that optimism. Distraction techniques ये सब हम लोग करते ही हैं. Listening for the feeling, listening, feeling and gut feeling. Gut feeling कभी कभी ले लेना चाहिए, कोई गलती नहीं है. बस ये देख लेना चाहिए कि बार्गेन क्या है. हम लोग कभी कभी डिसीजन लिया था. Bargain should, when we take gut feeling,
where the logics and the rules are not actually backing you. लेकिन आपका मन कह रहा है इसको कर दीजिए. मेरा अपना मानना ये है कि वो जो चीज ऑर्गेनाइजेशन और लोग दोनों को बेनिफिट कर रही है, even if you go against the rules, it will not harm you. But even if you go with the rules, but the thing which is going to harm the organization and the people involved, it will make life difficult for you. So in total, you have to see what makes people and the organization positive. Developing listening skills. आप रोल मॉडल सोच सकते हैं इसके बारे में. लर्नेड ऑप्टिमिज्म के बारे में यू कैन थिंक ऑफ लर्नेड, जैसे भगवान राम ने शबरी के पेड़ खाए थे. दिस इज स्टोरी यू कैन थिंक ऑफ. हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इन एनी spiritual ग्रंथ of any sect, any religion you go, you have the ample stories about it. So that helps you in the time of difficulty. That helps you. Lastly, a few quotes and then I'll close. Management means helping people to get the best out of themselves, not organizing things. It's amazing what you can accomplish if you do not care who gets the credit. Third point, I praise loudly and I blame softly. Ideas are like rabbits. You get a couple, learn how to look after them, and pretty soon you have dozens of ideas. So these are the few things which I thought you should know. So that's it. As I made my promise. Anything? I'll be happy to answer. Thank you. Thank you very much, sir. It's always a privilege to have you at the LTTC campus, sir. Now, to facilitate Shri Anil Shri Singhal, sir, as a token of love, respect, and the gratitude, I would like to call upon our beloved PGM Shri P.N. Dhoye, sir, to felicitate Shri Singhal, sir. Finally, whenever you have scheduled meeting there, To take things forward, now with a huge round of applause, I would like to welcome Shri Mahakocho sir, the to take the things forward, and I would like to request Shri Mahakocho sir to take the things as crisp as possible so that we would be ended up with meeting up our timeline, sir. Yep, thank you, sir. Over to you. Hello. Let's have a round of applause to welcome, sir. Thank you. Thank you very much. Good afternoon, everyone. So I will be running very few slides of electricals, wings activities and initiative. Actually, most of you might be knowing because in the HOCC meetings and other things, we are actually updating what we electrical as a the verticals are exactly doing. Today again I will be running through very quick slides, very few slides only about electrical activities and initiatives. Electrical assets, actually आप सभी को पता है कि we have been traditionally doing the capex work of electrical and electromechanical services.
So Abhi, over the time periods, actually our focus has changed. Actually, we have shifted from doing the traditional works of, in addition to doing the traditional works of electromechanical works, we have, shifted our focus to the cost saving sides like energy reductions and automations. So this is our focus now. We have shifted and it is strategically fit as well because in any organization, any vertical or any division has to function according to the demand of the time. So we have, shifted our focus from doing the capex works to the cost saving in terms of energy and automation. So here is my slide. First slide is about BSNL financial status, which is, last year's, but I just wanted to tell you that in terms of energy, what is that amount? I don't want to tell you that these are the things, expenditures or revenues. I just wanted to have an idea that what, the quantum or volume of that amount is there in the power and fuel. So it is very substantial. So, to save energy or to the conserve energy, we have, started a program called or a project called OJAS, which everybody knows about it. If I have done the analysis and in the past, 5 years, if we see that the energy savings, that compounded annual growth rate was about 46%. Now it is coming to us and telling us that the figure is already reaching to the saturation level. Because we have done lots of, the energy saving things in the last 5 years, but now the field people on the electrical, the chief engineers are telling that there is no more, strategy or things where we can do and then save energies. So this is a situation we are, coming to the point. But that should not discourage every one of us. This is the challenge. When a situation comes a challenge, there is an opportunity as well. So we have to think what can be done next, so that we can still save some kind of energy in our systems. So this is what I was mentioning, that energy saving is reaching the saturation points and other things. Now we have to be little bit innovative. So we are telling whenever we have a, a meeting with the chief engineers, we always tell them that we have to be little innovative now. You have to give us, some kind of input so that we can bring that things in the corporate level as a planning and policy and then get it implemented in the field level. The most important things like in the recent time we have done is like, the electrical and civil, we used to have that operation and maintenance tender in a traditional way as per the CPWD norms. But now it has been changed to SLA base. Now we have done it that it should be SLA base. It should not be on the previous, जो जैसे चल रहा था ऐसा होना है करके. That has been completely changed now, and it is completely in tune with the management, material management policy of BSNL. So I just my slide I just don't want to tell you that I have saved this much of energy. Of course there is a savings. Now, what is that contributing factor? Just I have a slide on this. These are the things, contract demand rationalization, packages reductions. These are there actually. So I will quickly run into it. And if we, compare energy expenses with our peers or the other PSUs, we are actually in the least side. So in case of us, it is about 10.5% on the revenue. Whereas in Geos and the Airtel, they still have higher than our percentage. So now the focus area.
Now I have told you that the energy saving has reached the saturation point. Now what is the focus point now we have to do? See, there are still scope where we can do some kind of energy savings. And in this particular case, as a PA head, I would like to request you all have to be coordinated or have to have that, kind of directions to the electrical wings in the BA level so that, the energy savings can be again, uh, uh, or some activity can be done on energy saving aspects. So energy audit, we have done long back, actually 5 to 6 years back, energy auditing of all the telecom building was done. So this is again has to be reviewed because in between there has been a technological changes, and then the new equipment has come, and lot many things has happened. Right? तो इसमें जो है ऐसे BA head मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि kindly instruct to those electrical person in the BA to get the energy audited again, and then उसमें पता करिए कि whether there is any scope of getting it further reduced. So these are the things. Once you do the energy auditing of your telecom buildings, then that contract demand load को rationalize कर सकता है कि नहीं, you will be knowing. And ST to LT, conversion can be done or not. Replacement of package AC would split AC हो सकता है कि नहीं है. All these things will be there. And then downsizing of DG shade is one of the very important thing. ऐसे BA head, sir, आप लोग करवा सकते हैं इसको जो. Because अभी के समय में what we have been observing is like in telephone exchanges, हमारा पहले का जो DG shade था काफी ज्यादा साइज का था, but अभी के समय में we don't have, we don't require that much of rating. लेकिन आप higher size के DG shades को आप चलाएंगे at no load, also that in a, the fuel consumption will be more. तो उसको नया DG shade से replace नहीं करके जो DG shade कहीं दूसरे जगह पे पड़ा हुआ है with the appropriate rating, उसको आप ले आ करके रिप्लेस कर सकता है, करा सकता है. कई जगह पे I think last 3 years back I was posted at Ambala. We have done that actually. Few sites we have done and it works. तो ऐसा कराना पड़ेगा. आज के समय में जो electrical manpower is very less, it is not available in all the BAs. So this is my sincere request to all the BAs that you only have to take care. Huh. Yes. That's very good, sir. Very good. हाँ. Capacity. Very good, sir. So इसको कराना चाहिए. And then अभी के समय में जो है then there is a tariff changes. This government regulation is coming up. All the discoms will be asked to implement time of the day tariff. In some of the states it's already there. In case of Maharashtra and then in Delhi also, time of the day का मतलब ये है कि there will be a different tariff rate for different hours in a day, in a 24 hours day. So peak hours में जो है आपका higher charges होगा, और low मतलब में जो least least hours में जो है जहाँ जब सबसे कम एनर्जी लेने का समय होता है, it is at night only, उस समय में आपका रेट कम होगा. तो उसका जैसे ही इम्प्लीमेंट होता है तो आप उसको अवेल करना चाहिए. Why? Because in case of us, our telephone exchange runs for 24 hours. हमें तो सिर्फ और सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट कराना है. With the implementation or of that time of day tariff, we will get automatically some kind of benefits. Otherwise, we will be losing our things. And then in a UP, like कुछ states में ऐसे है कि जहाँ से rural tariff से rural tariff पे convert करने पे जो है we get some benefits. So UP, if some of you are from UP circle, then they must be knowing. उसमें काफी हमें मतलब benefits मिला है. तो ये एक बिल्डिंग पे हम लोग कर सकता है. And then in towers, टावर्स में जो है हमें ऐसे जो मिलता है कि BTS को जो आप if you shift the BTS from indoor to outdoor, उस समय में हमें DG सेट की जरूरत नहीं पड़ती है. तो there will be definitely savings of energy. And then move RF, that radio frequency converters and power amplifiers from BTS
क्लोजर टू द एंटीना। इस पे करने पे भी जो है काफी सेविंग्स होता है। अगर आपका रेडियो एंटीना को जो है इसके जो सॉरी कन्वर्टर को रेडियो एंटीना के पास में लेके आता है, देन ऑल्सो देयर इज ए सेविंग्स। एंड देन जो रेडियो होता है उसको जो है इको मोड में रखना चाहिए, देयर इज ए सेविंग इन इको मोड। जब आपका ट्रैफिक ज्यादा होता है तो देन ओनली इट विल थ्रो सम मोर पावर, otherwise low traffic में जो है it will automatically put that system in a saving mode. So that changes also need to be done. ये आप ही करा सकते हैं। आपका जो JTO होता है जो साइट पे जाता है, BTS साइट पे जाता है, they can be instructed to do that kinds of things. So now then there is another way of doing or saving some kind of energy or getting it reduced is in terms in implementation of renewable energy technology or green energy we call it. तो हम लोग उसके ऊपर में काफी काम कर रहा है। We have called last time 20 megawatt का एक रूफटॉप के लिए कॉल कर रहा था, but management has approved only for 6 megawatt। उसमें हम काम कर रहे हैं। We have already given, I think Rajasthan and Maharashtra, they are the maximum, the benefits getting. तो आप उसको भी आप देख करके मतलब करवाइए कि कहाँ पे लगवाना चाहिए in coordination with the electrical wings. So these are the things we are doing actually. इसमें मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि मतलब there are in every state there is one nodal department or nodal agency, they call energy development agency. जैसे हरियाणा में था तो हरियाणा एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी सम एजेंसी है। तो इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन को भी अप्रोच करना पड़ेगा। अगर आपके पास में स्पेस है, they also can put rooftop energy rooftop solar on our building on RESCO model. We don't have to give any kind of money to them. We only have to spare our space, and then they can always put their system, and then we can get some benefits. तो इस तरह का आपका एक BA हेड का होने के नाते जो you can always do. And then green energy open access जो बोलता है, आपको जो मान लीजिए एक बिल्डिंग है, in that particular area you don't have to install any green energy things. It can be installed anywhere in India, but still the power can be drawn. तो उसका open access का कोई possibility है तो हमें बताए, so that we can take up. We have already we are in process of calling some tenders. और अगर कोई interested होता है तो we'll be asking them especially for some specific building to get some green energy on discounted price basis. तो हम क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए एक टैरिफ जो है आपका 10 रुपया है पर यूनिट को हम ये बोलते हैं कि उसको जो आप पर यूनिट 10 रुपए तो उस पर कितना % डिस्काउंट दे करके हमें आप दे पाएंगे। देयर आर मेनी पीपल हु आर रेडी टू गिव। 10 रुपया था तो आप आध रुपये में देने के लिए लोग तैयार है, 6 रुपया तक भी देने के लिए तैयार है। तो अगर ऐसा चीज है तो हमें बताए। There is a quite, huge opportunity on that part that we call it green energy open access. तो ये था ऊर्जा का जनरेशन, देयर इज ऊर्जा पोर्टल। इसमें जो है मैं आज एक बार जस्ट बताना चाह रहा था, एंड आई थिंक आई एम टेकिंग लिटिल मोर टाइम। ऊर्जा बिल पेमेंट, आई एम नॉट सेइंग दैट हमें कितना पेमेंट हो रहा है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पेमेंट सिस्टम इन ऊर्जा सिस्टम। One is CAC, one is BAN, virtual account number, and then the other is BBPS, अभी के समय में जो चल रहा है। तो इसमें आप लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है सर कि जो हम अगर देखें तो हमारा सबसे ज्यादा CAC के थ्रू ही अभी के समय में भी पेमेंट हो रहा है, which is not actually good। और BBPS के थ्रू भी हम उतना नहीं चाहता है। बैन के थ्रू अगर आपके डिस्कॉम के साथ में अवेलेबल है तो प्लीज ट्राई टू मेक पेमेंट थ्रू द CAC बैन वर्चुअल अकाउंट नंबर, क्योंकि BBPS के थ्रू होने से भी हम पर यूनिट का पर बिल के हिसाब से जो 3 रुपया देना पड़ता है SBI को, तो बैन के थ्रू अगर हम पेमेंट करता है तो देन देयर इज नो चार्जेस।
लेकिन सीएससी में जो है काफी डिले हो जाता है, जिसकी वजह से जो हम अपना पेमेंट इंसेंटिव्स में नहीं मिल पाएगा। देन देयर आर लॉट्स ऑफ एरियर्स। अभी मैं एरियर्स का बता रहा हूँ। एरियर्स में देखिए सर, अभी भी हमारे पास में अबाउट 35 करोड़ है एरियर आउटस्टैंडिंग ऑल ओवर इंडिया में जो है। दिस इज द फिगर गिवन बाय द आईटीपीसी। तो ये सीट्स जो है, दिस इज आई मीन द लीज और द amount of entire India. If you see, then UP East has the highest, followed by Maharashtra, Jharkhand, I think. तो यूपी ईस्ट में सबसे ज्यादा है। तो इसको जो है ये एरियर जो रहना नहीं चाहिए, बिकॉज एरियर ब्रिंग्स ओनली अ फर्दर एरियर अमाउंट ओनली, प्लीज कीप इट इन माइंड। हम लोग एरियर लगा के रखता है, कई बार जो है बोलता है कल इसको कर देंगे, नेक्स्ट बार कर लेंगे। इसके लिए हमने 2 महीना का विंडो भी ओपन करके दिया था क्लोज कराने के लिए, लेकिन आप लोगों ने उस समय में भी क्लोज नहीं करवा पाया। एरियर्स में जो है फर्दर एरियर्स ही लेके आएगा। प्लीज ट्राई टू गेट इट रिमूव। एंड देन ऊर्जा में जो अभी के समय में हम लोग देख रहे हैं, दिस इज व्हाट वी हैव डन, इज द प्रोसेसिंग टाइम। प्रोसेसिंग टाइम अगर हम देखेंगे तो प्रोसेसिंग टाइम ऑन एवरेज इज 18, जो पहले के समय में काफी दिन होता था, बट अभी के समय में टाइम काफी ज्यादा है। और वो एक फैक्टर वन इज द ईबी बिल पेंडिंग एज साइट इंचार्ज। यहाँ आपका रोल है सर। साइट इंचार्ज कौन है आपको भी पता है। आपका हर एक बीए में जो है देयर इज ए साइट इंचार्ज फॉर ऑल द बिल्डिंग्स। वो आपके पास में यू नो दैट। तो ये टाइम जो है मोर देन 15 days कुछ जगह पे लगे। झारखंड हैज मोर देन 15 days, 176 cases are there. And then Maharashtra you have 125. In that way, there are circles where the processing time or EB bill pending at site in charge is very high. तो इसको जो है if you are, because you are BA है, तो वहां पे आप अपना साइट इंचार्ज को कभी मांग के देखिए कि क्या आपके पास में कितना बिल प्रोसेस पेंडिंग है। उसको थोड़ा सा काइंडली आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप उसमें जो है देखें कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बिल्स और नंबर्स ऑफ बिल्स बीइंग हेल्ड अप इन दिस साइट इंचार्ज एंड व्हाट इज द रीजन फॉर दैट। अगर आपका इंटरवेंशन नहीं होगा तो ये कल को ऐसे ही रहेगा। तो इट इज एक्चुअली एडिंग अप द प्रोसेसिंग टाइम which is ultimately affecting our all our processing times. Now I will come to the another where we very few only OSM operation समुद्र मंथन, जिसमें हम काफी उसको सेल करते हैं, जो अपना जो आउटडेटेड मशीनरीज और इक्विपमेंट्स व्हाटएवर, एंड ऑल ऑफ यू गाइस आर डूइंग आई मीन आउटस्टैंडिंगली गुड इन ऑलमोस्ट इन ऑल इंडिया लेवल। तो इसमें मैं जस्ट दिखाना चाह रहा था कि कितना सेल हो रहा है, बट दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। नाउ द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज द कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, जिसमें जो है अगर मैं एनालिसिस करके देखता हूँ तो काफी ज्यादा है। खास करके जो CNTX वाले सर्कल है, जो नॉन टेरिटोरियल सर्कल्स है, इसको जो है थोड़ा सा गौर करना होगा। वहां आपका जो द कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इज हेल्डिंग अप, एंड उसका क्या इफेक्ट है वो तो आपको पता ही है। देयर आर इसमें मैं अगर बताऊं, वो एक BSNL का जो क्रेडिट रेटिंग पे कितना असर कर रहा है। इट इज रिसोर्स के इनएफिशिएंसी हो रहा है। इट अफेक्ट्स इट एक्ट्स लाइक ए विलियन इन फाइनेंशियल रिपोर्ट। मार्केट डिसएडवांटेज मिलता है। So many factor things are there which is not good if our CWIP is increased. एक क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है जी। I wanted to ask one thing, that we were discussing all about Urja, which is to be implemented in the plant, but one topic is left out. It is always left out, that legacy system of applying DSR to every electrical work has not been modified or improved. अच्छा, Whatever work we propose, we give requisition to electrical.
they give a big fat estimate Okay. for everything which can be handled at little price. I think at a very little cost. For everything, they give a huge estimate because the TSR system is so rigid. Hmm. What about that? Is something going on that it will be changed? Are you talking about I can the capital works or the operation? that should also be added to saving energy saving or whatever the cost in cost saving in electrical. It should also be it should also be the part of that. It should also be a new initiative. Right. That electrical processes, the working of electrical is being improved. इसमें ऐसा है, I can give you one example. जैसे मुझे कहीं कोई एसी रिप्लेस करना है, स्प्लिट एसी है, वो रिपेयर करवाना है, डक्टेड है, डक्टेबल एसी, वो रिपेयर करवाना है, तो उसमें हमारा जो फील्ड में ऑफिसर है उसके पास इतना नो हाउ नहीं है कि वो एक्सेस कर पाए उसे कि इसमें प्रॉब्लम कैसी जैसी है। उसको क्या करता है, वो एंडोर्स करता है उसी को, जो किसी वेंडर को बुलाते हैं, वो उसको एग्जामिन करता है और उसके बाद जो वो कहता है दे एंडोर्स इट। अगर वो कहता है कंप्रेसर खराब, तो वी एज्यूम दैट कंप्रेसर खराब है। और एक केस में मैंने क्या किया कि OEM का कोई सर्विस इंजीनियर को बुलाया और सेम फॉल्ट के लिए जिसके लिए मेरे पास 96,000 का एस्टिमेट आया, मैंने OEM के इंजीनियर को बुलाया वहां पे और वी गॉट दैट एसी एग्जामिन, और उसने जो है टोटली डिफरेंटली उसको डायग्नोज किया और उसमें जो है छोटा मोटा रिपेयर करके विद इन 13,000 ही रिपेयर्ड इट। अब इसमें सिंपल फ्लॉ का है, जो मेरा फील्ड ऑफिसर है इलेक्ट्रिकल का, उन्होंने किसी और को लगा वो दिया। उसको जज ही नहीं कर पाता है कि ये क्या कह रहा है। वो बाहर से हमारा कॉन्ट्रैक्टर है, फिर कॉन्ट्रैक्टर को जब हमने उसको किया तो वो बोलता, टेक्नीशियन बोलता है कि उसको कॉन्ट्रैक्टर ने कहा है कि वेयर एवर यू गो इन 90% केसेज यू डिक्लेयर द कंप्रेसर फॉल्टी। तो ये चीजों पे जो है कुछ इस पे होना है, तो एनर्जी लेवल पे तो बहुत कुछ हो रहा है और इट्स आई थिंक इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। जो सर आप कौन से BA से हैं? BA हमीरपुर है। ओके, हमीरपुर हाँ, हिमाचल प्रदेश। दूसरा फायर का भी कुछ जो है वो उसमें कुछ अमेंड होना चाहिए, जो फायर FD, वो जो है फायर डिटेक्शन वगैरह का जो है FD FF का, उसके नॉर्म जो कुछ मॉडिफाई होने चाहिए। इट्स वेरी कॉस्टली। ठीक है, रिप्लेस करना भी जरूरी है और उसमें बहुत सारे जो बिल्कुल फ्री स्पेसिस हैं उसको एक्सक्लूड करने के नॉर्म निकले, कुछ ऐसा जैसा होना चाहिए। ठीक, I have noted down your point, sir. It is well taken. In fact, कई बार हो सकता है मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिकल का जेई या तो उन्होंने जा करके खुद देखा, आपने जैसे बताया ना, नहीं वो सिंगल ऑफिसर होता है, किसी जगह जाएगा। हाँ नहीं, मतलब वही कई बार जो दूर में किसी दूर जगह पे जो है ऐसे प्रॉब्लम रहा होगा और जा नहीं पाया, वो किसी वेंडर्स को जो है इंटरेस्ट कर दिया एंड देन वेंडर्स ने कुछ और बता दिया, सारे इस तरह का हो सकता है। सारे दैट आई अंडरस्टैंड, लेकिन वो ये ठीक है इलेक्ट्रिकल, अच्छा बिल्कुल। नहीं, कुछ चीज में पॉजिटिव रिजल्ट भी आया। जैसे अभी हमने अर्थिंग के लिए उनको कहा कि आप इस अर्थिंग को एग्जामिन करो और इलेक्ट्रिकल की नॉर्म छोड़ो जो टेलीकॉम की है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल और हमारा टेलीकॉम की नॉर्म में ही डिफरेंस है। इलेक्ट्रिकल अर्थिंग इज 5 ओम और वो दूसरी है वो 5 ओम, वो आपका 0.2 और है, जो टेलीकॉम का है वो 0.5। तो इसी में डिफरेंस है। तो जब हमने उनको कहा, उन्होंने जो है दे हैव ब्रॉट डाउन द कॉस्ट, और जो इट इज अराउंड 11,000 समथिंग एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक चेंज है, इस तरह और भी कुछ कर सकते। ठीक, that is well taken, the feedback. So we'll move to the next topic, which is the last one. I will take another 5 minutes only, please. Excuse me for that. All of you must be, feeling very hungry by this time. So infra monitoring system, actually, this is the expectation or the main objective of the system is to monitor
certain critical alarms like AC mains or the battery bank, the healthiness of the battery, and then temperature, humidity, or whether the DG sets is on or not. And in the next, in few cases, we have that, will be having that provision also, remote operation of DG sets. And in future, the CCTV surveillance will also be there. So, and then this, the alarm system, we have a server at ITPC and it has a desktop, dashboard also. On a testing or a POC basis, we have, in 9 BAs, we have already installed 900 numbers. And these are working good, but the the BAs where these systems are, installed, most probably some of the BAs, they are not taking the benefits of the system. So that's why it's our, sometimes we have that feeling that we have to, explain to the field units that what it is all about and what is the importance of IMS system. So that's why I have come up with this. So this alarm dashboard is available in www.infra.bsnl.co.in. Of course, this will be the login ID and passwords are given to only those BAs who have this system at the moment. So this I have already explained. There are about 6 alarms, critical alarms, which we are, monitoring. And then it is going to be, interface with the knob of one net you have, I think, in your this MSc or BSc. So from there, you can always see what is your temperature of that exchange, and then what is your mains availability, DG shades running status, and all other things. So I just wanted to, let you go through the dashboard, how it looks like. This is when you logging into, this is how the IMS dashboard's reporting systems looks like. Like power out of 900, 180 sites, the power is not available, or DGs are on in this, that, and temperature is high in more than 500 out of 900. So there again, you click, you will get, which BA, which sites, you can get, the details. So that I'm not going into, but this is one IMS executive reports where you will have that, the entire parameters or the alarms. I mean, in a particular BA, how many sites are IMS system installed, and what is the DG set status, what is the mains on status, and what is the temperature or the battery voltage of your battery bank and power. So this is a executive report where you can see, and this has to be seen by, the BA head and the circle as a CGM should see every morning and then get it rectified on a daily basis. So we have like 5 top alarm systems are there, which gives you, which are the top alarms of your SSAs, which are, which needs to be, attended or, at earliest. So through this IMS system, what we are actually trying to give you is, this is the summarize, and this is my last page. So in this, through this IMS system, we are trying to give you executive or managerial reports. I have already shown you that this is the managerial, that report. At a glance, you will be able to know what are the things happening, what are the status of that 6 alarms happening in your exchange. And it gives you, the human intervention, minimize the human intervention. You don't have to send somebody to your exchange. अरे यार देख के आओ कि तब पावर चल रहा है क्यों डीजी ऑन है अभी, हाँ टेम्परेचर क्यों ज्यादा है. Those things you don't have to. You can sit. We will be having a mobile also, mobile app also. Mobile app पे ही आपको मिल जाएगा कि why this, what is the status of my that particular exchange in terms of this, 5 parameters. इससे क्या हो रहा है कि हम operational efficiency मिल रहा है. We are getting operational efficiency because we are not, sending manually somebody to see those parameters.
और इसमें एनर्जी सेविंग्स भी होता है। कुछ कुछ जगह पे आपको मिलेगा कि आपका टेम्परेचर काफी लो है, लेकिन वहां में आपका एसी चल रहा है, तो उस समय में यू कैन ऑलवेज डायरेक्ट कि यार उसमें इतना तो 20 डिग्री से नीचे चला गया, व्हाई यू आर रनिंग योर एसी अननेसेसरीली, पुट इट ऑफ। आप अपना आदमी को बोल सकते हैं, उस समय में आप उसको स्विच ऑफ। इन दैट वे एनर्जी अननेसेसरी एनर्जी वेस्टेज विल आल्सो बी प्रिवेंटेड। एंड देन उसमें जो डीजी ओन्स का जो स्टेटस है, उसमें भी आपको देख पाएगा कि आपका डीजी कितना आवर्स के लिए इन ए डे और इन ए मंथ रन हुआ। उसके बेसिस पे भी आप किसी को अगर फ्यूल का एलोकेशन करना है तो यू कैन ऑलवेज एलोकेट, बिकॉज यू नो the average consumption of your DG sets fuel consumption per hour, average fuel consumption per hour हमारा DG सेट इतना लेता है, इतना लीटर लेता है, और एक महीना में अगर मेरा इतना ले रहा है तो दिस मच ऑफ फ्यूल कैन ओनली बी इशू टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो उससे आपको जो है वो मतलब आप रेगुलेट कर सकता है। इन दैट वे यू कैन ऑल्सो यू कैन प्रिवेंट अननेसेसरी समटाइम वो पिलफरेज को भी रोक सकता है। तो अल्टीमेटली व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिस्टम इज टू अचीव द दैट एक्सपेक्टेड अप टाइम, जो कि हम लोगों को हमेशा बोलता है 99 मोर देन 99% शुड बी द अप टाइम, एंड देन MTTR शुड बी more than 2 hours, less than 2 hours. So ये चीज को एक्सपेक्टेशन को मतलब आपको to help you, to support you at the point of operation. So we are trying to do something which will help you in your operation, daily operation. So this is only the thing I wanted to tell you about electrical things. मैं सिर्फ at the end of the day, I mean at the end of my presentation, I just wanted to say a few words only. Electrical हम लोग जो हमने अभी तक देखा है, जो टेलीकॉम इलेक्ट्रिकल एंड सिविल को देखता है, तो कई बार पहले का समय में जो एक जनरल जो ट्रेडिशनल सोचता था कि इलेक्ट्रिकल का कोई भी इशू होता है तो अरे यार मैं तो मुझे नहीं पता, मैं नहीं लेना, ये इलेक्ट्रिकल वाला देख। मतलब ऐसा अभी के समय में नहीं सोच रखना चाहिए। हम लोग ये बोल रहे हैं अगर इलेक्ट्रिकल का, चाहे वो इलेक्ट्रिकल का इशू हो या सिविल के इशू हो, अगर आप ये हेड है तो यू शुड टेक द लीड। आप काम करवा सकते हैं उसको, इलेक्ट्रिकल का बात बोल करके उसको मतलब छोड़ नहीं देना चाहिए। आई मीन वी शुड नॉट दैट पासिंग ऑफ बग्स टू द इलेक्ट्रिकल और सिविल, ऐसे वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। वो सोच को जो अभी हम लोग खत्म करना चाहिए, मेरा ऐसा सोच है। अदरवाइज आप भी जो काम कर रहे हैं फॉर द कॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ओनली, BSNL electrical or civil or for that matter anybody who is there in the organization are for the same cause, so उसको differentiate ना करे। तो मेरा तो यही अंत में बोलना है। Thank you very much for listening me patiently. Thank you. Thank you very much, sir. Let's have a huge round of applause for the Marcojo, sir. Thank you for such informative session. Now to felicitate Sri Marcojo, sir, with a token of love, respect, and the gratitude on behalf of the LTTC. Now I would like to call upon Shri Sham Singh ji, the B head Agra. In the meanwhile, I do have the meanwhile, I do have the two announcements to make. Kindly update the SME or the instructor name in the feedback forms you have been given. From Sri Rajiv Soni sir to Malakoche sir. And as we are running a little late, so I would like to request, and I would rather seek a positive cooperation from all of you. And we are now approaching to the lunch session. And after lunch, we are going to be assembled by 2:20 positively. Yeah. Thank you. Thank you. 2:20, sir. 2:20. हाँ.
हेलो माइक टेस्टिंग आ रही है ना आवाज?
Hello. So on behalf of LTTC for the post-lunch session, I would like to welcome Shri Saurabh Tyagi, CGM Jammu and Kashmir. Let's have a round of applause to welcome Shri Saurabh Tyagi, sir. Thank you. Thank you very much. And without much formality, because sir needs no introduction, so without much formality, I would like to hand over the dice to the sir. Sir, it's all yours. Okay, good afternoon, everybody. Today I will be talking about the disciplinary proceedings, casual and contract workers, then some court cases. After that, I will be speaking on the second part of my lecture will be regarding this EPF provisions and general rules governing that provision. Well, I know after lunch it is slightly a difficult one, but believe me that this is not some abstract presentation or not an abstract lecture. It deals with actual laws, actual court cases that has happened, and I will try to keep you awake as much as possible. Definitely, it is an interesting one. पहले वाली ये पहली स्लाइड में हाँ ये है नेक्स्ट वाली कर दीजिए नहीं हो गया हाँ the first one is regarding the new pension rules. This is pension rules 2021. As we know, the old pension rule, CCS pension rule was of 1972. This is the rules which were amalgamated in 2021. The only point that I would like to mention here is that in the earlier rules, the provision was there. If there is a delayed payment of gratuity, it will carry an interest. But interestingly, this rule has a provision that if there is a delay in granting the pension also to the concerned person, it will attract interest. So it has now become slightly more typical or slightly more interesting that you have to be more vigilant now, that even if there is a delay in granting of the pension, then it will attract an interest. And you know, in BSNL right now or in any other organizations, if there is an interest is to be paid to an individual due to delay by some officer, it will definitely carry some action against that officer, either financially or in disciplinary methods. So it is always advisable that as far as possible, we should try to pay the pension also in time. Some of you may ask that what is the time limit? The time limit for gratuity as well as pension in both the cases, that is 90 days, that is 3 months. Within 3 months, one has to settle both the gratuity as well as the pension. After that period, it will attract the interest part. So that's all. Just the rest of the things more or less are the same what was there in the earlier pension rules. It is same here also. Now the other part that I will be dealing with is the implementation of the court cases. Here I would like to bring it to your notice, or since you all are quite experienced persons in the department from working from almost 2 to 3 decades. My experience in dealing with the court cases, we have certain issues when we don't deal the court cases in a very objective manner or in a manner in which it should have been dealt with. Some of the cases I have seen through, and they are also, you might have also seen, gone through all such cases, where the directions are given by the court to give a speaking order in that case. But I have seen some of the cases where even such directions were issued that you have to issue a speaking order. Those directions were also challenged in the higher court. So you can understand that whenever we challenge such things, you are not going to get anything else out of the higher court. You had not been asked to do anything else. You have been simply asked to issue a speaking order. Sometimes while issuing such orders, court gives an
directions that you have to see these court judgments while giving the directions, while issuing the speaking order. So while issuing the speaking order, you have to keep those judgments which court have enumerated specifically, and thereafter you have to reach to the conclusion and then issue a speaking order. In no such cases, believe me, the higher court is going to entertain anything else. It has to be implemented by you only. So my advice will be always go through the judgment of the case by yourself. Don't just depend upon your subordinates, either some AGM, some SD legal or something like that, that sir, isko to hमें challenge karna hai, and you go unnecessarily or blindly to challenging that award. At least study that judgment once by yourself. It will have two implications. First thing is that while once you read the judgment, you will know that what is the intent of the court. Why has court reached to one particular conclusion? You will know once you read the complete judgment. So in case, even if you have to challenge it, you will be more equipped, you will be more knowledgeable, or you will be more informed that how we have to, or what are the points that court had said, and you have to counter those points. Since your wisdom is definitely much more than your subordinate. So I would always request you that whenever some important court cases, or for that matter, any court case comes to your knowledge, just go through the judgment by yourself only. Don't just rely on what has been put on the note sheet or what has been told to you verbally. Because sometimes most of the important cases or most of the things which are quite relevant for that court cases are not even brought in the note sheet also. The other part now I will be talking about is the reinstatement or the issues relating to the casual laborers, temporary status Majdoors. Before I go into the detail of these cases, I would just like to take give you a brief 1 or 2 slides for the historical background of these cases. As we all know, there was a culture in government department for engaging the muster roll people. It was prevalent in DOT also. So we were engaging casual laborers either through muster rolls, sometimes in the part-time form, sometimes in the full-time casual laborers. But all those turned out to be a casual labor for the department. Those were not engaged through any contractor or any vendor. Those were engaged directly by the BSNL. So these casual laborers, the very first part of, or the very first order that came in 1984, wherein at the point of time it was a PNT department, and PNT department decided that in future there shall be no further recruitment of part-time casual laborers. So from 1984, there was a complete ban on engagement of any part-time casual laborers. Thereafter, around some 7-8 months, on 1985, a ban was imposed on engagement of a casual labor also. Casual labor means full-time casual labor if it is not written anything else. But this ban was having an, you can call it an exception with it, and that it does not include the rural electrification projects as well as the project circles. Project circles and REPC were kept out of the purview of this ban. Thereafter, on 22/6/1982, there was a complete ban, and it was extended to these two wings also for the project as well as to the rural electrification project. So after 22/6/1988, there is a complete ban on engagement of any casual laborers. And any casual labor that is engaged after 22/6/1988 is termed as illegal engagement. Now, for the time being, just remember these two things here. One is the date, that is 22/6/1988, and other is the term illegal engagement. How these two terms are important, that we will see in the next slides. But these two things are very important, this date, and the other thing is illegal engagement. DOT at that point of time was the very first department in Government of India which has came out with a scheme of confirming the temporary status to the casual laborers. And this was an outcome of a Supreme Court judgment which was between DOT and some casual laborers. It went up to the Supreme Court, and wherein Supreme Court advised to issue a scheme
which is termed as the temporary status engagement or temporary status scheme. This was introduced for first time in Government of India by Department of Telecommunication, and thereafter DOPNT also introduced its own scheme. But for all the casual laborers which were inducted in DOT and continuing in BSNL, this is the only scheme which is applicable to them. Please mind it, the scheme which was later formulated by DOPNT, or if I'm not wrong, one more ministry, that is the Ministry of Railways, has also issued a scheme, but it was later to this. That is not applicable for any casual laborers which is engaged by DOT at that point of time. In this scheme, the temporary status would be confirmed on casual laborers whose engagement was for a continuous period of 240 days in the previous year, that is up to 1/10/1989. Again, this date is important, 1/10/1989. Now, what are the advantages of the temporary status Mazdoor? What are the facilities that temporary status Mazdoor have vis-a-vis the other casual laborers? Temporary status Mazdoor are also casual laborers. Please don't confuse it that they are regular persons. They are not regular, they are casual laborers only, but they have certain advantages or certain beneficial scheme is attached to them. And what is that? It is that these temporary status Mazdoor, though they are casual workers, but they have certain entitlements like annual increment, DA, HRA, leave entitlement on pro rata basis, no casual leave or any other kind of leave. Leave will be at their credit on regularization. They will not be entitled for the benefit of encashment of leave. Though they have a leave entitlement to their benefit, but it will not be encashed. And once they become regular, the word once they become regular, then 50% of the service that has been rendered by them as temporary status Mazdoor shall be counted for their retirement benefits. This is the important part. But it will only be counted if they become regular. If they are not regular, then this facility or this entitlement they are not going to have. After rendering of 3 years of continuous service, they are also were entitled for a GPF account also. And their regularization as a regular worker in BSNL or as a regular employee in a DOT at that point of time or a Group D was dependent upon the availability of the posts. It is not that all temporary status Mazdoor persons has to be confirmed or has to be regularized. It is dependent upon the availability of the post. This TSM scheme, which was there in 1989, has 3 iterations. One was the 1989 scheme by itself. The other iteration was in 1993, wherein those casual laborers who were engaged during 1985 to 1988, that is when there was this period when there was an engagement ban between PTCL and the project circles and the railway electrification project. It was applicable to those also who were continuing in the circle at that time and those who were not absent from the duty for more than 365 days from the date of issuance of the letter. This was clarified in 1993. But again, the point has to be that has to be mentioned is the crucial date was there, which was not changed here also. The scheme was again extended in 1999, and regularization and temporary status was considered for casual laborers who had completed 10 years of service as given below. There's some casual laborers between 86 to 87. Temporary status who's confirmed to the casual laborers were again were engaged before 22/6/1988. But the point that has to be clearly noted by everybody else is the cutoff date, that is 22/6/1988, was maintained in all the 3 iterations of the TSM scheme, and no person illegally engaged currently is eligible for this scheme. The most of the circles or most of the BA heads or our units are having a confusion that 1999 में साहब जो स्कीम आई थी, अब इसके अकॉर्डिंग भी हम लोग देखेंगे. नहीं, ऐसा नहीं है. स्कीम 99 में जो आई थी वो स्कीम ओरिजिनल स्कीम ही थी. उसमें भी जो डेट थी 22/6/1988, that was never changed.
ये डेट 22/6/1988 साइक्रोसेंट है, ये कभी चेंज नहीं हुई। जो इस दिन थे उन्हीं को ही टीएसएम का स्टेटस मिलना चाहिए। इसके बाद वाले को अगर किसी को दिया है टीएसएम का स्टेटस, दैट इज रॉन्ग। I think I was seeing the list here. BA head Tejpur is there. This one, हाँ. हाँ, तो Mr. Salil, you are here. You might be having a court case in Tejpur. हाँ, 98 लेबर्स का हाँ, है. 98 लेबर्स का था। उसमें जो गलती हुई थी, that is what I was pointing out here. उसमें भी all those people who were engaged after 1988, but हम लोगों ने कहीं पे भी ये प्रूव नहीं कर पाए कि 1988 में नहीं थे। Rather we went to the court कि भाई हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि ये कब आए। Rather we could not say clearly कि भाई ये 1988 में नहीं थे। हमने ये कहा कि हमें यही नहीं पता कि ये कब आए। So that is not acceptable in court. वो चीज कोर्ट में नहीं चल सकती। अगर हम ये कहते हैं कि भाई ये कब आए और हमें पता ही नहीं है, we are not able to give any proof. That was one of the main reasons that why we lost that case. And now as you know that around some कितने अभी 97 है, कितने हैं? 98 है. हाँ, उसमें कुछ 98 रिटायर भी हो गए हैं और उनका एरिया बहुत बन रहा है. हाँ, so that is the point I was trying to make here कि अगर हम लोगों को रूल उसी टाइम पे पता होता क्लियरली कि भाई ये रूल है, तो हम उनको वहीं पर ही, और लोअर कोर्ट में हमेशा आसान होता है। अनदर थिंग आई वुड लाइक टू एम्फसाइज टू एवरीबडी एल्स, जैसे आप हायर कोर्ट में जाते जाओगे ना, केस उतना डिफिकल्ट होता जाएगा। इट इज ऑलवेज इजी टू डिफेंड अ केस इन कैट। CAT are more prone to the government orders. They are not analyzing the order, they are not giving their opinion on the orders. Most of the time CAT की ये responsibility होती है, ये CAT अपना jurisdiction वहां तक रखता है कि ये order सही implement हुआ या नहीं हुआ। Whereas High Court and Supreme Court have that authority to interpret that order. Whether that order is correct as per law or not, they can interpret that part also, but CAT doesn't have that right. CAT simply says कि भाई ये ऑर्डर था आपका, ये ऑर्डर ठीक से इंप्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ। तो इसलिए इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू डिफेंड द केस वेरी इफेक्टिवली इन कैट। अगर हम कैट से हार जाते हैं तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उसको डिफेंड करना। केस हमारे वहां भी है। उसमें 1999 में एक लेडी थी जो कि जिसे टीएसएम में स्टेटस मिला था। लेटर स्टेज में 2001 में वो रेगुलर हो गई। ओके। अब उसके बाद वो रिटायर हो गई। नाउ शी इज क्लेमिंग कि उसे पेंशनरी बेनिफिट्स मिलने चाहिए। हमारे वहाँ ये स्टैंड लिया गया है क्योंकि उसका रेगुलराइजेशन 2001 में हुआ, वो उसे फिर बीएसएनएल रिक्रूटी माना जाएगा और इस हिसाब से शी इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर पेंशन। तो मतलब यही स्टैंड होना चाहिए ना सर? नहीं, मतलब whether she is now in some court case or she is now just she is claiming सर, मतलब वो रिटायर होने के बाद तो उसने बहुत बार अपना पेंशन केस भेजने के लिए सीसीए को कहा है। एक्चुअली वो अभी नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे उस तरह के केसेस भी। तो अपने पैनल पे एब्जॉर्प्शन ऑर्डर तो उसका पीओ निकला हुआ है क्या? देखो अगर पीओ गलत भी निकला है, पैसे दिए हमने सीसीए को फ्री के और पेंशन डिनाई करके उसको 40 लाख रुपए पीएफ के दोगे? अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारा पीओ गलत निकला है, विदाउट गोइंग इनटू फर्दर डिटेल्स आई कैन जस्ट एडवाइज यू कि पहले तो उस पीओ को कैंसिल कराना है। जब तक वो पीओ है तब तक उसका लीगल राइट बनेगा। अगर वो पीओ इशू हुआ है तो उसका लीगल राइट बनेगा। अगर आपने गलत किया है, एक पीओ कैंसिलेशन के लिए सर सर्किल को भेजा हुआ है केस। हाँ, वो 40 लाख रुपए 20 साल लगेंगे कम से कम पीएफ के। आपने पीएफ दिया नहीं 20 साल, उस पर इंटरेस्ट लगेगा, पेनल्टी लगेगी, पेंशन को वहां से मिलेगी। वो पार्ट में अभी आऊंगा, मेरी एक स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में है उसके वो वाला पार्ट है। निकला है, चुपचाप दे दो उसको पेंशन, सीसी भी कुछ नहीं बोलेगा। ये 30 लाख रुपए दे दो, 20 साल का तुम्हारा क्या जा रहा है? एब्जॉर्ब भी तो हम जैसे लोग हैं। नहीं, दैट पार्ट इज देयर, वो अभी मेरी एक आगे एक स्लाइड में है जो आप कह रहे हैं कि भाई उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं क्या नहीं है उसके। तो दैट पार्ट इज देयर, दैट आई विल डील, वो उसमें कोई इशू नहीं है। बट अगर आपका देखिए पीओ निकला हुआ है ना, तो आप उसको लीगली डिनाई नहीं कर सकते अगर पीओ निकला हुआ है तो। तुम बाबू हो, बाबू है पीओ तो वो बाबू आज है, भी तुम निकला एक्शन होगा भी ना। करो यार।
पीओ तो निकला हुआ होगा 2003 या 2001 या 2 के आसपास जब भी हुआ होगा, आज तो नहीं निकला हुआ वो पीओ। हाँ हाँ, 2005 का निकला हुआ है, तो उसको तो ऐसा नहीं है ना कि भाई वो किसी ने जानबूझ गलत निकाल दिया है। वो अगर उस टाइम पे निकला हुआ है, एक बार एनालाइज करके देखिए उसको। अगर वो पीओ निकला हुआ है तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। फिर आपको अगर डिनाई करना है तो पहले आपको पीओ कैंसिल करना पड़ेगा। द मोमेंट आप पीओ कैंसिल करेंगे, वो आपके उस एक्शन के अगेंस्ट में कोर्ट जाएगी। सिमिलर केस एक हिमाचल और उसमें पंजाब में भी है, जिसमें कि कुछ लोगों का पीओ डीओटी ने कहा कि भाई इनका गलत है, ये बाद में बने हैं। वो खैर वो तो सब्सिक्वेंट उसके भी काफी बाद के थे जो आप बता रहे हो डेट। वो लोग भी कोर्ट में गए थे। उस में भी कोर्ट में से भी एक संजय कुमार के नाम से एक केस है जो कि हिमाचल हाई कोर्ट में, फिर सब्सिक्वेंटली सुप्रीम कोर्ट में भी वो दैट वेंट अगेंस्ट दैट, अगेंस्ट मतलब बीएसएनएल. So I will come to that part also. Now the conversion of PTCL to FTCL. PTCL means part-time casual laborers and FTCL means full-time casual laborers. ये सर FTCL FTCL देखिए, अगर वही मैंने आपको शायद बोला था, अगर आप CLE लिख रहे हो ना, कैजुअल लेबर, unless and until it is qualified by part-time, it is assumed to be casual laborers, full-time only. FTCL पहली बार किसी जगह दुनिया में देखा है 33 साल की नौकरी में। नहीं, इसका सिग्निफिकेंस है इसका। नहीं मतलब किसी ऑर्डर्स में नहीं है DOT के या BSL के। नहीं, DOT के ऑर्डर्स में है। ये जो मैं ऑर्डर्स रेफर किया हुआ हूँ ना, FTCL। हाँ FTCL, ये जो ऑर्डर्स रेफर किया हूँ इनमें आप देखिएगा। DOT ने जो लेटर निकाला था 1999 में, इट अलाउड लीगली एंगेज्ड पार्ट टाइम कैजुअल लेबर्स वर्किंग विद मोर देन 4 hours टू बी कन्वर्टेड टू फुल टाइम कैजुअल लेबर्स, subject to, again it was not a blanket approval. It has certain conditions attached to it, that is defined number of conditions, namely working for 240 days in preceding 12 months. Vacancies in Group D was also one of the conditions, and this is a very important condition. Again, DOT in 2000 allowed the legally engaged PTCL working with less than 4 hours per day to be converted to full-time casual laborers, subject to a defined numbers of condition. Again with 240 days and 12 months and vacancies available. जहां पे भी ना कन्वर्जन की बात आएगी पार्ट टाइम को फुल टाइम में, वहां पे हमेशा वर्ड FTCL और PTCL आएगा। कैजुअल लेबर कैजुअल लेबर ही सुना था, PT पार्ट टाइम आइटम ही सुना था। नहीं होगा आपको, पार्ट टाइम है, देयर आर, आप एक्सपर्ट हो, आपको पता होगा। जहां पे भी कन्वर्जन के लिए कोई ऑर्डर होगा ना कि जिसमें आप कन्वर्ट कैसे करोगे पार्ट टाइम को फुल टाइम, वहां पे ये दोनों टर्म आएंगे। हमने जो नॉर्मल फील्ड में मैंने अभी तक सुना है, बाकी वो TSM और RM। एक्चुअली वो इसलिए आपने इसलिए देखा है कि मोस्ट ऑफ देम हैव बीन कन्वर्टेड टू FTCL। हैं अभी भी PTCL कुछ जगह पे हैं। अगर आपने उस जगह पे काम नहीं किया या आपने उनके थ्रू में नहीं आए है, इनको 12-15-14 हज़ार मिल रहा है इनको केवल। हाँ, उनको वो डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ आवर्स कितने के लिए एंगेज हुए हुए बहुत हैं, कम मिल रहा है उनको। तो वो है पार्ट टाइम कैजुअल लेबर्स, अभी भी है कुछ जगह। बट हाँ, वो है, वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपने उस BA में या उस पे काम किया है कि जहाँ पे है, तो आप अवेयर होंगे। उनको नहीं इतना पता है कि इन लोगों को 15-20 हज़ार मिल रहे हैं, ये 12-15 हज़ार मिल रहे हैं महीने के बस, और कुछ मिल ही नहीं रहा उनको। अब उसमें अगर आप डिटेल में जाएंगे कि उनके कितने घंटे की है, तो फिर समझ वो आ जाएगा। नाउ दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स, और इस चीज को, इस सर्कुलर को जब भी आप यूनियन से बात करते हो तो इस सर्कुलर को वो काफी एम्फसाइज करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है, व्हाट इज दिस सर्कुलर एंड वेदर इट इज एप्लीकेबल इन टुडे सर्कमस्टांसेस और नॉट। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट सर्कुलर. Just a day prior to the corporatization or prior to the formation of BSNL, DOT issued an order on 29/9/2000 to regularize all the casual laborers, including the TSMs working in the department, subject to availability of post, of course, in the following priority. ये उसमें first, second, third, fourth जो लिखी है, this is the order in which they were to be regularized. All casual laborers who have been granted TSM status, they were to be regularized. All full-time casual laborers as per the annexure attached therein, there was an annexure attached to that, उसमें सर्किल वाइज हर एक की पोस्ट दे रखी थी कितनी कितनी है उस annexure में। फिर थर्ड नंबर पे आते थे जो PTCL थे, जो 4 hours or more, those were converted into FTCL by that letter which was I was telling earlier in 1999, wide letter 25/8/2000, and fourth priority was of all IAs and supervisors who were converted into FTCL.
नाउ द क्वेश्चन अराइज कि भाई अगर 2000 में एक ये ऑर्डर निकल गया था और हमें इनको सभी को, इसके अलावा हमारे पास कोई और कैटेगरी ऑफ कैजुअल लेबर थी भी नहीं, है भी नहीं, आज भी नहीं है, तो स्टिल व्हाई देयर आर कैजुअल लेबर्स विच आर स्टिल देयर, हमारे पास क्यों है, हम क्यों उनको रेगुलराइज नहीं कर पाए, या ये ऑर्डर आज की डेट में भी एप्लीकेबल है या नहीं है? दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ जो मैंने आपको पहली स्लाइड में कहा था कि दो चीज ध्यान रखिएगा, एक डेट 96 और एक इलीगली अपॉइंटेड। अब वो चीज इस यहाँ पे रेलिवेंस में आती है। 2006 में there was a judgment by a honorable Supreme Court which is properly known as Uma Devi judgment. उसमें it was between the state of Karnataka versus the lady, this is Uma Devi, और इस judgment को popularly it is known as Uma Devi judgment. This judgment held that the scheme of regularization on the basis of continuity of service shall not be enforced by any state or instrumentality anymore, as such practice is in violation of Article 14, Article 16 of the Constitution of India. Thus, all schemes of regularization of casual laborers in DOT and BSNL has become ultra virus. It is by virtue of this judgment and the judgment it pronounced that which says that the regularization simply on the basis of the continuity of the service. Continuity of the service means कि भाई इसने as a casual labor this person has been engaged for more than 10 years or something like that, so he has to be regularized automatically. Supreme Court hold a ban to that. They said that no, it is not in consonance with the Article 14 and Article 16 of the Constitution. Article 14 and 16, as you all know, is regarding the equality. आपने किसी एक आदमी को रखा, उसको तो आपने रेगुलर कर लिया, बट ही इज होल्डिंग अ पब्लिक पोस्ट. एंगेजमेंट ऑन एनी पब्लिक पोस्ट कैनॉट बी डन बाय अ बैकडोर स्कीम. आपके पास कोई एक स्कीम है और आपसे कहा भाई मैं तो ये पहले 3 आदमी या 10 आदमी या 100 आदमी या 50 आदमी जितने भी XYZ हैं, इनको मैंने पहले रखा हुआ था, अब इनको 10 साल हो गए कैजुअली काम करते करते, तो मैं इनको रेगुलर कर दूंगा. कोर्ट सेड नथिंग डूइंग. आपको अगर किसी को कोई पोस्ट आपको फुल ये रिक्रूट करनी है पब्लिक एंटिटी होते हुए, तो आपको उसको एडवर्टाइज करना है, सबको मौका देना है. दैट इज वेयर आर्टिकल 14 कम्स इनटू द पिक्चर के इक्वालिटी, जो भी उस पोस्ट के लिए एलिजिबल है सबको मौका मिलना चाहिए. ऐसा नहीं कि भाई आपने किसी को एंगेज कर रखा था और आज आप उनको उस पोस्ट का एक जस्ट एक नेचुरल हायर बना देते हो. इट इज नॉट लाइक दैट. Important point here is that after the formation of BSNL, BSNL has not recruited any casual labor. जो हमारे पास है ये सब विरासत में मिले हुए हैं. जितने भी हैं, ये जितनों को हमने रेगुलराइज किया है, that number is really very high. तो वो all were converted from DOT to or they have came from DOT to BSNL. BSNL by itself has not engaged any casual labor, nor it has any such scheme even as on date for regularization of casual laborers. The eligible casual laborers which were engaged during DOT time have already been covered by the schemes formulated by DOT. No new claims are to be entertained in this regard. But this Uma Devi judgment, जो बीच में मैंने second para लिखा है, इसको देख के लगता है कि now the story ends here, कि इसके बाद तो कुछ हो नहीं सकता है, यहाँ पे खत्म हो गई होगी ये चीजें सारी. But it was not like that. इस स्कीम में भी या इस जजमेंट में rather, it is not a scheme, it is a judgment. इस जजमेंट में उन्होंने एक एक्सेप्शन दिया सुप्रीम कोर्ट ने. द एक्सेप्शन इज दिस अंडर पैरा 53 ऑफ दिस जजमेंट, which has to be read along with the other 2 judgments that I have mentioned is ML Kesri and others. It says that in view of the constitutional scheme of equality as contained in Article 14 and 16 of the Constitution of India, regularization or permanent continuance of temporary, contractual, casual, daily wages or ad hoc employees in public employment deholds the constitutional scheme is impermissible or illegal in law. Now, there are 2 things that came out of this exception in the para 53. One is the term that I already told you is illegal. The other term was irregular. Para 53 में उन जो irregularly appointed लोग थे, उनको इन्होंने one time relaxation दिया. इनको कहा कि भाई जो आपने irregularly अगर कोई अपॉइंट कर रखा था,
तो उसको आप रेगुलर कर सकते हैं. This was an exception. And now what irregular appointment means? Irregular means the person have the requisite qualification as per the recruitment rule. He must have been engaged against a duly vacant post or a sanctioned post and has been working for at least 10 years as on 10/4/2006 without protection given under any interim orders or tribunal of the code. That means that he is working with this condition that he is having the requisite qualification as per the recruitment rule. He is engaged against a duly sanctioned post and he has been working for 10 years as on 10/4/2006. But it was his continuance in the service of 10 years is without any protection by some orders of the court. These were the things which was, these exceptions was there in para 53 of the Uma Devi. Now, why I am highlighting this irregular term here is because in most of the cases, the recently, मतलब आज की डेट में भी उस तरह के cases आ रहे हैं, which are now being dealt by this labor tribunals. लेबर ट्राइब्यूनल क्या कर रही है कि इस पैरा का 53 पैरा को यूज करके वो हमारे यहाँ जो भी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू भी अपॉइंटेड थे, कैसे भी थे, अपॉइंटमेंट थे, वो लोग उनके पास चले गए और फिर लेबर कोर्ट ने उनको रिलीफ दे दिया इस पैरा को यूज करते हुए, पैरा 53 को. तो आवर जॉब हियर इज दैट जब भी लेबर कोर्ट में ऐसा केस है तो इस पैरा 53 को हमें दिखाना है कि इन लोगों के ऊपर जो अभी लेबर कोर्ट में है ये पैरा 53 एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस और रादर आई एम प्रिटी श्योर 100% ऑफ द केसेस ना तो उनके पास आरआर के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन होगी, ना उनका जो रिक्रूटमेंट हुआ होगा वो किसी सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट हुआ होगा. तीसरा पॉइंट हो सकता है कि उन्होंने कंप्लीट किया हो 10 साल की सर्विस, इज क्वाइट पॉसिबल as on 10/4/2006, but they will not be having the requisite qualification as per the recruitment rule, nor they have been engaged against the duly vacant sanctioned post. But the responsibility to prove this lies upon us. हम लोगों को ये प्रूव करना है कि भाई ये दोनों चीजें उनके ऊपर एप्लीकेबल मतलब ये फुलफिल नहीं करते हैं, इसलिए पैरा 53 is not applicable for them. Because this para 53, if there is somebody from Uttaranchal circle or आई थिंक इन झारखंड ऑल्सो एक कुछ जजमेंट आए हैं और काफी उन्होंने रैम्पेंट लोगों को इसके लिए रिलीफ दिया है. सम अराउंड 400-500 पीपल हैव बीन गिवन रिलीफ इसके अगेंस्ट में, सिंपली पैरा 53 को कोट करते हुए. नाउ व्हाट डज एन इलीगल अपॉइंटमेंट मींस? Illegal appointment means any person who have been engaged as a casual labor after the imposition of ban. Imposition of ban means that 22/6/1986 date. Any person who have been engaged after that is an illegal appointment. उमा देवी में जो रिलीफ था वो सिर्फ इरेगुलर अपॉइंटीज को था, इलीगल अपॉइंटीज को कोई रिलीफ नहीं दिया था उमा देवी जजमेंट में. Those who are engaged without there being any vacant or sanctioned post, he does not have the requisite qualification, and those who are continuing due to the strength from some derived from some interim orders of the code. These cases all are under illegal appointees. Illegal appointees are not given any relief by the Uma Devi judgment. Since at that point of time, I am talking about in 2006 or 7 में काफी हम लोगों के cases थे जिसमें कि हम लोग regularize कर रहे थे, जो लोग casual laborers आए थे DOT से. All of a sudden after this judgment, it was a ban और एक तरह से उनको सबको रोक दिया गया. कुछ थोड़ा एजिटेशन भी हुआ, कुछ लोगों ने यूनियंस ने और उन लोगों ने काफी उसको एजिटेट भी किया. Then corporate office and DOT both referred the matter to the then ASG, this attorney solicitor, additional solicitor general, and then the learned attorney general also was referred to this matter. Both of them opined that this letter, this is dated 29/9/2000, enforced by BSNL as one-time measure, cannot be applied anymore either prospectively or retrospectively for regularization of remaining casual laborers as they fall under the category of illegal appointees. Subsequently, after the clarification was given to BSNL, DOT also took the same clarification
from Attorney General of India. And he have also opined the same thing. So in nutshell, today, the letter which was issued on 29/9/2000 does not hold any legal sanctity today. बिल थे अगेंस्ट सैंक्शन पोस्ट तो थे नहीं, तो सारे टीएसएम इलीगल हो गए, बिल्कुल 84 के पहले भी इलीगल हो गए। लेकिन उससे पहले जिनको आप रेगुलराइज कर चुके थे, इस जजमेंट में भी था वो। नहीं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो 84, 83, 82 में जो थे, 84, 85 में, और जो सैंक्शन पोस्ट के तो अगेंस्ट कोई टीएसएम था ही नहीं, तो सब इलीगल हो गए। नहीं 84, 83 के नहीं थे, जब आपने बैन लगाया उसके बाद के थे, क्योंकि 84, 83 के नहीं, जो मतलब लोग थे- चारों एक साथ पढ़ेंगे, हाँ तो चारों एक साथ पढ़ेंगे तो बैन के बाद जो भी टीएसएम, बैन के पहले, हाँ बैन के पहले टीएसएम बने, और मैं वो आपके आपकी भाषा में कैजुअल, आई गॉट योर पॉइंट। आप कहना चाह रहे हैं कि 86 से पहले मान लो कोई कैजुअल लेबर हमने रखा वो अगेंस्ट अगेंस्ट वैकेंट पोस्ट नहीं था, अगेंस्ट वैकेंट पोस्ट नहीं था, हाँ तो उन सब के भी अपन वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर कैंसिल करने चाहिए। नहीं वही वही मैं आपसे उसी चीज पर ना, दो चीजें हैं इसमें, दो कैटेगरी डिफरेंट हो जाएंगी। एक कैटेगरी है कि जिनको आप रेगुलराइज कर चुके, नहीं, उनको उनको हमने रेगुलराइज भी नहीं करा, रेगुलराइज भी 2000 के बाद करा। नहीं वही मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इसके उमा देवी जजमेंट के आने के बाद तो आपको उनको रेगुलराइज करना ही नहीं था, अगर उनमें से ये कोई भी 4 कंडीशन। नहीं, उमा देवी तो कंडीशन चलो छोड़ दें, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, तो हमने सपोज 84 में आया और 2002 में रेगुलराइज करा, तो उसका प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकल गया, है ना, तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकल, from where he is getting that strength to draw the presidential order, that was from the order 29/9/2000। उससे 29/9/2000 का ऑर्डर एनफोर्स्ड था 2002 में, इलीगल हो गया अब हुआ ना 2006 में। नहीं, अब किसी भी जजमेंट का आप रेट्रोस्पेक्टिवली इम्पैक्ट नहीं आप तो क्या रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आएगा इसका? रेट्रोस्पेक्टिवली मींस के यहाँ पे जिनको आपने नहीं किया, रेट्रोस्पेक्टिवली मींस के अगर आप जो आप ये केस बता रहे हो ना, गॉट योर पॉइंट। अब 2 पॉइंट है कि किसी को हमने गलती से नहीं करा, कि होना चाहिए था, हाँ उसके से क्या होगा? वही मैं कह रहा हूँ, लेफ्ट आउट केस है, अगर लेफ्ट आउट केस है ड्यू टू एनी रीजन, चाहे इट वाज आवर मिस्टेक या वो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिले या वो, उसको अब आप नहीं करोगे, लेफ्ट आउट केस है तो। लेफ्ट आउट केस में उसकी उस मजदूर की गलती है नहीं, हाँ कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है तो उसमें। मतलब तो लीगली जज क्या कहेगा इस बारे में? देखो आपके दो लेकिन- अप्रोच हैं, एक आपका लीगल एंगल है और एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल है। बात कर रहा हूँ लीगल की बात कर रहे हो तो ही इज नॉट एलिजिबल, हाँ, ही इज नॉट एलिजिबल। लेफ्ट आउट केस में उसकी गलती नहीं है। हाँ उसकी गलती, अब आप ह्यूमैनिटेरियन एंगल पे नहीं, आ नहीं, गए। मैं कि लीगली उसकी गलती नहीं है। मैं लीगली बोल रहा हूँ, लीगली बोल रहा हूँ कि लीगली किसी को लेफ्ट आउट है, हाँ। गलती उसकी नहीं, तो लीगली क्या होगा? लीगली ये होगा कि इज नॉट एंटाइटल्ड। मैंने जज बोलेगा कि इज नॉट एंटाइटल्ड। हाँ, ही इज नॉट एंटाइटल्ड। अगर ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, 2006 तक वो रेगुलर नहीं हुआ, और ऐसे केसेस जो आप बता रहे हैं एक्चुअल में भी हैं, पहले वाले नहीं, मतलब फिर ऐसे cases नहीं, हैं। तो जज जो है ये मान के चल रहा है कि गलती करके प्रताड़ित करो तो इट इज लीगल। गलती करके प्रताड़ित नहीं, मत करो। आपने इट इज एग्जैक्टली लीगली तो एक है कि उसकी जिसकी गलती नहीं है उसको सफर नहीं करना चाहिए, हाँ बस लीगल तो ये कहता है। नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल सही है। चलो वाले कुछ और बोलते हैं, लीगल कुछ अलग बोलता है। छोटा सा क्लैरिफिकेशन चाह रहा था हाँ। कि एक बंदा रेगुलराइज नहीं हुआ लेकिन उसको सारे बेनिफिट मिल गए, ही बिकम टीएसएम के बाद जो भी, हाँ टीएसएम के बेनिफिट मिल रहे हैं वो कंटिन्यू है। नहीं टीएसएम के बाद वो जो 80 आरएम बन गया, तो उसको रेगुलर हो pension गया, बन आरएम बन गया तो रेगुलर हो गया। लेकिन उसका कुछ ऑर्डर नहीं था, तो उसको जो 1.5 साल की सर्विस का बेनिफिट नहीं मिला, वो 50% का सर्विस का जो बेनिफिट उसमें लिखा नहीं हुआ। देखिए, आरएम बना, आप ऐसे केसेस हो सकते हैं कि वो बिना टीएसएम बने भी आरएम बन गया हो, हाँ दैट इज क्वाइट पॉसिबल। आप कैजुअल लेबर से डायरेक्ट आरएम भी बन सकते हैं, दैट इज, उसके लिए कोई बार नहीं था उस टाइम पे भी। उस केस में उसकी जो कैजुअल लेबर वाली जो सर्विस होगी, दैट इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर पेंशन के लिए, उसका 50% पेंशन के लिए एंटाइटल्ड नहीं है। यू गॉट द पॉइंट। मान लो कोई आदमी किसी पीरियड के लिए वो 10 साल 15 साल या 20 साल वो कैजुअल लेबर रहा, उसके बाद वो आरएम बन गया बिना टीएसएम बने वो आरएम बन गया। आरएम बन गया तो उसका जो कैजुअल लेबर वाला पीरियड था वो उसका कुछ नहीं होगा, उसका मतलब पेंशन रिप्रेजेंट किया कि भाई मैंने भी 10 साल सर्विस की फ्रॉम 85 to 95। हाँ, लेकिन अगर टीएसएम नहीं बना, क्योंकि वो देखिए आप उसकी 50% जो सर्विस है वो कैसे ले रहे हो, ड्यू टू सर्टेन स्कीम, टीएसएम स्कीम। वो टीएसएम स्कीम में एंटर हुआ या नहीं हुआ, अगर वो टीएसएम स्कीम का पार्ट ही नहीं था तो उसको तो नहीं आप वो बेनिफिट दे सकते ना टीएसएम स्कीम का। लेटर सारे हैं कि वो टीएसएम था, टीएसएम उसको रेगुलाइज नहीं किया गया, लेकिन उसको आरएम बना दिया गया।
आरएम बनाने से, आरएम बना दिया तो रेगुलराइज तो कर दिया ना। चलिए ठीक है। मैं जहां तक समझ रहा हूँ ना, जो आप केस कहना चाह रहे हो वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जो आप, आई थिंक इफ आई एम गेटिंग इट राइट, वो केस है, मैं आपको शायद पता नहीं किसी अगली स्लाइड में है या नहीं है, बट सिंस यू हैव रेज दैट इशू, वो इशू क्या है कि कुछ लोग ऐसे थे कि जो बिना आरएम बने वो डायरेक्टली टीएसएम थे। उन्होंने जब बीएसएनएल बना तो 2005-6 में थे ऐसे ज्यादातर लोग। उन एक हमने एग्जाम कंडक्ट कराया टीटी का, उसमें हमने एग्जाम में, आज भी है वो प्रोविजन, आज भी है रिक्रूटमेंट रूल्स में, कि उनको हम एग्जाम देने के लिए एलिजिबल करते हैं कि आप एग्जाम में बैठ सकते हो। वो एग्जाम में बैठे, वो लोग एलिजिबल, वो क्लियर कर गए एग्जाम को और वो टीटी बन गए। टीटी बन गए इसका मतलब एक कॉमन सेंस बोलती है कि भाई वो रेगुलराइज हो गए। बीएसएनएल में जब आपने उनको एक पोस्ट पे ले आए टीटी के, तो आप रेगुलराइज हो गए। तो अब आपने जो भी अपनी एक कैजुअल लेबर वाली या टीएसएम वाली जो आपने सर्विस करी है, इवन टीएसएम भी उसमें कुछ रेगुलराइज होके वो मतलब एग्जाम देके टीटी बने हैं। टीएसएम जो बने हैं वो करीब, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सम अराउंड 480 के लोग हैं पूरे हिंदुस्तान में, 480 ऐसे लोग हैं जो उस एग्जाम के थ्रू या किसी भी एग्जाम के थ्रू वो टीटी बने, लेकिन वो कभी भी आरएम नहीं बने थे, वो टीटी बने थे। तो उन लोगों का भी ये क्लेम था कि भाई जब आप एक आरएम बना रहे हो, मैं तो उससे एक एग्जाम देके कम्पिटिटिव मेथड से आया हूं, तो मुझे भी आप उस सर्विस का बेनिफिट दो पुरानी वाली का, मेरी भी आप पेंशनेबल करो सर्विस। लेकिन डीओटी ने उसको एग्री नहीं किया। नहीं अभी नहीं, ये कह रहा है कि जो टीएसएम वाला पीरियड था उसके 50% को इनके कोई बाबू अभी कर रहे हैं। तो टीएसएम नहीं बना होगा, या वो टीएसएम का जो डॉक्यूमेंट है वो प्रूव नहीं कर पाएगा। अगर टीएसएम है तो पक्का मिलेगा। देखो पेंशन मिल रही है 50। उस वक्त जब ये एब्जॉर्प्शन हो रहा था तो उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे, फिर उसने अपना मस्टर रोल सबमिट किया और फिर उसने पुराने कोई लेटर वेटर थे उसमें उसका नाम है, सब कुछ है, बट वो रेगुलराइज नहीं हो सिर्फ पाया। एक चीज चाहिए होती है, वो टीएसएम उसका जब वो बना होगा टीएसएम वाला ऑर्डर। अगर तो उसमें टीएसएम वाला 5 ऑर्डर है तो हाँ। आज भी आप सीसीए को देके वो सर्विस का 50% ऐड करा सकते नहीं पेंशनेबल तो है ही। नहीं नहीं, बंद नहीं होगी पेंशन, तो बंद नहीं होगी। नहीं नहीं, नहीं, पेंशन हमने बंद रेफर नहीं किया होगी, कॉर्पोरेट ऑफिस लेकिन टीएसएम वाला ऑर्डर आपको ढूंढ के देना पड़ेगा। टीएसएम वाला ऑर्डर नहीं, फिर हमने एक वकील से उसका लीगल ओपिनियन लिया, देन ही टोल्ड कि आपने उसको सब जगह रिकॉग्नाइज किया है, तो आप उसकी सर्विस कैसे नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे। हर लेटर आपका आपको उसको सिंपली एक, देखिए पेंशन देना है या ना देना का, ये पेंशन कितने ऑलरेडी पार्ट मिल का रही है देने का नहीं, मैं आई एम कमिंग टू दैट। वो जो है वो सीसीए की होती है। हम अगर चाहे भी तो भी नहीं दे सकते, हम अगर ना भी चाहे तो भी उसकी रोक नहीं सकते। अगर सीसीए को क्या चाहिए होता है, सीसीए में जो मैं आपसे आपका पॉइंट समझ रहा हूँ, सीसीए बिल्कुल उसको दे दे, प्रोवाइडेड आप उसको टीएसएम वाले जो ऑर्डर निकला होगा उस टाइम पे उसकी कॉपी दे दीजिए, टीएसएम वाला वो सीसीए दे देगा पक्का। Now this is what I was talking about. जो आज की डेट में सम इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स या सीजीआईटीज हैं, वहां पे हमारे केसेस आर नॉट बीइंग हैंडल्ड प्रॉपर्ली। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में देयर इज अ सेक्शन 25F जिसमें कि मेथड दिया हुआ है कि हम किसी को अगर रिट्रेंच करना चाहें तो क्या मेथडोलॉजी है, हम किस तरह से उसको रिट्रेंच कर सकते हैं। सेक्शन 25 में वो पूरी मेथडोलॉजी दी हुई है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के। इसके बेसिस पे हम लोग निकालते हैं, अगर किसी का हमारे पुराने केसेस है तो इसके बेसिस पे हम लोगों ने कुछ निकाले भी हैं पहले। नंबर 30 इसके बेसिस पे जो लोगों को निकाला है उनके पास एक राइट होता है कि वो इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में चले जाएं और अपना केस वहां पे डिफेंड करें। वहां पे जनरली डिफेंड करते हुए क्या आता है, बड़ा एब्सर्डिटी है कि कई केसेस में तो इवन यहाँ तक भी इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर किए हैं कि आपने इस सेक्शन 25F का ये वाली चीज फॉलो नहीं करी, इसलिए ये सेक्शन 25F इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। वो वाली चीज क्या है कि सेक्शन 25F में अगर कहीं लिखा हुआ है कि आपको ने जब 25F का उसको नोटिस दे रहे हो, उस नोटिस की एक कॉपी आपको जो वहाँ का ये लेबर ऑफिसर है उसको देनी है, या लेबर डिपार्टमेंट है उसको देनी है। अगर आपने उसकी कॉपी नहीं दी तो कई जगह सीजीआईटी ने आपका पूरा 25F का जो ऑर्डर है, ये जो प्रोसीडिंग्स आपने 25F के अंडर की हैं, दोज वर रिट्रेंच्ड और उसको आपको वापस लेना पड़ा। तो हमारे लिए
वो ये हो गया कि जब आपने उसको वापस रखा किसी आदमी को, तो हमें उसको सारी बीच के पीरियड की वेजेस वगैरह सब कुछ दोबारा देने पड़ते हैं। इस केस में, इन वन ऑफ द केस दैट इज पॉपुलरली नोन एज भारूमल केस, वी वेंट अप टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इस भारूमल केस में, और ये जो जितने नीचे 4 केस लिखे हुए हैं, इन सब केसेस में ये जजमेंट दिया कि आपको ऐसे केसेस में अगर कहीं पे कोई कॉम्प्लायंस सेक्शन 25F का नहीं हुआ है, तो आपको उस आदमी को दोबारा रीइंस्टेट करने की जरूरत नहीं है। यू कैन गिव देम द कंपनसेशन। हम लोगों को ज्यादातर कोशिश ये करनी चाहिए, अगर आपको लगता है, देखिए पहली चीज मैंने आपको बताया, जब इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में जाएं तो पहली चीज तो हम ये उनको एम्फोसाइज करें कि ये पैरा 53 का जो एक्सेप्शन है उमा देवी का, उसमें ये फिट नहीं होता है। उसके बाद भी आपको लगता है कि भाई हाँ, अगर ट्राइब्यूनल इंक्लाइंड नहीं है आपकी बात सुनने के लिए, फिर भी वो कह रहा है, तो आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि भाई आप इसको रीएम्प्लॉयमेंट के लिए मत बोले, आप इसको कंपनसेशन के लिए दे दिए। कंपनसेशन का एक डिफाइंड फॉर्मूला होता है, उसमें कंपनसेशन इन लोगों को जो जनरली मिलता है दैट इज नॉट वेरी हाई, इट इज सम 50-60,000 रुपीज या 1 लाख रुपए तक, इतने तक मैक्सिमम कंपनसेशन मिल जाता है। तो यू कैन वेरी वेल एनालाइज कि भाई अगर उसको नौकरी पे रखें या उसको 1 लाख रुपए दे के केस को क्लोज कर दें, तो विच वन इज अ बेटर ऑप्शन। तो हम लोगों को अपने केसेस में हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि, और स्पेसिफिकली ये जो 4 जजमेंट हमने इसमें लिखा है, इन 4 जजमेंट को साइट करते हुए इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में कि साहब इन पे अगर आप नहीं इनको ये कुछ रिलीफ आप इनको अगर देना चाहते हैं, दैट कैन ओनली बी इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन, नॉट एनीथिंग एल्स मोर देन दैट। This is the case which I was referring, that BSNL versus Bharumal case. इसका जो इसमें भी जो इशू था, दैट वाज द वायलेशन ऑफ सेक्शन 25 ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, एंड फाइंडिंग वाज दैट वन टाइम कंपनसेशन इज द ओनली रिलीफ where there is a mere violation of section 25 of Industrial Dispute Act 1947. Reinstatement along with continuity is no longer valid as there has been a shift in legal position consequent to the judgment in Uma Devi. आपने अगर उमा देवी जजमेंट को इम्प्लाई वो इन्वोक किया है, तो उस उमा देवी जजमेंट में भी ये कहा गया है कि भाई आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं होना चाहिए। दैट्स वाई इनको दोबारा रखने का कोई पॉइंट नहीं है, सिर्फ इनको एट द मोस्ट कंपनसेशन दे सकते हैं। इसमें सिंगल साहब आप जो पॉइंट रेस कर रहे थे, अगर आप इसको डिटेल में पढ़ोगे, उसका रिप्लाई भी इसी में ही इनबिल्ट है। जो आप कह रहे थे कि साहब उसकी गलती नहीं है, इसी में इनबिल्ट है। अगर आप इसको ये वो इसलिए नहीं है क्योंकि आप जो केस बता रहे हो उसमें बंदा काम नहीं कर रहा हमारे यहाँ। हाँ, तो मैं केस नहीं बता रहा नहीं, ये काम कर रहा था हमारे यहाँ। रीट्रेंचमेंट का मतलब ये हुआ, रीइंस्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि आप इसको रख रहे हो दोबारा। नहीं, हमारे तो जो मैं केस बता रहा हूँ कि 2 बंदे हैं, एक बंदा तो टीएसएम से आरएम हो गया, कृपा रही, एक पे कृपा नहीं रही, उसको ध्यान नहीं रहा, वो टीएसएम से आरएम नहीं हुआ, जबकि सब क्वालिफिकेशन थी उसकी, सब क्वालिफिकेशन सब कुछ था उसका, नहीं हुआ। अब वो जो आरएम नहीं हुआ उसकी गलती नहीं रही, अब हम स्टैंड ले रहे हैं कि अब इसका प्रेजेंशियल ऑर्डर नहीं निकलेगा, उसको पेंशन नहीं देंगे। मैं आपको वही तो बताना चाह रहा हूँ कि उसमें क्या है कि जो 2006 से पहले अगर आप कोर्ट के जजमेंट भी देखेंगे, दोज वर इन फेवर ऑफ जो आप कह रहे हैं, वो यही थे कि भाई आप इसको रखो, इन नहीं आदमियों को तो रखो। वो निकाला तो है ही नहीं उसको, रेगुलर करने की बात भी कर रहा हूं रेगुलर करने का भी इशू नहीं आया। मैं। उसका कोई साथ वाला तो रेगुलर किया ना आपने। नहीं, वो भी रेगुलर था, अब वो फोन मैकेनिक हो गया। नहीं, वो तो फिर मैंने जो आपको टीटी वाला एग्जांपल है वो अलग है, वो केस अलग है। बेसिकली क्या हुआ कि वो फोन मैकेनिक, आपको तो पता है ना इंदौर वाला केस, मैं आपसे वही बता रहा हूँ, वो रेगुलर हो गया, नौकरी डिफरेंट केस है। मैं उस पे आऊंगा, आपके उस केस पे आऊंगा मैं। तो वो रेगुलर भी हो गया, नौकरी में चिंता नहीं है उसको, लेकिन पेंशनेबल नहीं है उसकी, पेंशनेबल नहीं है उसकी सर्विस बस। पेंशनेबल नहीं है तो उसको तो वो बेवकूफ है। मैं तो समझा रहा हूँ फ्रॉम द डे वन कि 30 लाख 35 लाख रुपए ले बीएसएल से, काय को कोर्ट के पैसे खर्च कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए सिंस यू हैव रेज्ड दैट इशू, और वो क्या उसका वो जेल में भी है, उसका क्रिमिनल केस भी चल रहा है, साला वो तो वो खैर निकल गया तो वो साला पेंशन ही नहीं मिलेगी। वो तो बहुत समझा रहा हूँ आपके उसको। कॉरोलरी से डिफरेंट हो गई उसकी, बट जो आप चीज कह रहे हैं ना, मैंने आपको जब इनको मैंने बताया था, ये रिलेटेड केस नहीं है, मेरा केस बिल्कुल अलग है। नहीं मैं समझ गया आपका केस में, याद आ गया मुझे, याद आ जो गया आपने बताया था केस। वो जो है बंदा, उसके बाद वाले आरएम बन गए, वो आरएम नहीं बना और वो टीएम बन गया, उसको हम टीएम को कह रहे हैं कि बीएसएल का है, और उसमें उसकी गलती नहीं कोई। अब उसका जो मैंने इनको बताया था वो वही केस है कि भाई जो बंदा एग्जाम दे के अगर वो टीटी बन गया या फोन मैकेनिक बन गया,
आप उसको क्यों नहीं रेगुलराइज करेंगे? हर एक लॉजिक कहता है कि भाई उसको भी रेगुलराइज करना चाहिए, क्योंकि आपने उसके साथ वालों को औरों को रेगुलराइज किया। वो पहले ही आरएम वाले के लिए एलिजिबल था, 99 में था, हाँ बिल्कुल था, नहीं बना वो एक अलग बात है। 2000 में भी था, 2001 में भी था, नहीं आपने कभी इसको आरएम नहीं बनाया और 2002 में सीधे फोन मैकेनिक बना दिया। हाँ मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ, मैं भी आपसे वही चीज कह रहा हूँ कि हर एक लॉजिक ये कहता है कि भाई उसको भी मिलना चाहिए, लेकिन नहीं लीगल की बात नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं आपको एक बार लॉजिकल भी, हर एक लॉजिक भी यही कहता है कि उसको मिलना चाहिए। लेकिन इशू क्या है कि हमने वो केस डीओटी से एक बार नहीं दर्जनों बार टेकअप किया, क्योंकि जो चीज आप कह रहे हो वो हम लोगों को भी फील होती थी कि भाई ये केस बिल्कुल सिमिलर है, जब इसके साथ वाले को मिल रहा है क्यों नहीं मिल रहा है इसको। लेकिन डीओटी उस पर आज तक भी तैयार नहीं हुआ, उनका बिल्कुल क्लियर स्टैंड है कि ऐसे लोगों को मैं नहीं दूंगा जो आपके यहाँ फोन मैकेनिक बने हैं डायरेक्टली, उनको मैं नहीं दूंगा। मतलब बेसिकली मतलब कोर्ट से हमको फाइट ना करके कोर्ट में हमको कोर्ट को बोले कि तुम मैग्नेट आरएम बनाओ, पेंशन दो, खत्म, हम क्यों फाइट करते हैं उसे? नहीं देखिए ऐसा है, देखिए वी मतलब आर वर्किंग इन अ गवर्नमेंट सेटअप, we are आप अपनी we are working we एडमिनिस्ट्रेटिव are working मिनिस्ट्री for के अगेंस्ट BSNL, नहीं जा सकते। मतलब we are working for BSNL, we should see the interest of BSNL। नहीं लेकिन आप अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री के ऑर्डर्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते, आई विल नेवर वो एडवाइज वो यू। वो कहीं नहीं लिखा, आप जो कह रहे हैं ना, वो जो ड्यूटी कह रहा है वर्बली कह रहा है। नहीं नहीं राइटिंग में है, वो कोई ऑर्डर नहीं नहीं मिला सर, बिल्कुल है, कोई आपको ऑर्डर नहीं नहीं मिला मिला। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो आपको नहीं वो मिला बट इट डजंट मींस दैट इट डजंट एग्जिस्ट, हाँ वो ऑर्डर है, ऑर्डर के बिना नहीं हो सकता ऐसा। वो ऑर्डर नहीं है सर, नहीं है। नहीं नहीं 101% है, मैं आपको कह रहा हूँ 101% ऑर्डर है डीओटी का राइटिंग में, क्योंकि मैंने तो 10 फाइलें चलाई हैं उस पर, 10 के 10 फाइलों में लगा हुआ है वो ऑर्डर। लेकिन दैट इज एन ऑर्डर, बट स्टिल आई फील जो आप बात कह रहे हो वो आपकी बात में दम है कि लॉजिक है। चलने वाले केस में ड्यूटी ने कहा है कि बीएसएल में डिसाइड एट इट्स ओन स्टेज, उसे रिजेक्ट नहीं करा है। नहीं रिजेक्ट की बात नहीं है, वो उनको पेंशनेबल नहीं, देखिए बीएसएनएल कोई अथॉरिटी नहीं है कि इस आदमी को पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। नहीं, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के बारे में जो उसका केस ड्यूटी किया था, तो ड्यूटी ने रिप्लाई करा है कि बीएसएल में डिसाइड एट इट्स ओन लेवल, एट तो इट्स ओन लेवल बट विद रिजेक्ट क्यों नहीं करा? बट विद नहीं नहीं वो पहली बार किया था, दूसरी बार जब हमने उनको प्रपोज करके भेजा तो उन्होंने रिजेक्ट कर उसकी दिया, कॉपी नहीं आई है, उसको रिजेक्ट कर दिया। उसकी कॉपी नहीं आई। नहीं आपके पास नहीं आई, वो है, हाँ वो है लेकिन है, तो इट डजंट मींस कि नहीं कॉपी है। मिल जाएगी, वो बात है, वो जब मैं ट्रांसफर जाऊंगा इंदौर तब मिल जाएगी, ठीक है। वो इशू नहीं है, बट लेट अस कंटिन्यू। हाँ लेट अस कंटिन्यू, वो इशू नहीं है। नाउ दिस इज द रेगुलराइजेशन स्कीम के लिए जो और इम्पोर्टेंट केस है वो है, दिस इज द नारायण थिनप्पा मादिलेवी केस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जिसमें कि कोर्ट ने ये रूल किया कि भाई आपको जो टेम्परेरी स्टेटस रेगुलाइजेशन की जो स्कीम थी वो ऐसा नहीं है कि वो परपेचुअल स्कीम है, दैट इज अ वन टाइम स्कीम। इस स्कीम को आप हमेशा के लिए कंटिन्यू नहीं कर सकते हो, इट कैन नॉट बी अ कंटिन्यूअस स्कीम फॉर अ लॉन्गर पीरियड। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी कहे कि भाई मेरे 10 साल जो है अब 1993 में कंप्लीट हो रहे हैं, 1994 में कंप्लीट हो रहे हैं, तो इसलिए मुझे टीएसएम स्टेटस दे दिया जाए। जो डेट है वो डेट बिल्कुल साइक्रोसेंट है, दैट डेट वाज 1986 की जो डेट है वो डेट बिल्कुल साइक्रोसेंट है। Part-time casual laborers were not covered under the scheme of 1989 and were not entitled for the temporary status regularization of the मजदूर। ये वाला जो डिसीजन है ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि हमारे एक मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के एक कोर्ट केस में, दिस इज पॉपुलरली नोन एज मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन वर्सेस सुक्कूबाई केस। जो पार्ट टाइम कैजुअल लेबर्स थे पीटीसीएल, उनके लिए ये स्कीम नहीं थी, टीएसएम स्कीम। नाउ कम्स जो वो थी कि भाई पीओ किस किस के लिए, कौन कौन कैटेगरी ऑफ लोग विच इज नॉट एलिजिबल फॉर गिविंग द पीओस। Casual laborers who have been granted temporary status on or before 39/2000 and regularized in the post of regular mazdoor or ATT after 110/2000 in BSNL are eligible for PO. Casual laborers जिनको की temporary status मजदूर का benefit मिल गया था before the formation of BSNL, that is before 110/2000 या 39/2000 की जो date थी, that is during the DOT regime, they are eligible for PO. Any casual laborers who could not be granted temporary status in DOT but have been regularized as RM in BSNL are not eligible for PO. हाँ लेकिन दिस इज द पोजीशन ऑफ द रूलिंग। वो तो देखिए रूलिंग के तो दोनों साइड होती हैं, कुछ लोगों ने गलत किया है तो उसके हो। हाँ हाँ लेकिन नहीं, इसमें आप डिफरेंस समझने की कोशिश कर लीजिए बस, दैट सफिशिएंट। डिफरेंस ये है कि टीएसएम बना हुआ था
तो वो डीओटी के पीओ के लिए एलिजिबल था। अगर टीएसएम नहीं बना हुआ था तो डीओटी के उसके पीओ के लिए वो एलिजिबल नहीं था, दो ही इज अ रेगुलर पर्सन इन बीएसएनएल. That is the only difference I would like to bring it to your notice. This position is again very recently 2020 के एक जजमेंट में भी क्लैरिफाई की है. ये जरा के केस में वो उसको किसके केस में? तेजपुर में जो ये केस नहीं, ये गलती कभी मत कीजिएगा. नहीं पूछ रहे हैं. ये गलती कभी मत कीजिएगा. अभी कोर्ट ने सिर्फ उनको टीएसएम देने के लिए कहा है. उससे आगे ये स्पेसिफिकली हमने आपको वापस भी लिखा था लेटर में, और ईपीएफ जीपीएफ और मैंने फोन पे भी बताया था आपके जीएमएचआर को और सीजीएम को भी कि ये गलती कभी भी मत कीजिएगा. कोर्ट ने अभी उनको टीएसएम बनाने के लिए कहा है. आप वहीं तक स्टिक रहिए, बस टीएसएम देना है, उससे आगे नहीं बढ़ना है. ईपीएफ और जीपी इसका क्या करना है? वो आएगा, उसमें अगर आएगा तो ईपीएफ आएगा तो आएगा. अभी फिलहाल ईपीएफ बोला उन्होंने. ईपीएफ लेकिन जहां तक मुझे पता है शायद उन लोगों का कंटिन्यूड है. उन लोगों को मिल रहा है पहले. हाँ, मिल रहा था. उनको पहले से मिल रहा है. नहीं है, नहीं अब नहीं, ये तो 2-3-4 साल से केस चल रहा है, लंबा केस है. अब कुछ लोगों के लिए शायद इन्होंने कॉर्पोरेट ऑफिस ने लिखा है एक्शन लेने के लिए. हाँ, भेजा, लेटर आया. हाँ, तो ऐसा सब लोग रिटायर हो गए. वो लोग जिम्मेदारी नहीं होगी, जिम्मेदारी तो होगी उसमें किसी ना किसी की. सो ये चीज जो थी, दिस इज अबाउट द कैजुअल लेबर टीएसएम स्कीम और उनके रेगुलराइजेशन की एंड इशू ऑफ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स. इसमें सिर्फ 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बताई हैं कि कैजुअल लेबर की या किसी को रेगुलराइजेशन की जो स्कीम थी prior to 2006, that is prior to Uma Devi judgment, there was one regime और उसमें 29/9/2000 का ऑर्डर चल रहा था. After that, the situation has changed और उसके बाद हम उन लोगों को रेगुलराइज नहीं कर रहे हैं. सेकेंडली उनका पीओ का क्लेम जो है वो. Now this is the second part of my presentation. This is regarding the statutory provisions and guideline for the EPF and ESI benefits to the laborers. आज की डेट में हमारे पास इसको लेके भी काफी सारे केसेस आते हैं जहां पे कि EPF या ESI बेनिफिट्स को लेके भी लोग केस करते हैं. As we all know that EPF and ESI benefits were given to the workers which were engaged directly or through the contractors as a part of social security measures, which is as per the scheme of the Government of India and is covered under the EPF and Miscellaneous Provision Act of 1952. ये जो वाली slide है, this was the initial part of the EPF scheme. Initial part of the EPF scheme में क्या हुआ कि उन्होंने ये कहा कि एम्प्लॉयर अपने पहले इंस्टेंस पे अपना एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और जो उसका दूसरे आपके वर्कर का कंट्रीब्यूशन है वो जमा कराएगा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर. पहले इटरेशन में ये चीज थी. और उसके बाद वो है उससे कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू अगर वो आदमी एंगेज है तो आप कॉन्ट्रैक्टर से रिकवर करो. तो एज पर दिस स्कीम मोटा मोटी जो आई वांट टू से दैट इनिशियली इट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई डिपार्टमेंट ही उसका भी पार्ट अपने आप जमा कराए और फिर कॉन्ट्रैक्टर से रिकवर कर ले वो. बट लेटर ऑन इट वाज चेंज्ड. फिर 2017 में जब उन्होंने निकाला, एक्चुअली इस बीच में एक 2004 में एक और प्रोविजन आया था जिसमें कि उन्होंने ये कहा कि भाई जो एम्प्लॉयर है, दो ही इज नॉट अ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, उसको भी वो पीएफ कोड देने लगे. उसको भी एक नंबर देने लगे कि आप अपने जो एम्प्लॉयज रखते हो वो इस पीएफ नंबर के अगेंस्ट आप उनका ईपीएफ जमा करेंगे. आफ्टर दैट देयर वाज अ चेंज इन द पोजीशन. अब उसमें जहां पे कि पहले वो मैंडेटरी था कि भाई वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर करे, अब उसने सिर्फ ये कह दिया प्रिंसिपल एम्प्लॉयर should ensure that the contractor is registered with EPFO before availing any contract, before awarding any contract. After award of the contract, the contractor details should be entered in EPFO portal. Payment due to the contractor should only be made after verifying the statutory PF payment have been made to EPFO. अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ से शिफ्ट हो गई कि भाई आप ना जमा करके आप सिर्फ इंश्योर कर लो कि उसने ईपीएफओ में पैसा जमा कर दिया, और ये चीज आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो. ये this position was changed as I have told you that after 2004 when contractors were where contractors were assigned a separate PF code number also.
इसमें भी हालांकि इनका जो लेटर है, ये जो मैंने आपको पीछे लिखा 2017 का लेटर जो है, इसको अगर आप पढ़ोगे, इसने सब कहानी कहने के बाद में भी फिर भी ये कहा कि ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इसकी कॉम्प्लायंस की वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की रहेगी। ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से एब्सॉल्व हो जाएगा। बट यहाँ पे आई वुड लाइक टू ब्रिंग इट टू योर नोटिस के जो ईपीएफओ कह रहा है और जो वेरियस कोर्ट जजमेंट्स हैं उनमें काफी डिस्पैरिटी है। कोर्ट जजमेंट बिल्कुल आंख बंद करके ऐसा नहीं है जैसा कि इस एक्ट में, ये ईपीएफओ के इस लेटर में लिखा हुआ है। कोर्ट जजमेंट थोड़ा सा इसको एक मोर रैशनल वे में ट्रीट करते हैं। एक और उन्होंने इसको थोड़ा सा आगे जाके देखा है, खाली यही नहीं कि भाई ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की है डिडक्ट करने की या जमा करने की, तो उसी पे ही उन्होंने जजमेंट दिए हैं। एक एमपी का हाईकोर्ट का जजमेंट है, ये उसी के 3-4 पॉइंट्स हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जस्ट आई वुड लाइक टू से कि भाई इनको थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। इसमें जरा एक क्वेश्चन था हाँ हाँ बताएं। कि अगर कॉन्ट्रैक्टर ईपीएफ नहीं जमा कर रहा आईपीएफ, तो क्या हम लोग काट के जमा कर हाँ सकते कर हैं? सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें जो ये उसका बताया ना, ईपीएफओ कोड है भाई, उसका नहीं कोड है, EPF लेकिन कोड है। एम्प्लॉय के नाम पे जमा करोगे ना, हाँ एम्प्लॉय की लिस्ट ना ना, अरे जमा तो किसी आदमी के नाम के अगेंस्ट होगा, रामू या शामू। नहीं नहीं, वो आई विल ऑफ टेक, अगली स्लाइड में है, अगली स्लाइड में बताऊंगा आपको। हाँ आप अगली स्लाइड में देखिएगा, वो है वो चीज। ये कहता है कि भाई ये जजमेंट कहता है कि वंस डिफॉल्ट टेक प्लेस ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयर, EPF authority would be in its power to initiate proceedings under the provision of the Employers Provident Fund and Miscellaneous Provision Act 1952. But the most important para is the second para. If the principal employer does not take objection at the initial stage of the inquiry or before the EPF appellate tribunal that contractors were having their independent PF code numbers and deposited the assessed amount partly or fully without protest or reservation on its own or under the threat or pressure of EPF authority, it cannot be accepted at a later stage that he is not liable to deposit EPF dues in respect of the employees, even engaged through independent contractor. तो जब हम अपीलेट में जाएं तो हम सबसे पहले ही उसी स्टेज पे ही हम लोग अपनी ये ऑब्जेक्शन को या अपने पॉइंट्स को वहीं पर ही कहें। अगर सब्सिक्वेंटली हम कभी कहेंगे तो उसका उतना कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा। अगर हमने पहली स्टेज पे ही कह दिया कि भाई कॉन्ट्रैक्टर का अपना ईपीएफ कोड था, उसको जमा कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो केस में एज पर दिस हाई कोर्ट जजमेंट देन देयर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी। Once the principal employer signs the list of employees engaged through different contractors, he cannot say later on that beneficiaries were not identified. Principal employer and the contractors both are liable to maintain register of employees engaged through contractors. अब हम करें ना करें वो एक अलग सेपरेट इशू है, बट लीगल पोजीशन इज कि भाई हम लोग जो है एक रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए जिसमें कि उसने जो एंगेज किए हुए हैं लेबर, उनकी हमारे पास डिटेल होनी चाहिए। उनका उसने जब ईपीएफ जमा किया है तब हमें वो ईपीएफ देखना चाहिए। Employees engaged through contractors are to be treated as employee of the principal employer as per section 2 of the act. An employee employed or through contractor or in connection with the work of an establishment is included within the definition of an employee. Just ये एक 4-5 पॉइंट्स हैं, these are the crux of all these things कि हम लोगों को क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए या हम लोगों को क्या क्या चीजें देखनी चाहिए कि 100% तो ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आप बिल्कुल सारे जो लिटिगेशन हैं वो खत्म कर दोगे, बट अगर किसी ने सामने लिटिगेशन किया है तो हमारा केस स्ट्रांग रहे, उसके लिए हम लोगों को इन चीजों पे 4-5 पॉइंट्स जो हैं इन पे ध्यान देना चाहिए। The principal employer has to maintain and preserve the record, including registration under Contract Labor Regulation Act 1972, correct, with the contractor regarding supply of manpower. This holds good whenever we are doing any contract of supply of manpower. To ensure that contractor is having an independent PF code. In a nutshell, I can tell you, अगर आपने वर्क अवार्ड करने से पहले जिसमें आपको लगता है कि भाई उसको आदमियों की जरूरत पड़ेगी उस कॉन्ट्रैक्टर को, आपने उसका पीएफ कोड देख लिया, उसके पास इंडिपेंडेंट पीएफ कोड अलॉटेड है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू विल बी एबल टू एब्सॉर्ब योरसेल्फ। आप अपनी काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम कर सकते हो। तो इसलिए ये देखना बहुत जरूरी है कि उसके पास इंडिपेंडेंट पीएफ कोड है या नहीं है। आई थिंक अब शायद हम लोगों ने अपने
प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट में भी शायद ये चीज ले आए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट में भी हम ये चीज ले आए थे कि उसके पास इंडिपेंडेंट पीएफ कोड होना चाहिए. Maintaining records of employees, including complete required personal biodata of the employees so engaged, EPF dues paid by the contractor in the account of the respective employees, documents including correspondence showing control and supervision of the contractor. Last point इसमें बहुत important है कि preserving the same for the long time. Since there is no limitation for the EPF authority to inspect the record and applicability of the act, levy damages and interest, etc. Generally, किसी भी एक्ट में रूल में एक लिमिटेशन पीरियड होता है कि आप 5 साल 7 साल 10 साल देख सकते हो, बट ईपीएफ एक्ट में कोई लिमिटेशन नहीं है. ईपीएफ एक्ट में वो आपके 15 साल पुराने रिकॉर्ड भी दिखवा सकता है, 15 साल पुरानी पेनल्टी भी लगा सकता है. दिस इज बेसिकली आई वुड लाइक टू से दिस इज लॉपसाइडेड इन द फेवर ऑफ द ईपीएफ अथॉरिटीज. अगर आप इन जनरल देखो तो भाई ठीक है, सोशल सिक्योरिटी के लिए है तो इट हैज टू बी दैट वे ओनली. These are some of the provisions which are there in the act. इसमें कोई बहुत important चीजें नहीं है कि बस खाली ये है कि किस किस कैटेगरी में हमने वो एम्प्लॉय किए हैं. जब हमने डायरेक्टली एम्प्लॉय किए हैं, थ्रू बीच में कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय किए हैं, सर्विसेज आर टेम्परेरी लेट एंड लेट द हायर द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, तो उसका उन कंडीशंस में क्या क्या चीजें हम लोगों को देखनी होंगी. दिस इज जस्ट आपको आई थिंक यू विल गेट द कॉपी ऑफ द स्लाइड, इसको आप देख सकते हो. नथिंग very significant in that. These are also the provisions when the principal employer has to pay contribution in the first instance. जो आप कह रहे थे कि भाई प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप हम उनको कैसे दे सकते हैं. दिस इज दैट स्लाइड इसमें. बाकी दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. एनीथिंग एल्स आप लोगों को कुछ और अगर एनी क्वेश्चंस, आपको कोई भी क्वेश्चंस इस पे अगर पूछने हैं तो. Sir, only one small clarification. Now, presently, we are hiring through that agencies. You are talking about manpower hiring or Manpower, sir. Okay. Or work-based, we are hiring it. The contractor may be engaging certain labor, sir. Yeah. Even for that, we are responsible for, suppose if he is not paying. Yeah, if it is a manpower contract, suppose the most prevalent example is about the housekeeping contract. हाउसकीपिंग में हमने कहा कि भाई आपको इतने, मुझे 8 आदमी चाहिए, 10 आदमी चाहिए, देयर इज सम एजेंसी मिस्टर सो एंड सो विल प्रोवाइड दोस. ये एक्ट उसके ऊपर पूरी तरह से एप्लीकेबल है. द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर आर इन सच केसेस बीएसएनएल, बट वी हैव टू एंश्योर सर्टेन थिंग्स बिफोर द स्टार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. हमें उससे लिस्ट लेनी है. वी हैव टू गेट अ लिस्ट फ्रॉम हिम दैट व्हाट आर द एम्प्लॉयज दैट यू आर गोइंग टू एंगेज, व्हाट इज योर पीएफ कोड. For the very first bill that we are supposed to pay to him, we have to check it out that whether he has paid the EPF of all those employees or all the list of the employees which have he has supplied to it. There is no complaint against any or complaint raised by the labor that his EPF has not been submitted. So if you do those things, then definitely there will be no problem. Even job based also, sir. Even job based also. So, नहीं, SLA based में क्या? Please come again. देखिए, जहां तक टेक्निकल या उस तरह के जॉब का क्वेश्चन है, वहां पे वो बहुत रेलिवेंस में नहीं आएगा कि, बट ओनली थिंग इज यू हैव टू एंश्योर इट कि आपका ये उसका कोई लेबर कंप्लेंट नहीं कर रहा है. अगर कोई कंप्लेंट करती है, देन यू आर एज अ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, देन यू आर सपोज टू एक्ट ऑन दैट. फिर आपके लिए थोड़ा मुश्किलें बढ़ जाती हैं. सो लॉन्ग एज देर इज नो कंप्लेंट, या उसमें अगर कोई लेबर नहीं कर रहा है कंप्लेंट, क्योंकि अगर मान लो सपोज आपने कोई बहुत टेक्निकल काम भी दिया, उसको 4 आदमी रखने हैं, 2 आदमी रखने हैं, आपको ही पता है, और उसने वो आदमी में से किसी एक ने कंप्लेंट कर दी कि आई हैव नॉट बीन पेड सैलरी, आई हैव नॉट बीन पेड ईपीएफ, देन यू हैव टू, मतलब योर रोल एज अ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर. पीएफ में एम्प्लॉय जो लेबर है वो कंप्लेंट कम करती है, विजिलेंस और बाकी लोग ज्यादा करते हैं. लेबर की भी आते हैं, वो कराता कोई भी, मतलब लेकिन फेस ऑफ इट तो लेबर ही हो. नहीं, विजिलेंस करती है, लेबर नहीं करती. या हमारे अकाउंट्स या हमारे प्लानिंग, हमारे वो लोग वो करते हैं. बाकी बात अलग चीज है. मतलब बात यह है कि वो तो अलग चीज है, वो वाली चीज अलग है. Sir, one query is there. Excuse me, sir. Sir, एक question है. Sir, one query, please. Yeah. Sir, one person has मतलब he was being उनको टर्मिनेट कर दिया था,
and he was alive for maybe approximately 10 to 15 years. But during that time, he did not claim any gratuity. But subsequently to his death, his wife has claimed that through the EPF authority, किसी से authority के थ्रू उन्होंने claim किया था, जिसमें उन्होंने वो gratuity के basis पे section 4 and section 6 में they told to pay that gratuity amount to her. Is it applicable on that? So I am going for appeal, but that's नहीं, a I will tell you query. the basic principle of gratuity. Gratuity क्या है? What is gratuity? What in fact gratuity means? Gratuity अगर मैं बहुत in a non-legal term कहूँ या बहुत simple भाषा में बोलूँ तो gratuity is means that there was I means when I'm saying I, it means government. Government has engaged some employees. Government is very happy with the conduct of that employee after fulfillment of his service. As a gratitude, I am paying something out of it, which is basically एक तरह से आप किसी को अगर मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में कहूँ तो बख्शीश है कि भाई आप किसी को उनका जो बख्शीश हुआ था सर, वो सर्विस उसकी टर्मिनेट कर दिया. नहीं, हाँ, आई एम कमिंग टू दैट ओनली. अगर आप किसी की सर्विस टर्मिनेट करते हो तो इट मींस हिज कंडक्ट या हिज कंडक्ट इन द सर्विस इज नॉट गुड. So there is no question of giving gratuity to him. तो basic principle of gratuity देने का मतलब ही यही है कि भाई सरकार में मैं हूं, मैं सरकार बड़ी खुश है इस आदमी की सर्विस से, इस आदमी ने बहुत अच्छे से काम किया है, इसका आचरण बहुत अच्छा रहा है, इसलिए मैं इसको gratitude as a gratitude I am giving a gratuity to you. Definitely, because in such case there is no binding के अगर उसकी सर्विस टर्मिनेट हुई है, gratuity उसको नहीं मिलनी चाहिए. Thank you, sir. Let's have a use round of applause on the behalf of House to welcome the sir. Now, to present a token of respect and the gratitude on the behalf of LTTC, I would like to call upon Shri Vijay V, ma'am, from the Karnataka Mangalore, and Shri Mavri Daleso from Meghalaya. And then after felicitation, we all would proceed for the tea break. And then after tea break, about 4 o'clock, the director HR is expected to join us online. Let's have a tea break, please. And then we all are going to assemble.
नहीं हेलो 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 1 2 3 हेलो माइक चेक साउंड टेस्टिंग हेलो आवाज हेलो हेलो आप बोलो 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 हेलो 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 नहीं नहीं यार ये इसी से आ रही है इससे हेलो हेलो 1 2 3 हेलो हेलो आईटी टीम Hello, hello, hello. I'm audible. वीडियो वीडियो को रखा आपने अरे भाई साहब म्यूट नहीं है, म्यूट नहीं है। अभी भी तो वही पंगा पड़ रहा है। मैं ये जो बोल रहा हूँ ये अपने वाले सिस्टम पे नहीं आ रही ना, इसलिए मैं यही काम ही करना। तो आ रही है ये तो जूम में तो आएगी ना तो ये दिखाना स्क्रीन पर म्यूट करो फिर मैं बोलूँ तो पता लग जाएगी इसमें आ रही है तुम जो नहीं पता लग जाएगी इसमें आ रही है कर दिया ऐसा बोलने से तो बोल दो हेलो हेलो हेलो। हेलो वो नहीं होगा हेलो नॉट अलाउड ऐसा बोल रहा है वो सिर्फ नॉट अलाउइंग पार्टिसिपेंट टू अनम्यूट अरे सब वहां से इधर तो आ जाएगी। हेलो हेलो अरे हाँ स्पीकर उसमें चाहिए ना तुम्हें तो स्पीकर पे ये भी स्पीकर पे आनी चाहिए ना हेलो जूम के थ्रू कनेक्शन होना चाहिए ये चाहते हो हेलो हेलो क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सर आप क्या मुझे आप सुन पा रहे हैं ये नहीं सुन पा रहे हैं इसके थ्रू आनी चाहिए ना सर आपने बंद करा दिया मेरा अरे भैया तुम आप आपने बढ़ाओ बंद करा दिया सर, बोलो आप। आप देखेंगे ठीक है आप अभी बोलो। हाँ हेलो नॉट आप पहले मैं अलाउ करो जरूर करिए अनम्यूट हो गया हेलो हेलो यही आ रही है उसमें थोड़ी आ रही उसमें चाहिए ना चाहिए मैं स्पीकर यहीं लगा दूं से वो रखा है अब बड़े स्पीकर के लिए वो कहाँ से लाऊं मैं ये। केबल भी नहीं है और पंगा तो यही चल रहा है सादा। ये केबल सही है देखो मैं देखो मेरे पास पड़ी केबल देखो जल्दी से। इतना बार बार रिक्वेस्ट हो गया इतना बार बार रिक्वेस्ट लोकेशन यार देखो एक तरीका फिर ये है कि इसको ऐसे उठा के बस इस पे लगा दो। भैया कोई बोलो। करो करो देखिए बोलिए बोलिए बात बोलो बोलो हेलो आप बोलिए आप एक ही बात तो है मैं दोनों में क्या अंतर है? नहीं यहाँ से कंट्रोल ये यहाँ से कंट्रोल इको मारेगा, देख मैं बोलता हूँ ये इको मारेगा। हाँ एट ए टाइम एक ही आदमी बोलेगा ना या तो वहां से आएगी या यहाँ से आवाज स्टिल वो इको मारेगा। स्टिल मैंने इको इसको मारेगा। बोला मैंने ये इसको वाला खोला। जो है ये हाँ वाला ये तो वाला पकड़ेगा इधर। तो पकड़ेगा इधर। अब जैसे ये है ना साउंड साउंड आ रहा हेलो नहीं आलोक हेलो हेलो नहीं सही आ रहा है आवाज आ आ रहा रहा है, है आवाज आ रहा है। साउंड मारेगा साउंड साउंड इसके मारेगा थ्रू इसके थ्रू। इसके थ्रू मैं ये इसलिए तो नहीं मैं करना इसलिए नहीं चाह देख रहा। लिया मैंने करना चाहता। बात ठीक है
वो इधर वाली आवाज भी तो पकड़ेगा ना माइक तो वो साउंड साउंड हो जाएगा आपकी बढ़िया। इसको तो देख देख, वो तो निश्चित हेलो नहीं है। हेलो। हाँ, आज 800 से आ जल्दी जल्दी आओ जल्दी। बोलो भाई बोलो, और थोड़ा थोड़ा बोलो यार, देखें क्या हो। हेलो। जो बोलना बोलो। हेलो 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 हेलो। आइए ना। अब बोलो कुछ उसमें। हेलो। ये पकड़ो मेरा, ये लगाओ, ये ठोको और तब हाँ। के पीछे से वो रिमोट होता है। हाँ इसके हेलो, माइक टेस्टिंग। हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। पवन ऐसे इसमें स्पीकर है ना, ने ऐसे इसके स्पीकर को पैच किया। हेलो ये ऊपर से आ गया ना। अबे क्या हो नहीं पा रहा? नहीं सर, देख रहे स्पीकर का दिक्कत आ रही है, उधर से वॉइस का। स्पीकर क्या पहले भी यही थे ना? नहीं सर, वो इसमें जो बदल रहे हैं क्या हो जाएगा? हाँ, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए ये वाला चार्ज नहीं है उसका। लोकल वाले भी वाले को हो जाए असिस्टेंट वाले वो। हेलो हेलो, इन्हें लगा आई तो आई इको आ रही है जरी। तो लोकल वाले स्पीकर कौन से नहीं है? ये तो छोटे छोटे हैं, इस पे वो लगा लेंगे तो हाँ माइक समाई यही कर दो, कुछ तो हो जाएगा। हेलो क्या लगा ये सब लोग भागने के उसमें भी है। हाँ अच्छा है। First 15 minutes, the participants will give their presentation, and after that, वो interact भी करेंगे सबसे। हेलो आप उसको आउट पकड़ सकते हैं क्या इसमें?
तो मैं यहाँ से अगर आपको आउट देता हूँ तो ये ले इनको ले लो। ये स्पेशल है यहाँ की वॉइस लेवल वॉइस का बच्चा उसमें इससे लेगी ये तो मुझे इससे कैमरे है भी आपके पास वो अपना पा जाएगी तो सही बात I was checking. This is also at review. Last one. Hello. उसको कुछ प्ले करो उसको शेयर कर दो यूट्यूब चलाएगा उसको शेयर करो ये निकाल देना चेन्नई चेन्नई वाला आ रहा है चेन्नई को लेके ना एक बार टेस्ट उनकी चला दो कुछ चला दो hair color. I love my brand. I love my burgundy. मेरा भरोसा सिर्फ गार्नियर कलर नेचुरल्स एक नो अमोनिया फॉर्मूला जिसमें है 10 गुना नेचुरल ऑयल्स जो गहराई को जाकर बालों को कलर करे और पोषण दे पाएंगे लाजवाब गहरा कलर जो चले 10 हफ्तों तक गार्नियर कलर नेचुरल्स पार्लर कलर करी सिर्फ 95 रुपए में इधर से शेयर कर देंगे हेलो 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 आ रही आवाज किसी पे नहीं हाँ मैं अपने मोबाइल से बोल रहा हूँ पूरा पूरा वो हाँ तो ये स्पीकर टेक्निकल लोग
Once everything's perfectly organized, I'll start working on my thesis. Grammarly will ensure you feel confident nailing your final thesis by supporting your writing journey from start to finish. Welcome to Ideation Station. How do I write the perfect intro paragraph? You start with understanding what makes a perfect intro. Grammarly can highlight precise tips for an introductory paragraph based on the research you've done so far. An informative and inspiring intro. This is exactly what my thesis needed. Now that I've got a strong intro, I need to take a pass at perfecting some of the remaining paragraphs. Revision time? Revision time. Here at Revision Division, we ensure your writing is the highest quality it can be. This paragraph can be simplified. Grammarly can paraphrase this by using the Improve It prompt, all while maintaining your voice and keeping your work sounding professional. Awesome. Let's wrap this thesis up with a neat and tidy works cited page. Grammarly can help with that. Writing citations has never been easier. You can now cite the AI prompts you used. Perfect. I can even show I used Grammarly for paraphrasing. There you go. Use AI tools without compromising your integrity. I have lots of great information in my thesis from different online sources, but I can never remember how to perfectly format my citations. Just click Get Citation, and you'll have a full citation ready to copy, always formatted perfectly. Wow, that was fast. This thesis is solid. One day, people are going to cite your study. How do you feel about that? Perfect. But Grammarly, how do you feel? Huh. Nobody's ever asked me that before. Download Grammarly for free. Ready to perfect your next thesis? Grammarly's there for you from start to finish, across your entire writing journey. And 94% of students say Grammarly helps improve their grades. Download Grammarly for free. It's the perfect writing partner. One cigarette will cost you 20 rupees, which is going to kill you. But you can join my workshop just at rupees 9, which is going to give you 3x salary hike, a career growth, and along with that, making you irreplaceable in the job market by integrating AI tools and ChatGPT in your day-to-day work. Hi, I'm Aditya Kachwe, and I'm an alumnus of IIT Kharagpur. I'm someone who is absolutely passionate about this ChatGPT and AI tools. That's why I have used more than 1400 AI tools and found 10 most useful AI tools for every working professional. Want to learn all this? Then click on the link below, sign up for my workshop. I'll see you inside my workshop. शीलम परम भूषणम, चरित्र ही सबसे बड़ा आभूषण है। ये संस्कृति श्लोक लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की एक ऐसी दीवार पर लिखी है जिसे पढ़कर हमारे देश के
Sir, currently it's Hello. Hello. 1, 2, 3. Hello. Mic test. उधर भी डॉक्टर साहब की कुर्सी खाली पड़ी है। हाँ।
Hello. Yeah, is it audible now? Hello, Chennai. Yeah, sir, it's audible. Are we audible, sir, from ALT? Yes, sir. You are audible, sir. You are audible, sir. Yeah. We are able to see the PPT. Yeah, sir, you are audible, sir. Quite clear, sir. Oh, okay, fine, sir. Thank you, sir. तो इसको ऑन कर दो तो बंद हो जाता है।
Can I hear? Not able to hear. I need to hear them, right? Sir, you can speak, sir. They'll be able to hear you, sir. But I'm not able to hear them. Okay, clear. You say hello. Hello. Sir, Director HR is available now. Hello. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Namaskar. I am Kalyan Sagar, Director HR. Okay, sir. Very good evening to all of you. Yes, sir. And may I have the pleasure and privilege to welcome our special guest of today's evening in this HR vertical training, Shri Kalyan Sagar Nipani, sir, Honorable Director HR, BSNL Board. Let's welcome him with a big round of applause. Thank you very much, sir. Thank you very much. Very kind of you. Honorable Director, sir. Shri Kalyan Sagar Nipani, sir, Honorable Director HR, BSNL Board. Other BSNL officers who have joined us through this virtual platform in this session. All the BSNL officers of the family present in the seminar hall, and our distinguished participants of this training program. I welcome you all to this interaction session of this 5th day of HR vertical training to this BA Head and IFA training program, sir. For the appraisal of Honorable Director, sir, I would like to apprise him that, sir, this is the 7th batch of BA Head IFA training being conducted at ALTTC Ghaziabad from 4th of December to 8th of December 2023. The total 27 participants are there in this training, out of which 16 BA heads are there and 11 IFAs are there. And now for the appraisal of our Honorable Director, sir, I request all the participants to introduce themselves to Director, sir, one by one. Good afternoon, sir. I am MC Singh, BA Head, Chandigarh. Right, sir. Thank you. Very good afternoon, sir. Myself, Tashi, IFA Leh, J&K Circle, sir. Right, sir. Thank you. Good afternoon, sir. I am Yash Panekar, PGM, BA Head, Nagpur, Maharashtra Circle. Right, sir. Namaskar, sir. I am Deepak Gupta, PGM Rewari, Haryana Circle. Namaskar, sir. I am Nilesh Shah, IFA Ahmedabad, BA, Gujarat Circle. Namaskar, sir. I am Sanjeev Singhal, PGM Indore. Namaskar, sir. I am AK Gautam, BA Head, Amritsar. Good afternoon, sir. I am BG, IFA, Mangalore, Karnataka Circle. Namaskar, sir. I am Shalachat Bundela, IFA, Office of GMBA, Hoshangabad, MP Telecom Circle. Good evening, sir. Myself, Pulkit Agrawal, IFA, Gorakhpur, BA, UP Circle. नमस्कार सर राकेश चंद्राकर पीजीएम बीए हेड राउरकेला उड़ीसा Good evening, sir. Myself Manoj Kumar, IFA Lucknow, UP Circle, sir. Namaskar. Namaskar. नमस्कार सर, मैं अजीत कुमार, बीए हेड हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं सूर्यकांत सिंह राय, IFA, BA सागर, MP टेलीकॉम सर्किल। Good evening, sir. Myself G. Ramesh, GMTD Kurnool BA, Andhra Pradesh Sarkar. नमस्कार सर, मैं श्याम गोपाल खत्री, IFA, प्रयागराज, यूपी ईस्ट। Good evening, sir. Myself Shyam Singh, GMBA Head, Agra, UP West, Telecom Circle. Good afternoon, sir. I'm Mauritius of Meghalaya BA IFA. Namaskar, sir. I am Nitish Sinha, currently serving as BA Head, Sultanpur. Right. Namaskar, sir. I am BK Gupta, GMBA Ujjain, MP Circle. Good evening, sir. I am Salil Kumar, BA Head, Tejpur, Assam. नमस्कार सर, मैं सुमित दुबे, IFA सीतापुर, यूपी सर। गुड इवनिंग सर, माई सेल्फ मनोज कुमार वर्मा, IFA सतना, MP टेलीकॉम सर। नमस्कार सर, मैं बलवीर सिंह, बहरामपुर BA, उड़ीसा सर्किल।
Namaskar, sir. Myself PK Mahapatra, GM Balasore BA, Odisha. Namaskar, sir. I am Venkateshwarlu, BA Head, Bengaluru, Karnataka, sir. Right. So thank you all the participants for giving your brief. Namaste, sir. Myself PN Dohare, PGM ALTTC. Right, sir. So thank you all the participants and PGM sir for giving your brief introduction to our Honorable Director, sir. Now to proceed further, I would like to apprise our Honorable Director, sir, with the day proceedings of today's training, how the day proceeded with the HR vertical trainings in today's program, sir. Can I just intervene for First session was taken by Shri Manoj Jain from Cell BSNL Corporate Office. Right. On topic GEM portal, best procurement practices and vigilance aspects. The next session was taken by Shri VK Gupta, Senior GM BSNL Corporate Office regarding asset monetization and its monetization. Then after that, the session was taken by Shri Adhir Singhal, PGM Pers, BSNL Corporate Office on topic emotional quotient. Then after that, the session was taken by Shri Mara Kochu, GM BSNL Corporate Office on energy saving and optimization. Then sir, post lunch session, the first session was taken by Shri Saurabh Tyagi, CGM J&K Telecom Circle regarding disciplinary proceedings, casual and contract worker issues, arbitration and court cases. So that's how the day proceeded today with the sessions taken by eminent speakers from the corporate office for our participants in this training program. And now to proceed further in today's program, today's session, I now request our participants to proceed with their presentations for the director, sir. Paper on the white paper. Namaskar, sir. I am AK Gautam, 91 batch ITS officer. So in this whole 5-day program, we were basically asked to suggest some measures after deliberation within the group. And we have a group of 6 persons. Out of that, 3 are the IFAs and the 3 are the BA heads. So we have deliberated about the issue of the HR, means how BSNL, how our solutions or how our means contribution can assist the BSNL to improve their performance in the matter of HR. So after deliberations, we have come to a common point with a consensus agreement, and that is being now presented. So basically our main focus area was transfer policy of the BSNL, then medical policy of the BSNL, then IPMS. These are the main focus area, but otherwise all the BSNL officers and BSNL board of directors are doing their means all the taking necessary precautions and guidelines they are issuing to the basically circle heads that they means so that the function of the BSNL may be carried out efficiently. But still, because we have been asked to give some suggestions, so these are our basically suggestions. So first is regarding deployment of the manpower in the BSNL. So the first lecture of this whole 5-day program was started with the CFA presentation by Mr. MC Singh. And the first line of that presentation was deployment of right person at the right place.
So this preconceives the idea of specialization, and idea of placing the right person means those who have that type of experience and that type of the qualities gained during their means uh, during the course of their business. So basic idea is that the right person means those who have that qualifications or that experience that should be placed at that person. Means it has been found sometime that a person who is trained in transmission and he has all been means all of a sudden he has been posted in the establishment branch. So in that way, there is a loss of means manpower in the transmission also and the establishment branch also. Because as a establishment branch, he has to start a fresh job there right from the scratch. So the rulings, position and all these things take a long time to understand all these things. So this is the one thing. And the second thing is, yeah, it's, okay. The second thing is about the training skills. So almost BSNL is taking care of the training skills of all the means after upgradation. They are being imparted the trainings, and now the BA head trainings are also started. So this is a good for the organization, and we hope that the such trainings will be continue in future also to empower their employees, so that in the change competitive environment, they can cope up with the requirement of the organization. So this is about the second thing. Third thing told about the medical insurance. So still one thing I want to say about the medical, because the medical policy was issued long back, I think in 2002 or 2003. And after piecemeal, so many instructions has been issued. And those instructions are sometimes not reconciling with each other. So especially I have noticed about the indoor treatment in the non-impaneled hospital. So in some cases, it has found that the financial power is within the BA heads, but in sometimes it is found that the financial power with the CGMs. So there is means it should be clear communication to the field formation that what power which authority has. So in this thing, I want to say this thing. Then need for ambient culture. This is all about, we have in the morning, we have a emotional intelligence lecture, and that lecture was quite useful and fruitful for our organization. That because we are due to workload of the organization in the competitive environment, lot of stress and pressure is there on all the employees. So emotional intelligence will contribute to lower the stress of the employees, and such programs, it should be hold especially for the different employees at a different time. This is our that will improve the performance of the BSNL. Then I will request Mr. MC Singh to continue further. Good evening, sir. First of all, जैसे right person at right place is required at every place. तो ये बहुत जरूरी है. Number 2, daily performance sheet. Each and every performance of each and every employee should be recorded daily by controlling officer, because we are reviewing the IPMS and all quarterly. Quarter is a big 90 days. So because we are monitoring MTTR hourly, so performance of each and every employee should be monitored as a daily performance sheet signed by controlling officer. It will have a check, and we can ask the employee what is his or her strength, and we should post according to the strength of the employee. Transfer policy, it should be transparent. More or less it is transparent, because if an outstanding officer is there,
or his or her grievances are not resolved, then he gets demotivated. So transparency is required in the transfer posting. So capacity building of each and every employee is required, sir. And this BA head program, actually I am BA head Chandigarh BA, so I am taking the lecture 5 sessions. I have taken the lecture on GM sales and marketing, CM as well as CFA. In this batch also I have taken the lecture on CFA, FTTH, etc. I mainly focus what the BA head should do from 6 a.m. in the morning till 10 p.m. in the night. Every BA head should have 3 C's: commitment, courage, and creativity. All BA heads should have these 3 qualities to get the success. So thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. So thank you all the participants for presenting your inside views on HR vertical to our Honorable Director, sir. And now to proceed further with the permission of Honorable Director, sir, I now request our participants to proceed with the case studies, which I think already have been shared with you. And I'm sure that all the participants had come up with their ideas and whatever outcomes and suggestions and your experience sharing has been sought by our Honorable Director, sir. So should we proceed further, sir, with the case study by the participants, sir? Yeah, firstly, let me apologize for being slightly delayed. I was held up in a series of meetings today, so I really had to rush, and the roads were very bad. You understand, there was a cyclone just 2-3 days ago in Chennai, so all the roads were inundated with water. So I apologize for slightly joining you a little late, sir. Yeah, you can quickly tell the parts, because I think many of them would have booked their tickets to go home, this evening. So I leave it to you. The program is till 5:30, right? Am I right, sir? Hello. Yes, sir. Is it till 5:30? So, sir. Yes, sir. So they can either. Yes, sir. Up to 5:30 only. They sir. can either quickly tell, what their findings are in, let's say, 3 minutes each, 5 groups. And also I need an email, because good suggestions should be consolidated and they will be put up to the board. I'll discuss informally with the CMD and the board of directors to actually implement them. I will try to do that. Please go ahead, sir. So we have half an hour. Okay, sir. 5 minutes for my closing remarks. Participants to come up and deliberate the whatever your outcomes and whatever your suggestions on the. You can just talk from where you are if you want. यूज करना है Good evening, sir. This is Tashi, IFA Lay, J&K Circle, sir. Of course, everybody has gone through the case study which you have put to us, sir. And the questions we have deliberated among our colleagues, seniors, and these are the, sir, findings. First question was, what would you do in above context for customer outreach and business development? And in this case, Mr. Kumaran was having already one connection of lease circuit in Chennai. So that was a plus point we had. Excellent. In contacting ABC for establishment of our network in this coming setup.
First, we start establishing communication with the key stakeholder, Mr. Kumaran of ABC Government from his Chennai office, as they're already having a lease circuit from BSNL. Since Mr. Kumaran is based at Chennai, it may involve taking help from Chennai unit of BSNL. So we may also contact Chennai office for helping us. Or secondly, sir, since the administrative officer is having all the project detail, we should have face-to-face meeting with the administrative officer so that their requirement and the potential business is understood. And then we have to engage with the DGM IT of the company to apprise the BSNL solution with all USPs and also to know about the exact telecom service requirement. And to make this project our prospect business or a potential business and to materialize, we had to meet secretary and officer down below the establishment of this mega project or SEZ apprising and assuring the delivery of service within stipulated time and pace. If BSNL is interested with this business, this will influence the engagement of BSNL positively. And at the same time, all the officers of state government, those who are involved in this project, we should be equally engaged, and we should present tailor-made solutions for the technology park, township, and all the potential smart city projects. We engage in industry-specific events, seminars, networking sessions in between, so that our image is improved within that that area. And sir, the possible service and the solution you can provide to customers. We have a bucket of services, sir. We have MPLS, FTTH, ILLs. FTTH and ILLs services are something where we are fully equipped. We cannot say we have good mobile services, but these services can be provided into that city, and then also offer our coming services like 4G and then again 5G. Those can be shared with them so that data center also they can assess our potential as a service provider. Sir, in this we have taken care of all those things in a smart city that we should provide, such as data management, healthcare, waste management, transport, logistics. All should be all those has been addressed. Sir, Go am on, I sir. audible, sir? Excellent. Yeah, very good, very good. It's excellent. Go ahead, go ahead. Please go ahead, sir. ये चला गया presentation? फ्री वाला जूम था क्या? 40 मिनट वाला जूम? अच्छा, तुमने जाना तो वो टेक ओवर कर लेंगे और क्या है, 3 मिनट ही तो बोला। If there is any problem, you can send them across to me by email. But it would be good if 3 minutes is taken by each of you to present. Can you hear me, sirs? एक मेरा रिक्वेस्ट है, यही जो हमने बनाया ना सर को शेयर कर देते। कर दिए। हाँ। इन्होंने भेज दिया। वो तो कर दिया सर और ओके उनको मेल पे भेज दी ना IFA चेन्नई। ओके ठीक है, I think you share the mails with me. Can you hear me, sir? Can you hear me, sir? They are not able to hear me. Call. इनको कर சொல்லுங்க time है ना 9:30 का you should never have a clock that is without running. Yeah, You should always keep running. yesterday when changed the battery. You change the batteries, get someone change it Yeah, we'll do like that. because it's supposed to be
I think there is an issue here. யாரையாவது கூப்பிடுங்களேன். It is from their side actually. Can you hear sir's voice? I will speak. Okay. என்ன சொல்றாரு? There's problem on that side, sir. Okay. So they are restarting the machines. They are doing from them. Our Hello. Yeah, can you hear me, sir? Please. Hello, sir. Sir, can you hear me? Hello. Yeah. there is issue at their end. They are trying to restart the machine. Sir? Yes, sir. Sit down, sit down. Great meeting. He wanted 3 things to be given by Monday. Sit down. One, write up about how we should be giving a nomination, how we are unique. First is optical fiber. Yes. Then underground security, not over the second point. Third point, BharatNet is getting merged, already merged. Yes. The best, he said. So these are the 3 things. Security. Our lines are secure. So these are 4 points in one page. Why BSNL? You put why BSNL. Yes. Advantages compared to other operators. Heading. One is fully optical fiber. Next is underground secure. Hello. Next is merger with BBNL. So we are reaching all gram panchayats. Everything. Yes. Hello. Fourthly, when we go for e-court, it will be. Yeah, can you hear? So there is echo. Yeah, you are audible, but there is an echo. Yeah, can you hear me now? Sir, we can. I'll give closure remarks. That's better. You want me to make you hoster? You are under which name you are connected? This Milin Bagadi, huh? What is your ID? Okay, 806. Okay. Okay, make host. Okay, I have done it. It's okay, right? Sir, are we audible, sir? Yeah, am I audible? Yes, sir. What we can do? Yeah, thank you. What we can do? It's a brilliant presentation by the first team. Okay, very, very inspiring. That is how my case study was structured. You know, in order to ignite your ideas, you're getting it. Thought provoking. In fact, I have written 6 books on management and strategy. It took me more time to actually write those 2 pages because I had to apply my mind and provoke your thought. Excellent. Since we are running out of time, I request the other presentations as you wish in 3 minutes, or will you mail them to me so that I can analyze and discuss with possibly with the board of directors also how to actually implement some of them. What is your program, sir? What is your plan? We are off again. It is happening from Sir, just hold on a sec, sir. We are going to fix up the system and then we are going to revert you back. Okay. Just hold on a sec. So what you have to do? See, what did I tell you? Yeah, this why BSNL? We are putting fiber underground, covering.
say advantages of BSNL compared to first is Sir, the requisite been done. I guess now we are connected. yes, sir. What is your plan of action, sir? It's a brilliant case study. The first one was very good. Do you want to proceed in 2 to 3 minutes, all of them, or do you want to mail them to me? Sir, the ATT team will mail you all the presentation and regarding the case study. And we now request you to the proceed to the keynote address for the participants around the proceed. बोलो ना सर am I audible? इसको म्यूट करो Lot of echo. Sir, all we request you for your keynote address, sir. We are very much eager to get your keynote address, sir. That would be better. I think that would be better. Yeah. Yes, sir. But I need the other presentations sent by mail to me, sir. They are very interesting. Surely, sir. All the presentations would be get Right. compiled and a compiled report would be sent to you, sir. And also this analysis of case studies which the groups have done. That is very interesting. Surely, sir. Okay, Surely. sir. Surely, I would like to congratulate all the teams for their case study. Unfortunately, there is no time and we are racing against time and there is a network issue. So thank you very much. Should I just present my keynote address, sir? Yes, sir. Yes, sir, please. Am I audible? Yeah. Yes, sir. A very good evening to you all. Okay. Yeah. All of you can say good evening a bit louder, please. Yeah, thank you. Thank you. I know you had an exhausting couple of days and, a lot of things are happening. So, sir, first, again, I apologize for being slightly late. I was held up in 2-3 other meetings continuously. I'm tying up with IIT Madras and Anna University and the police department, certain projects. I was held up because of the puddles on the road. Next time, definitely, I will give my presentation. And my presentation, I'm sure all of you will be attending. This batch will attend from their respective offices. So, sir, I'm very happy to be here. A brief introduction about myself. I'm Dr. Kalyan Sagar Nipani. I belong to the 93 batch of Finance and Account Service, now absorbed and as Director HR. And I'm an MBA in Finance. I have an MBA in HR, an MBA in Marketing, and an MBA in Business Administration. I've authored 6 books and a number of articles in telecom strategy, management, and leadership. And it's my privileged pleasure to be here on this program. I'll be very brief. You all know that it's a race against time. It's a big challenge. A revival package has been given to us. So it is not perform or perish. It can be positively seen as perform and flourish. And to take on this challenge of the revival package, I've been telling the consultants and the board also during many meetings. I'm repeating that here. The revival of BSNL. Sir, can you hear me? Am I audible? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. The revival of BSNL is planned in the boardroom. The revival of BSNL is planned in the boardroom, but actually happens in the switch room of every village, town, and city. Right? So you, BA heads, are the vanguards of change. You are the ones who should usher in change. You are the change agents. You will drive the ecosystem of your own offices and also of our partners, FTTH vendors. Got it? The entire telecom ecosystem is in your hands. And I'm sure this training session has been really an attitudinal revitalization for you. And it has been a learning experience. I'm sure I'll be seeing the feedback forms also. Right, sir? And essentially, you have to drill down to everybody, all the stakeholders, that the revival package is for whom? It is for whom? Basically, the question. It is for BSNL, for the organization, but primarily it is for you. This is to be drilled down to the entire ecosystem and the partner ecosystem. Revival of BSNL is essentially for me, my family, my community, my people, right? By default, it is for BSNL. So it is not something that is detached. I am different from the organization, and organization's revival or transformation is something different. That is the wrong attitude. Especially, they should be drilled down to at the grassroots level. Right, sir? And I'm very happy. I'm sure you'll all agree with me that, it is a team effort.
Team, the full form is together, everyone achieves more. TEAM. That is really practical. And next time when I sit here, I don't want to see, IFAs all bunched up together, 7 or 8 of them or 4 of them. It should all be a mixed up group. Got it? I want IFAs and technically everybody should be merged, right? It's not a separate slot or separate verticals, right? Seating arrangement also should be changed. And I thank you very much. And I've been given a brief of the activities earlier and today's activities. I'm sure I should really thank the organizers for having this program. I should thank ALT for the administrative arrangements they have made. I thank all the participants for having spent so much time dedicatedly and having come from so far. I'll keep my speech very short. As I said, I'm closing because you all will be desperate to pack up and maybe leave in the night or early morning. So thank you very much. Anything you want to share with me for next few minutes, I'm open to it, sir. Please share with me anything you wish. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thanks a lot for sharing your experience. And sir, I now request our legal TTC to give a formal welcome thanks to Honorable Director, sir. Sir, are we connected? Yeah, I am able to hear you loud and clear. Just hold on a second. यहाँ से जाएगी हाँ ऑनरेबल डायरेक्टर एचआर श्री कल्याण सागर निपानी जी, गेस्ट स्पीकर, reputed BA heads, IFAs participating in this prestigious training. It is a matter of great pride and gratitude to express my vote of thanks on the 5th day of the 7th batch, that is in final day. BA head IFA training. On behalf of ALT fraternity, I sincerely thank Sri Kalyan Sagar Nipani sir, Honorable Director HR. This interaction session and addressed concluding remark is very effective and informative for all VA heads and IFAs. LTTC. LTTC is once again grateful to Director Sir for sparing precious time and taking so much efforts from his busy schedule to interact with BA heads and IFAs. We are grateful to our distinguished speakers who are imparting this training to train and groom our officers as future leaders and to hold the important position of BA heads as well. We are grateful to all the participating officers who took interest in the day-long session. We are also thankful to all the GMs and DGMs, faculty heads, and all the officials of ELTTC for the good and smooth conduct of today's session. Finally, I am grateful to all those who are directly or indirectly involved in the smooth conduction of this session. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Namaskar. Thank you very much. Wish you all a happy and safe journey back home, back to your field units. And let's keep in touch. Wish you all the best. Jai Hind, Jai BSNL. Very good, very thoughtful and refreshing remarks you have given, sir. Very brief, short, and very. अरे सर को इसी पे ले लेते हैं ना गए सर सर्टिफिकेट लेते हुए जाइए नाम
उनसे क्या करना बैग में चले गए चले उनके आसपास से क्या हो गया ये है मतलब सर इधर फोटो खींच रहा है सर इधर फोटो है अरे उधर से अरे और आगे हो जाते अरे सर सर voy a poner सर दिख रहा हूँ थोड़ा मुस्कुराइएगा मोबाइल है खबर और मारो पीपल चल रहा है
Thank you. Thank you for all your support. You have covered it only completely. Thank you. Thank you. Thank you. Let me come in. Play. पान पसंद नहीं आया सर शायद पूरा पैकेज ले जाओ और पैकेज में सबसे थैंक्स टू अरे दादा बन दिया अरे तेरे पास के बिना तो नहीं नहीं काउंट फोर थैंक यू सर जाओ जाओ काम करा दे